हमने अपनी इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई करी, एक अच्छी कंपनी में काम किया, फिर पीएचडी करी, फिर यहाँ पर हैं। बहरहाल इस दौरान कुछ ना कुछ सीखा है अपने एक्सपीरियंस में, करियर में। अब देखिए, सीएमएस और जो इससे पहले जिस मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल में पढ़ता था, क्या फ़र्क है? सीएमएस मुझे हर साल बुलाता है और कहता है कि हम करियर्स डे कर रहे हैं, आप आइए और इंजीनियरिंग की तैयारी, जेईई की तैयारी कैसी करी जाए हमारे बच्चों को बताइए। करीब 1000 बच्चे ऑडिटोरियम में इकट्ठा होते हैं और हम उनको बताते हैं कि इंजीनियरिंग और उसके करियर ऑप्शंस क्या हैं वगैरह वगैरह, और कैसे तैयारी करी जाती है, क्योंकि हम वो कर चुके हैं और वगैरह। एक अच्छा स्कूल अपने एलुमनाई को पहचानता है, उन तक आउटरीच करता है, उनसे कहता है आइए, वापस आइए, हमारे बच्चों को सिखाइए। इससे पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसको छोड़े हुए 30 साल हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए होंगे। कभी उसने हम तक पहुंचने की कोशिश नहीं करी, कभी नहीं करी, सोच में ही नहीं है। वो रोजमर्रा के बेसिस पे चलता है। आज बच्चे आ गए, जो पढ़ रहा है, तो एक इवैल्यूएशन नहीं है, आउटरीच नहीं है, हम सोचते नहीं कि हम और क्या नया कर सकते हैं। हर चीज उससे सैलरी से या पैसे से नहीं वो करी जा सकती। बहुत सी चीजें हम अपने एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस में भी सोच के कर सकते हैं। इस तरह से मेरी एक ये और मेरा इनएक्सपीरियंस कह लीजिए ये, लेकिन मेरी एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, वो बहुत ज्यादा राय बाहर से वेलकम नहीं, और वो इसलिए कि कहीं हमारा कंट्रोल हमारे इंस्टीट्यूशन पे कम ना हो जाए और कहीं ये ना साबित हो जाए कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। बल्कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पुरजोर कोशिश कर रही है अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की वगैरह की। हम तो ऐलान करके कहते हैं कि आप आइए और हमें सिखाइए कि हम अपना काम और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। हमें सारे स्कूल्स को भी ये खोलने चाहिए अपने दरवाजे, आइए हमें सिखाइए, आइए हमें सिखाइए। हर 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 इंस्टीट्यूशन को कुछ ना कुछ सीखने की, नया करने की ज़रूरत है आज की तारीख में, और हमें इन्हीं सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए आगे काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा और फिर ख़त्म करूँगा अपनी बात। हज़रत जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे डिग्री कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, ये एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, प्लेसमेंट्स पे मापी जाती हैं। जितना अच्छा प्लेसमेंट उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, जबकि स्कूल्स रिजल्ट्स पे नापे जाते हैं। और मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए ये मुनासिब नहीं है कि एक किसी और पैरामीटर पे नापा जाए, दूसरा किसी और पैरामीटर पे नापा जाए। अगर स्कूल परफॉर्मेंस के कितने परसेंट बच्चे बोर्ड पे सेलेक्ट हुए उस पर नापे जाएं, तो यूनिवर्सिटीज भी नापी जाएंगे उनके बच्चे कितने पास हुए, कितने परसेंट मार्क्स से। और अगर यूनिवर्सिटीज नापी जाती है कि उनके बच्चे आगे नौकरी में गए, हायर एजुकेशन में गए, बिजनेस में गए, तो स्कूल्स भी इस बात पे मापे जाएं कि हमारे कितने बच्चे 12वीं करके आगे गए, आगे की पढ़ाई करने गए, चाहे पॉलिटेक्निक में गए हों, चाहे उसमें गए हों, यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में गए हों। इस चीज़ की भी हमें फिक्र करनी चाहिए। और जब हम देखेंगे कि हमारे बच्चे आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि उनके अंदर कमियां क्या हैं। जब कमियां पता चलेंगी तो उनको दूर करेंगे, ट्रेनिंग और टीचर्स और स्टूडेंट के लिहाज से। तो इन्हीं कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इसको बहुत ही सब्र के साथ सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद नसीम अख्तर साहब, आपके कीमती वक्त के लिए और इस तजुर्बे भरी गुफ्तगू के लिए। और इससे ये बात मुझे याद आई कि मैं अपने सेंटर की तरफ से, सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ रूरल सोसाइटीज़ की तरफ से एक रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश के जो माइनॉरिटी रन स्कूल्स हैं वो कैसे। उसमें हमने 100 स्कूलों को सिर्फ एक सवाल भेजा कि आपके स्कूल्स में कितने बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। सिर्फ इतना सवाल जानना था। बहुत कम स्कूलों ने जवाब दिया, अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जो स्कूल से मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल से जो माइनॉरिटी रन स्कूल्स जो सिलेक्शन है मेडिकल और इंजीनियरिंग का, वो बहुत ही कम है। और जैसा कि सारे स्पीकर्स ने इस बात को कहा है कि हमारे पास टीचर्स का
एक अच्छा खासा डेफिसिट है। और उसमें भी स्पेसिफिकली मैं ये ऐड कर सकता हूँ कि साइंस और मैथ्स के टीचर्स सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं हमारे स्कूल्स में। हम चाहते हैं कि 5,000-6,000 रुपए में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स मिल जाएं। दैट इज इम्पॉसिबल। कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर 5-6,000 रुपए में नहीं आने वाले। वी हैव टू इन्वेस्ट इन आवर टीचर्स, वी हैव टू इन्वेस्ट इन साइंस एंड math education, and we have to really be very serious on this aspect. So from here I would like to invite another leader of education, especially in Rajasthan, who had written a new story by establishing and founding an entirely new university. I must say that it is going to be a new experiment, a new educational experiment in Rajasthan. Mr. Muhammad Atiq, who is chairperson and founder of Maulana Azad University, Jodhpur. अस्सलाम वालेकुम। नामुदून वसल्ली रसा रसूल करीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए और सामने डिस्टिंग्विश पर्सन्स और सभी लोग, हम राजस्थान वाले रेगिस्तान की वजह से शायद ये महसूस होता है कि दूर दराज के इलाकों में किस तरह काम होता होगा, कैसे होता होगा, लेकिन उसका एक नाम आपने सुना होगा, मारवाड़। तो मारवाड़ वालों के यहाँ एक बड़ा मशहूर है, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं कि वो एक धोती, एक लोटा, एक दुपट्टा लेकर के निकल जाते हैं। फिर आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान के सभी शहरों में अब मारवाड़ियों की मुस्तकिल आबादी है, महल्ले के महल्ले हैं, और उनमें स्ट्रगल करने की बड़ी कुव्वत है। क्योंकि वो हालात वहाँ पर इतना कि सख्त हैं, बारिश होती नहीं है, और मुसलमानों का तो ख़ास तौर से बहुत महदूद काम है, मवेशी पालना, उसी पर मुनहसिर रहते हैं। लेकिन चूँकि उन हालात में स्ट्रगल करने की एक जो है क़ुव्वत अल्लाह ने दी है, तो जाहिर बात है कि उससे रिजल्ट भी आते हैं। मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी तकरीबन 92-93 साल पहले मुसलमानों ने कायम की थी। वहाँ के दी देन रूलर महाराजा उमेद सिंह, आप अक्सर देखते होंगे ना एडवर्टाइजमेंट में, उम्मेद भवन पैलेस का एक फोटो आता है, बड़ा खूबसूरत ताजमहल की तरह से, जोधपुर के पत्थर का बना हुआ। उस ज़माने के वो रूलर थे। उन्होंने 1929 में मुसलमानों को तालीम में बढ़ाने के लिए एक सोसाइटी का क़याम किया, जिसका नाम रखा उन्होंने मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी। और उसके पहले प्रेसिडेंट सर ए.पी. कॉक्स, जो इंग्लैंडियन थे, जो एजुकेशन के सबसे बड़े ऑफिसर थे मारवाड़ के, उनको उसका प्रेसिडेंट बनाया। और 1936 में जब उम्मेद भवन बन के तैयार हुआ, तो उस खुशी में उन्होंने एक बेहतरीन हेरिटेज बिल्डिंग वाला स्कूल बना करके दिया, हाई स्कूल के लेवल का वो शुरू हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तकसीम के अमल में वो स्कूल मुसलमानों के हाथ से निकल गया, और उन्होंने फिर कोशिश की और एक ज़मीन का खता हासिल किया, और उस पर एक नया स्कूल तामीर हुआ, और 1988 में एक सेकेंडरी लेवल का स्कूल शुरू हुआ। और वो ग्रो करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास जहाँ 7 कॉलेजेस हैं, 4 स्कूल हैं, उसके साथ एक यूनिवर्सिटी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। विजनरी होने की वजह से मारवाड़ वालों में एक जैसे खुशियत है, तो सोसाइटी ने इस बात की कोशिश की कि भाई ये ज़मीन का खता मिला है, कल जब ज़मीन ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे। तो एक बड़ी ज़मीन और हासिल की गई। अशोक गहलोत साहब 2000 में जो है मुख्यमंत्री थे, तो उनसे रिक्वेस्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तकरीबन 56 एकड़ का खता लैंड जोधपुर स्टेशन से 14 किलोमीटर पर फिर मिल गया। हालांकि उस वक्त भी कौम से ये आवाज़ आई कि खड्डों की ज़मीन लेके क्या करेंगे, कौन जाएगा, इनका बाप पढ़ने जाएगा कौन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ शहर आबाद है। अभी हाल ही में उनकी मेहरबानी से एक दफ़ा फिर
तकरीबन 30 एकड़ लैंड और अलॉट हुई है उसी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने 15 करोड़ रुपए एक एक्सीलेंस सेंटर बनाने के लिए और 2 करोड़ रुपए मुसलमानों के मसाइल पे रिसर्च करने के लिए दिए। जब मनमोहन सिंह जी जो है प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमारे जो है मजद रहमान साहब माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे। 3 दफ़ा उनका आना हुआ 1.5 साल में। 2013 में जब यूनिवर्सिटी के ऐलान के लिए सब लोग जमा हुए, रहमान साहब भी तशरीफ लाए थे, तो रहमान साहब ने एक बात फरमाई थी कि जब भी मैं आता हूँ इस जगह पर मुझे तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके उस इदारे में तब्दीलियों का अमल बराबर जारी रहा और तेज़ी से जारी रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 14,000 बच्चे तालीम पा रहे हैं। और उसकी सबसे ख़ास बात यह है कि 2000 से ज़्यादा बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज करके जा रहे हैं। इसमें सिर्फ नर्सिंग कॉलेज के अंदर 350 बच्चे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एमएससी, पैरामेडिकल कोर्सेज से हर साल निकलते हैं, उसकी आउटपुट है। इसी तरह 337 बच्चे फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा। उसी तरह बीएड कॉलेजेस से 750 बच्चे हर साल निकल रहे हैं। वोकेशनल में 450 बच्चे जो है इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, अपने वाटर मैकेनिक, एसी रेफ्रिजरेशन जैसे कोर्सेज करके निकल रहे हैं। तो फोकस ये रहा कि हर हालत में बच्चा रोजी रोटी से जोड़ा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इन 2 सालों के अंदर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के डिफरेंट सेंटर्स पर आपके 150 से ज़्यादा बच्चे माई खदीजा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज से एज ए मेडिकल ऑफिसर मुंतखब हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस यूनिवर्सिटी में इस वक्त 200 से ज़्यादा बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। और ये सब इन हालात में था कि जब आपके पास में फंड्स नहीं थे। अल्लाह ने एक तौफीक दी कि 1987 में शहर के हार्ट में एक पुराना कब्रिस्तान था जो 100-150 साल पहले बंद हो गया था। उस पर एक छोटी सी तामीर की कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उससे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी 2 करोड़ रुपए की सालाना रेंटल इनकम हो रही है। तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमारे में कमी है, हम उस स्टेज तक पहुंचे। मेरे मोहतरम इनामदार साहब तशरीफ रखते हैं, मुझे उनकी एक नसीहत आज भी याद है। 2005 में आपने हमें बतौर मेहमान 26 जनवरी के प्रोग्राम में बुलाया था, तो उन्होंने फरमाया था, कहती हमारी दिक्कत ये है कि ये अल्लाह वास्ते के जो काम होते हैं ना, ये हो गया तो मेरा क्या गया, नहीं हुआ तो क्या गया। हमारी ये सबसे बड़ी कमी है। उसमें अगर हम ये चीज़ जो है कर लें कि नहीं, ये ऐसा ही काम है मेरा जैसे मेरे घर का, मेरी फैक्ट्री का, मेरे इस जो है कमर्शियल इदारे का, तो उसमें इनकलाब आ जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और इस सोसाइटी के कारकुनान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर तवज्जो दी और अल्लाह ने उसके रिजल्ट भी दिए। लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात स्टेप पर लाना चाहता हूँ। हम सब जो जमा हैं यहाँ पर, देखिए आप इस हिंदुस्तान के अंदर मिल्लत इस्लामिया के लिए हम सब आप कुछ काम करना चाहते हैं। 20 करोड़ की आबादी आपकी, उसमें 7-8 करोड़ बच्चे स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग एज के हैं। आप हम कितनों में काम कर रहे हैं? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। बाकी आपके दायरे से बाहर हैं, बाकी के पास कुछ नहीं है ना, कोई तवज्जो हमारी नहीं है। उनके लिए क्या कर रहे हैं? इस पे हमें सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सूरे अलम नशरा की जो आयत है, फ़इन्न मअल उसरि युसरा इन्न मअल उसरि युसरा, तंगी के साथ फराखी भी है, तंगी के साथ फराखी भी है, बार बार कुरान में कहा गया है। हमारी तवज्जो उस पर नहीं जा रही है कि सारा सिस्टम अवेलेबल है, स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट के, है ना। हमने भी बरादरान वतन की तरह उसको डिस्कार्ड कर दिया। सोसाइटी ने कोविड में मुझे इस बात को सोचने का मौका दिया था कि जोधपुर की आबादी 3 लाख की है मुसलमानों की, उसमें 1 लाख बच्चे जो है स्कूल गोइंग एज वाले हैं, कॉलेज जाने वाले हैं। मैं जिस इदारे के ऊपर बैठा हुआ हूँ उसमें कितने बच्चे आ रहे हैं? मात्र स्कूल के 6000 बच्चे, कॉलेजेस के 4000 बच्चे। क्या काम है हमारा?
फिर वो 90,000 बच्चे कहाँ हैं? 10-15,000 बच्चे किसी प्राइवेट छोटे मोटे स्कूलों में होंगे। इसका मतलब है कि 80-90,000 बच्चे तो आज भी सरकारी स्कूलों में हैं। हमारा उसमें क्या काम है? ये बना बनाया काम है। सोसाइटी ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से सरकारी 12 स्कूलों को जोड़ा है, मुस्लिम महलों में, खाटी मुस्लिम महलों में, जहाँ बच्चे नहीं हैं। टीचर्स कहते हैं आते ही नहीं है सर, आते हैं तो तंग करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं। क्या करें हम? सोसाइटी ने उनके बीच काम किया। मैं बताता हूँ, एक जो है गर्ल्स स्कूल है जिसमें 650 बच्चियाँ हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, साइंस भी है उसमें, और उसके अंदर 95% बच्चियाँ मुस्लिम हैं। उनका कहा हमारी ये दिक्कत है। सोसाइटी ने उसके अंदर एक बड़े हॉल के अंदर मार्बल लगवा दिया, छोटे मोटे उसको और काम करवा दिए, दूसरे स्कूलों में काम करा दिए। आज उस स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स फोन करके जो है सोसाइटी को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, फोन करके प्रोग्राम करके सोसाइटी के लोगों को बुलाते हैं। उन स्कूलों के अंदर एडमिशन बढ़ गया। आपके हमारे पास काम मौजूद है। आप 1 करोड़ रुपए का एक जो है जमीन लेंगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाएंगे, इमारतें खड़ी करेंगे, फिर आपके मेरे पास में कंप्रोमाइज टीचर है, हम करेंगे क्या? नहीं दे सकते हम 20,000, 30,000, 40,000 रुपए किसी टीचर को। तो कंप्रोमाइज टीचर आता है, फिर उससे हम उम्मीद क्या करेंगे? उससे बेहतर ये है कि वो सरकारी स्कूलों का जो टीचर है वो कम से कम 200-300-400 के अंदर एक मुंतखब हुआ है, ऐसे नहीं आ गया वो। उससे आप बैठिए, उसके ऊपर हर साल महल्ले वालों को हम कहते हैं कि 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर दो जाने में। इनको जो है सेलिब्रेट करो, इनकी इज्जत करो, इनकी प्रॉब्लम को तवज्जो दो। ये आपके बहुत नजदीकी दोस्त है। इनकलाब आ जाएगा। किया कराया काम है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ अपने इदारे चलाइए, खूब अच्छे चलाइए, खूब मेहनत कीजिए, कॉलेजेस बनाइए, यूनिवर्सिटीज बनाइए, लेकिन उन 7-8 करोड़ लोगों को मत भूलिए जिनके लिए सिर्फ सरकार सहारा है, जिनके लिए आसान तरीन काम है। हमें कुछ नहीं करना है। महल्ले के अंदर आज हमारी बहू बेटियां माशाल्लाह 10वीं 12वीं पास है, उनको लीडर बनाना है, सोशल ऑडिट शुरू करनी है, उन स्कूलों के साथ जुड़ना है। उनके यहाँ बहुत छोटी प्रॉब्लम है, वॉशरूम सही नहीं है, पानी पीने का नहीं है, पंखा खराब आया हुआ है, फर्नीचर खराब कंडीशन में है, छोटे छोटे काम हैं। हम में से सब पैसे वाले हैं, हम अपने घरों में लाखों रुपए जो है खर्च करते हैं। मैं कर रहा हूँ हम लोग अगले सेशन नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बहुत आसान करीब काम है, हम थोड़े से में इनकलाबी काम कर सकते हैं। हम जो है वो घबराएं नहीं। दीनी तालीम का जहाँ तक सवाल है, उसे हम अपने मकातिब को वापस रिवाइव कर सकते हैं। मस्जिदों के अंदर जो पुराना मकतब का निज़ाम था, हमने पढ़ा ना, उससे हम बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा जो है, मैं अक्सर अपने लोगों को भी मैं कहता हूँ, खून की ज़रूरत नहीं इस कौम को पसीने की ज़रूरत है, पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। अपना थोड़ा सा उसमें से कंट्रीब्यूट कर लें। आप मान के चलिए कि अगले 5-10 सालों में आप इन 10-20 लाख बच्चों में नहीं, करोड़ों बच्चों के जो है वो तकदीर बदलने के काम को कर सकेंगे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। शुक्रिया वक्त पर अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट करने के लिए। और अब हम अपने सेशन के आखिरी स्पीकर डॉक्टर ज़हीर इसहाक काजी साहब से गुजारिश करेंगे, जो प्रेसिडेंट हैं अंजुमन इस्लाम महाराष्ट्र का। I have already introduced you the importance of the institution and the centrality of this institution in Maharashtra and for the education promotion in Mumbai. So over to you. Thank you very much, sir. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. I feel immensely honored and privileged that Anjuman Islam was given an opportunity to present itself to all eminent dignitaries here. And amongst the dignitaries, हमारे करम फरमा मौजूद हैं। अब ये इनामदार साहब, आपकी परमिशन से मैं शुरू कर दूँ। हमारा ताल्लुक ये 2 इंस्टीट्यूशन से ऐसा है कि मुसीबत की घड़ी में हम दोनों खड़े रहते हैं एक दूसरे के लिए। मुझे जब प्रॉब्लम आता है तो पहला कॉल मैं इनामदार साहब से भेजा। उनका जिक्र करना ज़रूरी था।
मुझे याद है 14 साल पहले व्हेन आई टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन इस्लाम, तो आपका फ़ोन आया मुझे और एक बात उन्होंने मुझे कही, वो आई स्टिल कैरी फॉरवर्ड, कि तुम वेरी सक्सेसफुल मेडिकल प्रोफेशनल हो, हिंदुजा में, बॉम्बे हॉस्पिटल में, सब जगह काम करते हो, तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं होगी, तो जब भी आप ट्रैवल करोगे अंजुमन के काम के लिए, you keep aside 50,000 a month from your earnings and do the job. I still follow that what you say. दूसरी बात मैंने कहा, मेरे तासुरात ये होंगे कि let us all, at least in Maharashtra, compliment each other. Let there be a synergy. The least we can do is we should not trouble others, and we still continue to do that. So that's how Anjuman Islam is, and it's completing 150 years. There was no education policy in British India then. First organized institution was Deoband, which was created in, I think, 1866. And 1874, Anjuman was established. A year later, Aligarh Muslim University came into existence. Our founding fathers, Justice Badruddin Jayatji, was the third president of Indian National Congress and first Chief Justice of Bombay High Court of British India. We have that legacy. We started with 3 teachers and 120 students. We are today 110,000 students, roughly 4,000 teachers, 97 institutions. The other day, that very eloquent anchor, she was par excellence in English and Urdu. She made a mention that male-dominated Aligarh Muslim University, I got an opportunity as a lady. I would like to let you know, all of you, Anjuman has proved beyond doubt that it is an organization of women empowerment. Out of 97 institutions, 90 heads of the institution are ladies. They are directors, they are chairmen, and we cater to 40% of girls, and we will be reaching that 50% target because one of the speakers mentioned yesterday in the morning about it. We manage 2 orphanages, a public school, we have our own printing press, and we manage aided Urdu medium school. हमारा एक ही फोकस रहा कि उर्दू मीडियम स्कूल को मियारी बनाया जाए. आपने जो गुफ्तगू की उस पे आ जाऊंगा मैं. हमारे यहाँ 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू पे देयर फीस. तो साल भर में हम पैसा जमा करने के चक्कर में अल्लाह में मदद भी करता है. 70% आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स. जब ओपन डे होता है तो पेरेंट्स आते हैं, उनको पता ही नहीं चलता ओपन डे क्या है. But we speak, but we need to do core corrections, and we have started adult education right away. And the Commissioner of Education in Pune once, Sinandar Shah, he visited our school in Pune campus. He said, this is the first school which has done adult education. It has to be a holistic approach, you rightly said. Then we are empowering the parents. उनको हम skill सिखाते हैं. अंजुमन के पास 4 पॉलिटेक्निक्स हैं apart from 2 engineering colleges, and of which 2 are girls polytechnic. इन माओं को स्किल सिखाया जाता है. Many of them have become entrepreneurs. आज की अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी आप पढ़ो, ऑर्फनेज गर्ल्स को एंटरप्रेन्योर बनाया गया. One of them is today vice president of multinational, who lost both parents, came at the age of 9 years. There are multiple stories. And you will be surprised, हर घर तिरंगा जब शुरू हो गया मसला, तिरंगा थे कहाँ पे? अंजुमन इस्लाम की उर्दू मीडियम स्कूल ने उनके माओं से 25,000 तिरंगे सिलवाए और उनको पैसा मिला. And they came in the national limelight. Now these mothers are getting a lot of jobs at home. So it has to be a holistic approach. आज के टॉपिक में बात थी जिसमें आपने सर्कुलेट किया था पेपर के फोकस ऑन ग्लोबल कंपटीशन. तो थोड़ा मैं उस पे आ जाऊंगा. उस 1 मिनट पहले आपने बहुत अच्छी बात की कि एक्सेलेंस सब जगह आना चाहिए.
Managers have to be excellence. Teachers have to be part of the excellence. And teachers have to create the excellence students. And then elevate the standard of learning. If you don't do that, then you had it. So it has to be a holistic approach. तो मैनेजर्स की जो बात कही आपने, अंजुमन इस्लाम का एक कॉन्स्टिट्यूशन है ड्राफ्टेड बाय बैरिस्टर यार अब्दुल्ले, way back in 70s, not amended even today. It's totally decentralized. The office bearers have to be elected every 3 years by the general body of 500 people. 500 people of eminence. They are of all sects and all communities of its kind in India. It's a pan-India representation in Mumbai. They meet once in a year and elect 10 members to the governing council, like Rajya Sabha. And those elected members retire every 3 years. You have to go to the public and get their approval that you are doing a job. And the general council, governing council consists of 30 elected members and 15 are nominated. Amongst the 15, 5 are from various trusts of various institutions they run. 5 में से 2 MLA MP होते हैं, corporators, एक university representative. So you have a think tank and it's the final authority which takes a call. सवाल पैसे का आता है, transparency का. Our budget is analyzed by various boards. It goes to executive committee. Where it comes to governing council, and the CD of the budget is circulated 15 days before. Then brainstorming is done. Thereafter the budget is passed. We are a Section 8 company. It goes to the company secretary and charity commissioner. We don't delegate. And an annual general body meeting, all the accounts are displayed for 500 members, and we have chartered accountants, auditors to explain them. I think that's called the transparency. And all decisions have to be ratified. Now, how I did reach to that organization? As an ordinary member, made a member of the board 40 years ago, became a chairman of Tibia College, became a general secretary, and then elected as a president without a godfather. My organization has no place for dynasty. We believe that as an organization, you must be apolitical. All the doors and windows must be open. Since 2014 till date, we had no problems. Our FCRA was in place. All our permissions were in place. They realized that this is an institution जो तासुब वाले भी कहते हैं कि ये अच्छा इदारा है, इनको तकलीफ मत दो. So I think that's where we need to do some homework at some point of time. I request the organizers कि once in your meeting में आप एक oration रखिए in memory of Maulana Abul Kalam Azad. Call one of the institutions, do some due diligence, who have done exceptionally well on parameters. Give them about 45 minutes to tell their stories, which will inspire others. Because in 5-6 minutes, you can't do the justice. Talking of global competition, when pandemic came in, we said it is time to rejuvenate our alumni. And we were able to digitize about 1 lakh alumni, about 1,000 engineers in the United States of America. We started connecting with them, as you said, alumni, very important. One of our alumni, we realized, is a top engineer in NASA, and his good surname is Modi, a Gujarati young man, and he's so supportive to the organization. We created that, and we decided we need to go beyond borders. There has to be international collaborations. It doesn't happen over time. If you want to get on board, number 1 university, MIT,
You have to do a lot of homework. We worked on that for almost 8 months. Our alumni worked on that. And fortunately, I was traveling on a personal visit to Canada and US, so we saved Anjuman's money. And incidentally, Anjuman was invited by Harvard, TED-like talk for their stories to the international students. So once I was in Boston, the neighboring university was MIT. Harvard and MIT are close by. We walked in, we had done a lot of homework, but we were not breaking ice. Somebody rightly said in the morning about the Jewish community. They control not only politics and wealth, but all education institutions. And they govern so well. Take University of Pennsylvania, Temple University in Philadelphia, Thomas Jefferson University, you name them. And they are intellects par excellence. So I was facing a lady, a Jewish lady who is director. And my local chairman, who was also a student of Harvard at some point of time, he was lost. I said, hold on, let us speak. And she said, why we should come there? We have not even collaborated with IIT Mumbai, any of the IITs. What's so great about Anjuman Islam? Anjuman Islam represents only a minority communities itself. So when you approach those people, if you have 2 minutes, can I continue for 2 minutes? Yeah. My co-chairman gave up. I said, look, man, we are a marginalized community. And Joe Biden, when he was vice president of the United States, and Jill Biden, she's a grammar teacher. She was the second lady. And the US embassy said he will go to IIT Powai. And Jill Biden come to Anjuman Islam's girls' school. That school stakeholders are from Madanpura, an area where students don't have roti, kapda, makan. The lady came in for half an hour. She spent 3 hours. She took one lesson. And she addressed, she said, I find so many Malalas. I said, madam, don't go by this. This is from White House that have blocked. She's on digital platform tagged by President Obama. I put that paper to her. This is how it is. I said, your American philanthropy was instrumental in giving English-speaking teachers for spoken English in Anjuman Islam. And I said, I have got about 1,000 students. See, this Mr. Modi, he is well placed. There was another gentleman. They are contributing to America's economy. This is Anjuman. I said, that is, as far as that is concerned. I said in 2012, these are my papers. NASA and Lockheed Martin, which manufactures F-16 aircraft, together organized international competition for unmanned aircrafts, not drones, aircraft. Various countries participated. In Asia, there were 3 shortlisted: IIT Kharagpur, Vellore Institute of Technology, and Anjuman Islam Sabur City. There were 3 left in the Asian contingent. First year, we got 7th position. We improved upon that. 2013 and 14, we bagged first, second prize in micro and advanced category, which is certified by NASA and Lockheed Martin. These are the papers. And this group of students are marginalized. They came all the way, and the trial was held in some of their Air Force bases. I said, this is the caliber of students. Then going further, she said, you are not mainstreaming. If you want the brand of MIT, is Anjuman mainstreaming at national level? I said, look, Niti Aayog, along with these 29 ministries of various ministries of government of India, they worked out to find out what are the problems of the country.
599 problems were sorted out, and there were supposed to be digital solutions. They got IITians, they got engineers, and students from business management. 40,000 students collected in various centers. Elimination took place, 7,000 students, some 1,500 institutions. Anjuman Islam got third position at the national level in that competition, and they designed an app for safety of women's passengers. The then railway minister interacted with our students in Jodhpur. And I said, out of the 5 students in that, 4 are girls, 2 are with hijabs. They have come from Urdu medium school. 4 girls and 1 boy. See, this is the empowerment of women, and women, if given an opportunity, they do better than our boys. And there's another thing that your United States of America, Lockheed Martin, Tata Trust, and Ministry of Science and Technology organize a research product. They wanted some people to have research papers and put into practice and come out with some innovations. Out of thousands, 100 were shortlisted. The juries were all Firangis, the Americans. At the end of it, they said there are 10 toppers. We can't say number 1, number 2. In that 10 toppers, 7 were IITs, 2 were technical universities, and just 1 undergraduate engineering college, Anjuman Islam Sabla Engineering College. And in order it was positioned as number 1. We did inquire if there is all are toppers. They said yours is the youngest because they are undergraduates. The IITians were masters, postgraduates. And that team had developed engineering college, a medical invention called artificial hand. They were given incubation an amount of about 20 lakhs by IIM Ahmedabad, and they were to proceed to Harvard maybe 4-6 years after developing it fully. She was floored. I said, this is how we do it. I said, madam, before coming to here, I have spoken to AICT chairman. I can put you on the call. Mr. Anil Saraswati. He's a Sanghi fellow. Dr. Anil is brilliant engineer, great friend of Anjuman. I said, we will get this approved from them. And if you don't have any of your affiliations in India, we will be the pioneer and will take it to other institutions. The deal was clinched. People were surprised. Thereafter, it came on their website with their logo. And what happens then? The dean, assistant dean of Temple University from Philadelphia, which has got one of the best law school, comes to Anjuman uninvited and gives his offer that this is what is to be done. Thereafter, Westminster University from UK comes. They had come to sign an agreement with another organization. We didn't invite them. They came and spent about a day with us, and they have already signed an agreement with us. What's the whole idea? You must collaborate with the best of institutions. Then she asked me, who are your faculties you are going to get them trained here? Their background. I said, number 1 faculty is Dr. Sharik, Syed Sharik. He has done masters from your Hamdard. He has done PhD from University of Maryland. Some of you from Hamdard must be knowing. I'll take half a minute. Half a minute. And he was awarded by Obama for a research on a medical drug when he was doing a research. I said, this is one fellow. The second fellow is Dr. Rajan Magar. He was awarded Best IIT Research at the hands of Manmohan Singh at IIT Powai. He is our head of Department of Civil Engineering. There are 10 people under him who are doing PhDs. All 6 people were defined, and she said, done, and we did the thing. You should be aiming at something which nobody has done it. And once you do it, you share with the others. I have come with a message that whatever we can do for any institutions, with no strings attached, we will be willing to do it. Thank you very much for patiently hearing. Thank you very much for this wonderful and inspiring discussion.
I am told that we have a space for just 2-3 questions, very brief, very precise questions if we have. So, 1, 2, and any other questions from this side, please? Ma'am, I request you to be very precise and brief, please. How does this come on? Sir, as an alumnus of the University of Westminster and the first British Evening Scholar from UP, let me congratulate you. I'm so proud that my university has stepped forward and made that offer. Geeta, I have no words for you as a researcher par excellence, but there's one thing that I'd like to point out, and I think it is very essential. I was part of an action aid consultancy over 8 districts of UP, and the last ASAR report pointed out that there was a reverse migration of school children from private schools to government schools post-pandemic. And one of the reasons for that is the interventions that have been done through CSR funds from different organizations. The ones that I was working on was with UNICEF and Aditya Birla CSR group. I have personally gone to these schools, smart boards, sports equipment, libraries, community engagement, getting teachers from young girls, and a lot of these districts have Muslims. The large population is of Muslims. May I disabled. request you to make your question, So please? that is one point there is no question. I just wanted to add this input that there has been a reverse migration also. And we can do the same interventions and get children back to our schools. Thank you very much. Yes, please. Yes, please, on the question. My question is from Geeta ma'am. Ma'am, I'm Anjali Taj from Navita Foundation. हम एक कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ काम कर रहे हैं. उसमें हम लोग कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं उनके साथ, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर. तो जितने भी हमारे 12 साल की उम्र के बच्चे हैं, लड़कियां तो वो सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं. तो हम क्या आपके स्कूल के साथ कंडक्ट कर सकते हैं सारे प्रोग्राम्स कभी? Thank you. Can we have 1 or 2 more questions if there is any? Yes, Professor Kondu. Professor Amitabh. Very impressive presentation. I must say the struggle with a vision by the dedicated educationists in this country, the struggle and also the way you were able to establish. I was looking at the overall macro statistics available from Niti Aayog. 178,000 civil society organizations and also the minority institutions are covered there. We find that only 5% of them are in education and literacy programs. And every year, something like 20-25% drop out. They just come in the scene and struggle and don't succeed. So I would certainly like to hear from you, or perhaps the people who did not succeed. They tried and they didn't come to that level. Why is it so? And that's what requires slightly larger database, which we are trying to do at IEDU. But certainly, I would be very happy if you can tell that what are the factors that you know why other people who struggled to reach that level did not come to that level. Thank you. If any of you, and especially some questions have been directed to Geeta ma'am, very brief answer if you would like to make. I'll come on that. You have talked about dropouts, but there is another segment called out of school. They are not in school at all. That's a big number. The main reason is they are not able to pay the fees. They have financial constraints. They want their children to do some kind of odd jobs at home so the parents can earn a daily livelihood. There are course corrections which are being done. What we do is we go to the catchment areas, get them, provide transport, uniform, give the rationings to the families, take health care. That is being done, but everyone can't do that. Most important thing is accessibility. They are from remote areas, they can't travel all the way. So by and large, and there is no kind of, I'll tell you what, we have started a system called mentor and mentee in my institution. How do we do the course correction? Question is there, but correction has to be there.
each teacher has given 30 students, then that particular teacher, in 6 months' time, she must have one home visit and come back. What are the problems at home? बाप दारू पी के आता है, बाप ने माँ को छोड़ दिया है, माँ और कहीं काम करती है, हर रोज घर में दंगा होता है, खाने के लिए पैसे नहीं है. The students who are already in school have issues. Those who are out of school have got multifold. So it has to be again holistic approach, and we get the analysis at the end of 6 months कि क्या problems है, and manage to do course correction. But one institution cannot do everything. Others will have to follow it, but we'll have to handle that. And another important thing of numbers that you talked about, because that data which you gave, there is a north-south divide. If you take data of South India, they go beyond the national benchmark. It is the North India which is lacking. So if course correction has to be done, I think we have to have more focus on that. And the ones who are success stories from South India have also to contribute to bring up the level at now. One more thing which was talked about, which I don't. We really have to start the next session. So, would you like to comment? Yeah, I'll just say on Shireen Abbas's question, that you are absolutely right, and it's a very good thing to celebrate if it is the case that children that government schools are doing well. But one thought I will share is this: that with CSR money, this is not an enduring solution. These are not sustainable solutions. We need institutional change that makes it possible that internally the processes through which school quality is set are such that we don't need external assistance, because that's not sustainable. So that's one point, and your point is yes, absolutely, you're very welcome. Thank you very much for this wonderful and I just session. want to say one thing on. I'm sorry we don't have time, but because we have to start the next session. But before we go for the next session, I would like to invite the General Secretary of Alliance, Shai Siddiqui sir, to distribute the souvenirs for our honorable speakers. Please. So I would like to request to give the first to Dr. Professor Furqan Qamar Saab. My pleasure. I request you to give another souvenir to Dr. Geeta Gandhi. And to Dr. Syed Nadeem Akhtar, our wonderful host. And to Mr. Muhammad Atiq. And to Dr. Zahir Ishaq Qazi Saab. और शाहिद साहब एक जहमत और उमर अनस साहब ने बहुत कायदे से इस प्रोग्राम को कंपेयर किया, तो एक मिनट तो आपके लिए भी. In a way, I discovered that he is doing such wonderful work in the field of education and research. So let me just give the conclusion of this session in just one sentence, that attaining excellence is achievable. And from here, we are going to start immediately our next session. And I would like to invite the speakers of our next session. And it is indeed a great honor that we have amongst us Dr. P. Inamdar,
who is we have already announced his presence. So, with the galaxy of eminent participants and scholars, I would like to invite now Mr. Athar Shahab Saab, Managing Director of Zuari Industries Limited. Please. Athar Shahab Saab, thank you very much. And Mr. Abdul Subhan Saab, Founder, Falcon Institutions, Bangalore. Abdul Subhan Saab, please. And Mr. Sadiq Said Saab, Founder, ULEX Learning Solution Private Limited, Chennai. Mr. Faisal Faruqi, Founder and CEO, mouthshut.com. We have an eminent panel with us. The session will be chaired by Mr. Athar Shahab Saab, who is Managing Director of Zuari Industries Limited, and he has done his education from XLRI Jamshedpur with a specialization in finance and marketing, and he has been with the industry, and he has been doing a lot of work with different corporate organizations, including Vedanta, L&T Group, IDFC, AES Corp, and Shamil Bank and ICICI Limited as well. So he will be chairing the session. We have with us Mr. Abdul Subhan, who is chairperson and leading the Falcon institutions in Bangalore, and he has been providing many very easy and digital solutions for civil society organization, especially those who are working for education. And he has been able to connect with many institutions in the South. And we also have with us Mr. Faisal Faruqi, who is also a highly recognized IT entrepreneur, who is also pioneering in startup cultures in India, and has been CEO of mouthshut.com, a website for consumer review. Of course, these are some of the initiatives which are mostly on digital platform, but extremely important. And we also have with us Mr. Sadiq Said, who is founder of another learning solution platform. So we would like to request Mr. Athar Shah to take over the session and start the proceeding. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Omer Saab. And thank you very much, President Saab, Rahman Khan Saab, and everybody else for having me here on this Sunday morning. And I think I'm the only guy probably in the auditorium who is not a subject matter expert, and still here. And I think the easiest job in these circumstances is to actually chair a session, which I am happy to do. Without wasting any further time, I would request the speakers for this panel to quickly take the podium and share their thoughts, maybe for about 10-15 minutes each. And request Mr. Faisal Faruqi, if you can go and share your thoughts, please. Good afternoon, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Great day. I was listening to the beautiful introduction from the moderator of a lot of us, and I thought, I don't know किसकी बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोग तो इतने accomplished नहीं. तेरा ख्याल है, तेरा जमाल है, तू है.
तेरा ख्याल है, तेरा जमाल है, तू है, मुझको तो ये ताबिश दानिश नहीं कि मैं। और तमाम तारीफ़ें अल्लाह की, सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून। A lot has been said. I've been listening to some very eloquent speakers, thought leaders. कल से काफ़ी लोगों से डेटा हासिल हुई, कुछ डेटा ओवरलोड हो गया सर में, क्रोसिन लेना पड़ा रात में। लेकिन जो मोटी मोटी बात समझ में आई है कि हमारी कल तक तो अंडर प्रिविलेज बात हो रही थी, आज स्पीकर्स ने मुस्लिम वर्ड, तो आई डोंट नो, बट आई स्टिक टू अंडर प्रिविलेज बिकॉज दैट्स अ ट्रेंड, दैट्स द प्रेसिडेंट। हमारे साथ एक सानिया रहा है और वो सानिया शायद 1857 में शुरू हुआ था और अभी तक हम लोग एज ए कॉम, एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी उसकी कीमत चुका रहे हैं। एक ज़माना हुआ करता था, कल नजीब साहब ने काफ़ी उसके बारे में बताया था कि हम लोग दुनिया की साइंस को रूल करते थे। 650 से लेके ऑलमोस्ट 1300 तक, 1300 तक मुस्लिम साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, फिलोसफर्स, मैथमेटिशियन, इनफैक्ट आज की सारी जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हमारे फ़ोन पे है, इस सब चीज़ की जो बुनियाद है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बिहाइंड दिस, वो बहुत ही प्रोमिनेंट मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, इन्वेंट की थी। उसमें से मेजर हैं इब्न सीना, अल-फाराबी, मोहम्मद अल-खर्ज़मी, जिनके अल-खर्ज़मी के जो यूरोपियन वर्जन था वो मोहम्मद अल-जाबिर, जिनके ऊपर अलजेब्रा बना, अल-खर्ज़मी जिनके ऊपर एल्गोरिदम बना। एल्गोरिदम से ही हमारी आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है। फिर एक वक्त आया, एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, वो खुद भी एक स्कॉलर थे, आप बहुत से लोग यहाँ पर माशाल्लाह हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रखते हैं तो जानते होंगे, उनके बारे में पढ़े होंगे। उनका नाम था इमाम मोहम्मद अल-गज़ाली। अल्लाह के बड़े चाहते बंदों में से थे क्योंकि अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। उन्होंने फंडामेंटल रिसर्च करी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, you name it, and he was a polymath. He was like probably Einstein multiplied by Einstein square. And then suddenly something happened. Oh, by the way, so he wrote a book. He wrote a book in 1070. He said the book was very influential. It's called Maqasid al-Falsafa, the coherence of the philosophers. उस जमाने में जो पढ़े लिखे लोग रहते थे उनको साइंटिस्ट नहीं बोलते थे, फिलोसफर बोलते थे। और काफ़ी उस बुक के बाद उनके शागिर्द थे, स्टूडेंट्स थे, बगदाद में वो पढ़ाते थे। उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी। उनको एक ऐसा एक दौर गुजरा, शायद 10 साल का वक्फा, where he realized कि अल्लाह ताला हर चीज़ बनाता है, हमको उसके बारे में बहुत ज़्यादा तहकीकात नहीं करना चाहिए। We should not go into deep knowledge seeking, logic seeking mode, because that would be sort of like un-Islamic. तहफ़्फ़ुल फ़लासफ़ा उन्होंने एक किताब लिखी, The Incoherence of the Philosophers, and that book had a profound impact. For next 200 years, that book destroyed, I would say, to be a little liberal, destroyed the scientific curiosity among Muslims. And by 1400, Muslims as a nation, as a community, stopped seeking knowledge for the sake of knowledge, because they said, Allah to wahi Allah hai. Why should we decode Allah's creation? Because सूरह मरियम में आता है कि क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर
क़ालत कज़ालिक अल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और उनको गुड न्यूज़ देते हैं कि या मरियम उक़्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन, ओ मरियम, we have chosen thee, purified thee, chosen you above the women of all nations. So she says, how can I, Mary, have a son when no man has touched you? So the angel replies, it is easy for your Lord. For him to do something, it is kun fayakun. So Imam Ghazali said that we should not inquire too much. And if a wood is burning, it has to burn. But the scientists will say, why is the wood burning? Let's go into the combustion. Is the temperature right? Maybe the temperature was right. Maybe, so that curiosity and medieval sciences started to decline. European science was empowered. There is a renaissance that happened. एक यूरोप जो डार्क एजेस में से निकल रही थी, और उसके बाद ऑब्वियसली साइंस वगैरह ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, क्योंकि यू नीड पेट्रन जो आपको, जाहिर सी बात है आजकल हम लोगों ने काफ़ी सुना है कि देयर आर हिस्टोरिकल इश्यूज जिसमें बच्चों के पास फीस भरने का भी पैसा नहीं है, और कितने तो अपने घर के किचन के अखराजात कम करके अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मिलियंस ऑफ यंग मेल, पूरी जनरेशन सऊदी और गल्फ में लेबर करते हैं ताकि वो कुछ पैसे यहाँ भेज सकें और हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो ये इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू बैलेंस द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन अनलेस यू हैव पेट्रन्स जो खिदमत खल और अपना पैसा, अपना धन और अपनी जान और माल सब चीज़ कुर्बान कर दें। मैं अतीक साहब को सुन रहा था कि हम सब कुछ उसमें लगा दिए ताकि पीपल कैन अफोर्ड टू पे। अदरवाइज ठीक है, जो प्रिविलेज क्लास है वो तो चाहे आप एसएससी बोर्ड पढ़ाइए, स्टेट बोर्ड पढ़ाइए, आईजीसीएसई पढ़ाइए, वो तो पढ़ेंगे। What about the 19 lakhs others or 90 lakh others who don't have that privilege? तो इसलिए the solution is that you also generate income, because अब तो कोई निज़ामुल मुल्क नहीं आएगा जो 25,000 इदारे चलाना है, अब तो कोई अकबर बादशाह नहीं आएंगे। हम लोगों को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज खुद जमा करना है, खुद प्रोड्यूस करना है। The greatest way to financial wealth creation right now that is happening in the world, और हम आपकी आंखों के सामने हो रहा है, is in technology. मेरा एक दोस्त था रविंद्र, कुछ साल मेरे से बाद में उसने एक कंपनी स्टार्ट किया था, और कुछ दिन पहले मैं उससे बात कर रहा था, तेरी कंपनी कितनी, what is the valuation of your company? हाँ सर बोलता है यार, I said no really, what is the valuation of your company? उसकी कंपनी थोड़ी सी कंपनी थी, अब तो काफी लोग हो गए। रविंद्र बायजूस.com नाम ने आपने सुना होगा। $22 बिलियन, 1,60,000 करोड़ उसकी वैल्यूएशन है। उसकी खुद की वैल्यूएशन है 12,000 करोड़। उसकी खुद की पर्सनल वेल्थ, मुझसे छोटा है, 34 साल का लड़का है। अब एक 34 साल के बच्चे को अगर 12,000 करोड़ दे दिया जाए तो कितने हवाई जहाज खरीदेगा, कितने होटल और गाड़ियों में रहेगा, वो सब वो फाउंडेशन बनाएगा और दूसरों को पैसा देगा। जाहिर सी बात है उसके पास कॉजेज हैं जिसको सपोर्ट करेगा, और इस तरह से एजुकेशन हर लोगों ने रियलाइज कर लिया है कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा वेल्थ बन रहा है। आज से 30 साल पहले एक लड़का यहाँ से बेंगलोर से गया था, सबीर भाटिया नाम था उसका। जब हम और आप अभी शायद इंटरनेट के बारे में सुने होंगे, तो बिल गेट्स ने उसको बुलाया और बोला ये तुम्हारी कंपनी मुझे बेच दो। 28 साल का लड़का, बिल गेट्स ने उसको बोला $50 मिलियन, उसने बोला नहीं बेचना है। बिल गेट्स ने बोला 100 मिलियन, वो बोलता मैं जा रहा हूँ। बिल गेट्स बोला 200, तो बोलता है सर मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी चलाऊंगा। दरवाजे पहुंचा, बिल गेट्स ने उसको पकड़ के लाया, बोलता 400 मिलियन, बोलता डन। 400 मिलियन 2,000 करोड़ रुपया उस जमाने में होता था। लड़के का नाम था सबीर भाटिया, कंपनी का नाम था हॉटमेड। हम और आप सब लोगों ने यूज किया है। मुसलमान बच्चा था, बेंगलोर में बड़ा हुआ। मुझको उसका बैकग्राउंड नहीं पता कि उसके वालिद ने, उसकी माँ बाप ने कहाँ से उसके एजुकेशन, कहाँ से फीस लेके आए। लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी पढ़ाइए, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें पढ़ाइए।
नजीब साहब कह रहे थे कि जामिया में ज़्यादातर जो मुस्लिम एनरोलमेंट है वो आर्ट्स और अरबिक और उर्दू और लिटरेचर में है। इट्स गुड, लेकिन अब बहादुर शाह जफर जैसे लोग नहीं है कि अगर आप कुछ नई भी शायरी करते हो तो कोई आपको देते रहेगा, और आप हो सकता है कि आप माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उस तरह का हुनर दे तो आप मिर्ज़ा गालिब हो जाएं, लेकिन मिर्ज़ा गालिब बनने के लिए भी एक बहादुर शाह जफर चाहिए रहता है, अदरवाइज मुफलिसी बड़ी बेकार चीज़। और okay, so I just want to tell you this, that while we are, वो क्या होता है, एक जोक है कि अक्सर मैं मुंह में चॉकलेट डाल लेता हूँ और बात करता हूँ when I come on to lecture on the podium, लेकिन आज कुर्ते की बटन आ गई तो वो स्पीच खत्म ही नहीं हो रही, चॉकलेट खत्म, स्पीच खत्म। But I just want to tell you that technology is a great enabler. Technology will change the world. 20 साल पहले, 22 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत मेहनत लगी अपनी वालदा को कन्विंस करने में कि मैं जो कर रहा हूँ हो सकता है मुझको भी नहीं समझ में आ रहा है, टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे इवॉल्व होएगी। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अब अगर आपको आज टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है, अगर आज आपको आईटी समझ में आ रही है, और जस्ट टेक 30 more seconds, अगर आज आपको आईटी समझ में आ रही है तो 3 साल के बाद दुनिया और बदल जाएगी। चाहे फिर आप मुफ्ती हो, आलिम हो, वली हो, औलिया, आप अल्लाह के बड़े बंदे हों, लेकिन दुनिया बदल जाएगी अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं समझेंगे। आपके पास फतवा पूछने नहीं आएंगे, बल्कि वो टाइप कर देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, फतवा दे दीजिए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देगी। आप बदलें, आप अपने बदलिए, अपने आप को बदलिए। अभी गिरानी शब में कभी नहीं आई, दीदार और दिल की घड़ी अभी करीब नहीं आई, चले चलो अभी मंजिल नजर पे नहीं आई। थैंक यू। Thank you very much, Farooq Saab. Much as we wanted to listen to you more, but I think we have to make sure that other speakers get the opportunity. So, Sajid Saab, please. Good afternoon, everyone. It is indeed an honor to be here today in the presence of august delegates and eminent academic leaders. I am thankful to AIDU and Integral University for inviting me and providing me the opportunity to speak in this national conference on education and development. When I was invited, I was so excited to be a part of this event. One of the main reasons is the topic and the agenda that AIDU is carrying forward. The topic that's being discussed here is reaching the unreached by leveraging the technology for equity and excellence. The reason why I was so excited is me and my company, ULEX Learning Solution, has been working on the very same objective, that is reaching the unreached. So, indeed, it's a pleasure for me to be here and share my thoughts on how we can reach the unreached using the technology. So as I was mentioning, I started ULEX Learning Solution in 2016 with a common belief. We believe that when worldwide students, educators, and industry professionals connect and share their knowledge, experience, and expertise, quality of education will improve and more opportunities will emerge, even in the inaccessible and underprivileged sections of the society. Because today, one of the biggest challenges is the colleges or the students who are in the city like Lucknow or Bangalore or Chennai, Delhi, these students are privileged. They have access to the resources, good teachers. But unfortunately, the students in the rural area, they don't get appropriate opportunity. They don't get access to the resources. So, only solution when we were thinking about how do we address this particular solution, address the problem of reaching the unreached, and
we first were thinking about why do we need to reach the unreached? What is the objective? Why? First, we need to understand why do we need to reach? What is the need? So the primary objective of reaching the unreached is to, again, as per the tagline that goes with EDU, empowering and uplifting the underprivileged. And when we are reaching them, what we do need to do? We need to focus and help them with education, skilling them, and once they are skilled, connecting them with the industry so that they could get appropriate career opportunities. When I say career, it's not just about jobs, but also entrepreneurship. So those are the three areas that we need to focus to empower the youth. If we are able to empower the youth, definitely economically they will be uplifted. So on these particular areas, today if you see, particularly youth, these are digital natives. When they are born, they are surrounded with a lot of technologies with them. They were always connected through internet, and today the students have no patience. They could easily distracted. So they have brought the bit-sized learning, small videos, so that you can attract the student attention. And if you see the industry wants to sell something to the consumers. So the industry has adopted towards mobile first technology, mobile first approach, so that they have given Facebook, Amazon, Uber, Ola, WhatsApp, everything is mobile. The reason is, even if we are engaged with something else, some notification comes and we are pulled into that particular technology. So technology has the power to engage the users. So if we are reaching out to the youth, it's not just about today we have a conference, after 1 year we have a conference, or we pull the students and we take the class and we send them home. Once they go home, they forget everything. So how do we stay connected with the students? How do we engage? So industry has identified the solution, that is mobile first approach. They keep engaging with the customers. They send the notification, engage them. Now, the higher education institutions also need to engage with the students, not just about reaching. You need to reach, you need to connect with them, and you should consistently engage with them. And this would happen only through technology. So today, what the industry is using, they use SMAC technologies. Social, if you see social, now the students are spending a lot of time on Facebook, Instagram, and other unwanted things that we think of, right? Because they don't have anything useful, right? Mobile phone is filled with a lot of unwanted things. So when mobile phone is filled with a lot of unwanted things, why not we use the same mobile phone technologies and fill them with the needed and useful things like education, skills, and careers? That's the whole idea of ULEX. So we brought in the concept of social media, connecting the students with other students, educators, and industry professionals. Sadak sir, you have 5 more minutes. Sure, sir. Only 2 slides are there. So then we use mobile technologies, and then we use analytics. When we say analytics, it's about artificial intelligence. Today, students don't listen to parents, they don't listen to teachers. They listen only mobile phone, WhatsApp, social media. So we use analytics to engage the students and provide them appropriate personalized recommendation to them. Then always connected, that is internet we provide. So at ULEX, what we do, we have taken a big challenge of reaching the unreached, how to reach it, how to connect with them. Many people have tried it, connecting the student with industry. What we feel is connecting the student with industry alone is not enough, because the objective of the higher education is not just creating skilled workforce. It is also, the primary objective of the higher education is creating good citizens. So to create good citizens, students not only should connect with the industry, but also they should connect with societies. So they could be a volunteer in NGOs. They could be a volunteer in NGOs and to contribute to the community building. So this is where we came into the concept of connecting the students. What we do is we provide colleges their own branded mobile app. Because for colleges to create their mobile app may be easy, but to maintain and manage is very difficult.
So what we did is we gave every college their own branded mobile app to engage students, to create user account for students, teachers, and alumni, so that the students and teachers can connect with each other, discuss for peer education, and within the app, the profiles of the students are created, and the AI, artificial intelligence that is built behind the platform, it profiles the student, and it tries to understand what the student is good at, where he is located, what he is studying, what are the skills. Based on that, it tries to recommend the students, hey guys, you can connect with these kind of students, these educators, these industry professionals. So by this way, Alhamdulillah, today, ULEX, though we launched only about 6 months back, today we have over 500,000 students and teachers on our platform. More than 500 colleges and universities, we have given their own branded mobile app. Now a student in Chennai can connect with student in Delhi or Lucknow or Jammu and Kashmir. So they not only connect with these students, they can also connect with the teachers. As some student may be doing some research in nanotechnology. So similar research may be done by some other students and teachers. So how to connect this? That's the whole idea of creating communities. These communities are academic communities, industrial communities, and societies. So we help them provide leverage the mobile technologies. And fortunately, we had the opportunity to work with IDU, and we help them create a mobile app using our ULEX platform. The idea here is now the students who are over 500,000 students and teachers, they can also join this IDU community, and they can also share their knowledge, experience, and expertise. So that this IDU, to achieve its objective, yesterday one of the speakers was telling, we Muslim institutions are doing very well in some areas. In some areas, the Muslim institutions are not doing very well. So, for example, Integral University, like Atif Saab was telling, his institution is doing great things. How do we transfer this knowledge to other institutions? So, what we are planning to do is, we create community platform and we provide the technology, we take care of technology, and we work with the institution, premium institution, create courses. And these courses can be offered to their students and their partner institutions for free. The other students also can take up those skill courses. And the same courses can also be offered to the general public at cost, so that sustainability can bring it. So with this, let me end my speech here, and I would be happy to create community platform, because my objective is connecting all the stakeholders of higher education across India. Though we are focusing India, unfortunately we started requests from South Africa and Indonesia as well. So we will be going abroad, out of India, a foreign market, but after we create some positive impact in India, because we see in India it's a huge population, more than 40 million students are there, higher education students, and most of the students are from underprivileged. So we have taken a very big challenge, and I am sure I am very positive about the future and the kind of initiatives being taken by IDU and many other organizations like yours and institutions like yours. I am hopeful. Inshallah, things will be great. Thanks for the opportunity. Thank you very much, Sajid Saab. Abdul Subhan. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is a great honor. I think Inamdar Saab hai, we have Rahman Khan Saab here, we have all the immediate guests here. The topic which is, I think I've been interested with is a topic which I think yes. The topic is the moment, the reaching the unreached, leveraging technology for the equity and excellence. Because I want to first understand, I want everybody to be on the same page with respect to what is the exact situation of the underprivileged. The community which we are actually here addressing is the Muslim community. So let me be very blunt and concentrate on that particular part as to what is the exact situation of the community. Where are we? Because we are talking about reaching them, but we should know where are they, so that we can take the steps to reach them.
So the situation here right now is, we talk about all the minority institutions, but the sad thing is only 6.1% is minority institutions. 70% of the community children goes to the government schools, 30% goes to the private schools, and madrasas, it has become a fashion now to talk about madrasas whenever we talk about anything about education among the minorities. But this is a very crude fact that only 3% of the community children are going to madrasas. And this is, I think I have थोड़ा मैं चोरी किया कुंडू साहब की research से, शरीफ साहब की research से. This is about how it is in different parts of India. If you see southern India is relatively much better when it comes to dependence of government institutions. Muslims का जो dependence है बहुत relatively is very less compared to the other parts of India. In some parts of India it is almost 2/3. And when we look at the situation comparing with the, let's say, SC community go, if we take as a standard, we are performing much worse than अगर SC को अगर एक नंबर 1 पे रखते हैं, situation of the Muslims in higher education and the primary education is much worse. We perform 0.89% when the SC community and ST community is kept as 1%. 1%. Leave aside how the higher upper Hindus are performing, how the OBC Hindus are performing. They are much better. They are almost 4 times better than what the Muslim conditions are in India. So the disparity, whatever we are saying, it is largely for different reasons. When we look at this facts, it is because socioeconomic status, because of geography. We have seen the difference between north, south, east, west, different condition. And the religion, you have seen very clear, there is a disparity based on the religion. And there are disabilities also. But how do we address this? How do we address this challenge? Because whenever we talk about any transformation, trust me, there is a transformation which has happened in the अभी transport industry की बात करेंगे. This is what it used to be 200 years back. आज there is one solution. Uber doesn't own a single car, has created a revolution in itself. एक कार अपनी नहीं है, लेकिन has come out with a solution which caters to all the stakeholders. वहाँ पे ड्राइवर का ख्याल रखा जाएगा, वहाँ पे कार जो ओन करता है उसका ख्याल रखा जाएगा, वहाँ पे कस्टमर को द बेस्ट एक्सपीरियंस दिया जाएगा. All stakeholders का जब तक आप ख्याल नहीं रखेंगे, you will never be able to give a long lasting change and impact. ये इसी खाली आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं. You look at what used to be the hospitality industry, खाने की बात कर लीजिए. What used to be earlier? अब the scenario has changed completely, and in not बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. Just see in last 5 years what change has come. ये इसलिए आया क्योंकि they have taken care of all the stakeholders who are part of that particular system. जो transformation आता है उसी वक्त आता है when you are actually taking care of everybody. But this is what education right now is. ये 1700 की एक फोटो में लिया था how this
for these four stakeholders, we will never be able to give a solution. And that 360-degree approach, what a normal teacher, the teacher who doesn't have very good experience, and a teacher who's very experienced, very knowledgeable, knows how, who's very famous. The difference is just that that very good teacher knows how to deliver that 1 hour lecture. What should be the flow of lecture? What should be the example the teacher should use? Which question to be solved in the class? Which question to be given for the child in the assignment, for the homework? All that experienced teacher will know. We standardized the whole thing, gave to those teachers here. Those teachers became the facilitators. We gave them those teaching aids, and there was situation where those teachers were feeling little pressure because they were not able to skim through or leave any concept, because everything is already systematically designed. The PPT they were just presenting, and the children, even if the teacher was not presenting, there was an option that the teacher can just sit and play one button where a video will play for that class. For each class, either the teacher wish to teach, they will teach using the teaching aid with a great PPT, with animation and every possible thing. If the teacher is, जैसे होता है, उतना भी नहीं करना चाहता हमारा टीचर, तो सिर्फ एक बटन दबा के बैठ जाना है, वीडियो प्ले होगा, और बच्चे वो क्लास, हर क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, वो क्लास का लेक्चर बच्चे क्लास में देखेंगे. अब क्लास का जो लेक्चर हो गया है, बच्चों को कुछ वर्क मिलता है, whether they understood or not कैसे होगा, जो उनको कुछ काम देना होता है. अब बच्चे को 99% बच्चे करते क्यों नहीं, इनके समझ नहीं आया, बोलते हैं I did not understand what is done. So the beauty which we came out with was every child had a 24/7 buddy teacher with them. वो buddy teacher क्या होता है कि पूरा ब्लेम टीचर के ऊपर होता है सिस्टम के अंदर. मुझे टीचर ने पढ़ाया और मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं पढ़ नहीं रहा. मैं होमवर्क इसलिए नहीं करा क्योंकि टीचर ने जो क्लास में कराया मुझे समझ नहीं आया. यहाँ पे एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी क्वेश्चन, एवरी लाइन इज QR कोडेड. यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ओवरफ्लो नहीं है. बच्चे को जहां पे टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, उसको बच्चा खाली स्कैन करेगा, टीचर विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन. अगर बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, उसको स्कैन करना है, टीचर, one of the best teacher will explain that concept in the best possible manner for that child, even if it is 2 a.m. at night or 12 at night. There is a teacher 24/7 for the child now, and there is no escape for the child. एक शाही बच्चा है, एक मरतबा पूछा है, समझ में नहीं आया, फिर भी सेकंड मरतबा पूछा तो टीचर गुस्सा कर देता क्लास में. यहाँ पे वो मसला नहीं है. यहाँ 10 मरतबा पढ़ाएंगे ये टीचर, 10 मरतबा समझना, 20 मरतबा पढ़ाएंगे. There is no escape for the child. If the child wants to study, he will study. अब पेरेंट्स नहीं बोल सकते कि मैं बच्चे की जिम्मेदारी मैंने दे दी है कॉलेज के ऊपर. यहाँ पे पेरेंट विल नो एग्जैक्टली. हम इन्फॉर्म्ड पेरेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे आज मेरे बच्चे के लिए क्या किया गया है, what is the assignment given to my child, whether my child has done the assignment or not, after the assessment, daily assessment, what is the performance of my child compared to the class performance, compared to the all other students. All that parent is going to be informed. They will be on board in the entire learning process of the child. इसके बाद पेरेंट की मर्जी है क्या करना चाह रहे हैं. एवरीडे बेसिस 3 से 4 मरतबा देखे बच्चा नहीं कर रहा तो पेरेंट एटलीस्ट गेट इन्वॉल्व. यहाँ पेरेंट्स का सेपरेट प्लेटफॉर्म होता है, सेपरेट उसका खुद का ऐप होता है. यहाँ पे फिर मैनेजमेंट, नाउ नोबडी कैन एस्केप एनीथिंग. एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज नाउ, you see everything. If anybody is doing any nonsense, you'll know it. So everybody is accountable. So that is what we tried doing it. And I'm so glad, just few days back the results came. गवर्नमेंट PU कॉलेजेस का जो रिजल्ट था लास्ट टाइम, इसी स्कूल का जो रिजल्ट आता था कुछ 70% रिजल्ट आया था, आज 95% रिजल्ट आया 12th बोर्ड का. वही स्कूल्स का जो ग्रुप जो रिजल्ट आता था 60, 65, 70%, वही स्कूल के जब रिजल्ट आ रहे हैं अभी वो है 95% सक्सेस रेट है. और उसके अंदर 98 and above परसेंटेज लेने वाले बच्चे मेरे स्कूल से ज्यादा है जहां पे मैं खुद चलाता हूं. ये 10th बोर्ड का अभी लेटेस्ट रिजल्ट है, लास्ट ईयर का रिजल्ट है. स्टेट एवरेज रिजल्ट वाज less than 80%. Look at their success rate. 99.16 is a success rate
of those schools. ये एक दो बच्चे नहीं है, number of students you can see is 60,000, 40,000 students की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, almost 40,000 students. उसके अंदर क्वालिटी की जब हम देखना चाहेंगे, almost 40% of those students have crossed 90% marks. That is possible. ये देखिए, हम गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात की दुहाई हमेशा टीचर के ऊपर रो के खत्म कर देता है. ट्रस्ट अस, आवर चिल्ड्रन आर केपेबल. उनको सिर्फ मौका चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, राइट टाइम पे राइट जो असिस्टेंस चाहिए ना, वो मिल जाएगी. वंडर्स आर पॉसिबल, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है. आज गवर्नमेंट ले लीजिए, कंटिन्यूसली आज मैं जो अपने तौर पे अपने इंस्टीट्यूशंस को जब चला रहा था, आई वाज नॉट एबल टू रीच सो दोज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. मैं मणिपुर, कश्मीर कभी जाता हूँ, बच्चे बोलते हैं हमको पढ़ना है, लेकिन आई कांट ब्रिंग एवरीबडी टू माय कैंपस बिकॉज़ इट्स नॉट पॉसिबल. द कॉस्ट अटैच्ड टू इट इज सो हाई. 1 लाख 1.5 लाख रुपए बच्चा कैसे देगा मेरे हॉस्टल में रह के पढ़ने के लिए? मैं बहुत लास्ट 1 मिनट आई फिनिश. तो बहुत मेहनत किए, बहुत कोशिश किए, बहुत अलग अलग मॉडल्स हमने ट्राई किए, बट इट वाज नॉट वर्किंग आउट. तो मैं 1-2 स्कूल, 12 पीयू कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज पे खुश हो गया था, बहुत तड़प के, बहुत कोशिश करके. लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, ये आज के दौर की ये मसीहा है, टेक्नोलॉजी को जब यूज किए, लुक एट द इंपैक्ट व्हिच वी कैन क्रिएट. These are the more than 1,000 schools we are able to impact this year. Every year that number is increasing. प्राइवेट में देखिए, ये विजनरी कैसा होता है, ये तो मैं गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, इलीट इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ. आपके पास हमारे सामने द विजनरी इज देयर, रहमान खान साहब. जब ये कॉन्सेप्ट उनके इंस्टीट्यूशन के सामने प्रेजेंट किया गया, बिकॉज दे हैव ओनली वन प्रिंसिपल, whatever is the good, the best should be adopted the first, and they were the one who adopted it. In 40,000 students are studying in DPS now. Those students, those are elite institutions. Now every student is now going to be empowered with 24/7 because they conducted the pilot. All their group school teachers came together. They were so fascinated by the solution. They said, this is what which we could never imagine is happening now. And our parents gave us an opinion. They read out the opinions in front of this Mansoor bhai, and this is implemented. So I know challenges are there. The challenges are real challenges, but we have to address those challenges in a very practical way by trying to address the issue of all the stakeholders. Otherwise, we are not addressing the problem in the system. Thank you all. Thanks for giving the opportunity. Thank you, Mr. Ram. Now, one and only Mr. P.A. Inamdar Sahab, please. We're waiting to hear you. सबसे पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड बातें ज़्यादा हो रही हैं, और इसको भी थोड़ा पहले समझ लें तो अपन बड़े ज़ोर से भी बात कर पाएंगे. पहले तो इस बात को समझ लीजिए, ईच एंड एवरी इंडियन इज अ माइनॉरिटी. क्या समझना जरूरी है? ईच एंड एवरी इंडियन इज अ माइनॉरिटी and has the same right as the religious minorities have. Constitution में क्या कहता है? Minorities, whether based on religion or language, shall have powers to establish and to administer educational institutions of their choice. So religious minorities are 9. And linguistic minorities are everyone. अभी अगर गुजरात से बाहर निकलकर इंडिया में किधर भी जाता है तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, एंड ही हैज सेम राइट्स एज द रिलीजियस माइनॉरिटीज है. ये इसलिए कहने की जरूरत है
कि माइनॉरिटी का मतलब आता है तो सबसे पहले मजबूर लोग कौन हैं, तो मुस्लिम हैं और उनका नाम ज़्यादा लिया जाता है। तो मैं इसलिए आपके सामने ये रखना चाहता था कि हम लोगों को मालूम हो कि इसके और भी क्लेमर हैं। महाराष्ट्र के बाहर जाता है तो क्या होगा? ही इज ऑल्सो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और यूपी के लोग बाहर जाते तो क्या होगा? वो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। अब जहां तक टीचर्स की पढ़ाने की बात होती है और कितने दिन है एक साल के और कितने दिन ये पढ़ाई होती है, ये भी हम लोगों को समझना जरूरी है। 365 दिन साल के हैं और एक्चुअल टीचिंग 150 दिन की होती है स्कूलों में। क्या इस तरीके का काम करके दुनिया को जीतने का काम कर पाएंगे हम लोगों को यहाँ पर 50 बार सोचना पड़ेगा कि कितनी ज्यादा और बच्चों को पढ़ाई के लिए वक्त देना पड़ेगा। और वो अगर हम सोचते हैं तो मुझे लगता है कि 90% काम हमारा वहीं पे हो जाएगा। और इस बात को हम लोगों को सामने रखना पड़ेगा और कम से कम जो लोग उर्दू मीडियम के स्कूल चला रहे हैं उनको तो ये क्लियरली हमको बोलना पड़ेगा कि आपको इसमें ज्यादा वक्त टीचरों को काम करने पे लगाना पड़ेगा, जिसके वजह से हम लोग जो हमारे खामियां हैं उसको पूरा कर सके। कुछ बातें बहुत सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हुए, इसके लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि 2014 में कुछ बातें ऐसी सामने आई और 2016 में बहुत से कानून अमेंड कर दिए गए हैं। आप लोगों को शायद मालूम हो, बहुत से कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और कितने हैं वो 240 कानून को अमेंडमेंट कर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि हम सीनियर लोग यहाँ पे जो बैठे हैं उसको समझने की कोशिश करें। बहुत से उसमें के पुराने हैं लेकिन कुछ नए हैं और माइनॉरिटी के एजुकेशनल राइट्स से भी उसको इम्पैक्ट हो रहा है। अब सबसे बड़ा जो हम लोगों को काम करना है, पहले तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छोड़ देना चाहिए। 1950 के पहले क्या हालात थे अपने? 1950 के पहले मुस्लिम माइनॉरिटीज के क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं? उन दिनों में आप जानते हैं, सब सीनियर लोग बैठे हुए हैं और जो जूनियर हैं वो भी नॉलेजेबल हैं काफ़ी, इसके लिए उनको समझना ज़रूरी है। उन दिनों में ये हालात थे, हम दो हमारे डजन, और आज के हालात क्या हैं? हम दो हमारे दो या हमारा एक। उन दिनों में हम दो हमारे डजन के पीरियड के अंदर जो कुछ भी काम किया गया उसको आज से अगर कंपेयर करते हैं तो वो काम ज्यादा बड़ा हुआ है। और 1950 में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन आई। उसके बाद में जो प्रोग्रेस हुआ है, उसके पहले हजारों साल में जो प्रोग्रेस नहीं हुआ है 1950 के बाद में प्रोग्रेस हुआ है। इसके लिए शुक्रिया अदा करिए। रोने धोने की जगह हमारा ये कहना है कि प्रोग्रेस हुआ है, एक्सपेक्टेशन प्रोग्रेस के ज्यादा हैं और उसको अचीव करने के लिए हम काम करना चाहते हैं। इसके बारे में कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है ये सोच के हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसकी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और हमने कुछ बुक्स वगैरह भी कुछ एक बनाए हुए हैं जो मैं यहाँ पे आप लोगों को, सीनियर लोगों को देना चाहता हूँ कि भी माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल राइट्स के ऊपर जितने भी जजमेंट्स आए हुए हैं उसका हमने एक बुकलेट बनाया हुआ है, आपके पास में सबमिट करता हूँ ताकि उसके बारे में
अगर किसी को नॉलेज लेना है, उनकी केसेस कुछ इस तरीके के और उस तरीके के हैं, तो उसके लिए आप और हम मदद कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश के मामले में हमने जो काम किया है, 60,000 झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को स्पोकन इंग्लिश पढ़ाने के लिए मैंने 80 टीचरों को अपॉइंट किया हुआ है। कितने? 2007 से। और आज ये हालत है कि वो जो अंग्रेजी बोल रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी के गरीब बच्चे 60,000, आप और मैं भी नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि उस एज के अंदर उनका जो टैलेंट होता है, फ्रॉम एज 3 टू एज 12, उस वक्त में जो टैलेंट होता है उनका, उसके बाद के एज में कुदरत के कानून अलग तरीके से खेले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा फर्क पड़ने लग जाता है। हम बचपन में जब फर्स्ट ईयर में पैदा हुए, पहले साल में अपनी मदर टंग बोलने लग गए, किसने सिखाया था अपने को? किसी टीचर को रखा गया था? नहीं, इवन मदर फादर ने और नाना जान, नानी जान, खाला जान, फूफू जान ने भी उनको नहीं पढ़ाया था, खुद बोल बात करते थे। सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट up to age of 12 from age of 1 or age of 3, because they are sincere, they concentrate on it and वो ज़्यादा जल्दी पिकअप करते हैं। अगर हम इस पे अगर जोर देते हैं तो मुझे लगता है कि 90% हमारे जो अभी के जो कंप्लेंट हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं या शॉर्ट कमिंग हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनके ऊपर हम पूरा हावी हो सकते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर हम काम करें। और अब जब बात यहाँ पे 60,000 बच्चों की आई है, अगर सचमुच यहाँ पे माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर आपको स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में कुछ करना है, तो मैं मदद करने के लिए पूरी तैयार हूँ। वो दोनों का स्टाफ मैं अपॉइंट करने के लिए तैयार हूँ और मैं सैलरी देने के लिए तैयार हूँ। और हो सका तो कंप्यूटर की लैब भी आपके पास में सेटअप करने के लिए तैयार हूँ। और उसके लिए एक ही नहीं कंडीशन है, कंडीशन पैसे की नहीं है, इतना अच्छा है। आपको उसके लिए पहले टीचरों को, यंग टीचरों को हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भेजो। यंग टीचर, सीनियर टीचरों को नहीं करने का, क्योंकि सीनियर टीचरों की हालत हम भी जानते हैं। वो जो चाहते हैं वो हो और दूसरे जो चाहते हैं वो नहीं हो, यहाँ तक पहुँच गई उनकी हालत। तो हम चाह रहे हैं कि आपको अगर भेजना है भेजिए, हम उनको पूरे के पूरा ट्रेनिंग देंगे, कंप्यूटर बनाने का, रिपेयर करने का सारा ट्रेनिंग दे देंगे। और साथ में वो बच्चों को भी भेजो जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो 7-8 साल के भी हैं, तो उनको भेजो। रहना फ्री, खाना फ्री, ट्रेनिंग फ्री, कोई फी वगैरह नहीं ली जाएगी। सिर्फ भेजना क्या है उनको, और टीचरों को भेजने का है। और आप जानते हैं मदरसे कितने हैं? मदरसे कितने हैं? आपका क्या कहना है, कितने मदरसे हैं पूरे इंडिया में? हाँ, लाखों हैं। नहीं, मकतब ये सब है, जगह किसकी है? उन्होंने जगह ली है कि नहीं? उन्होंने बिल्डिंग बनाई है कि नहीं? बच्चों का रहने का, खाने का, कपड़े लत्ते का सबका प्रोविजन करके रखा है कि नहीं? और कितने बच्चे रहेंगे? 2 लाख मल्टीप्लाइड में एक मदरसे के अंदर समझो 200 बच्चे हैं तो कितने होते हैं बताइए? 4 करोड़ होते हैं। किसके पास है इंफ्रास्ट्रक्चर? क्यों गवर्नमेंट के नाम के लेके रोने का है अपने को? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के स्कूलों में भी नहीं है। और कहाँ पहले दिन से खाना फ्री, रहना फ्री, पकौड़ा लत्ता फ्री और टीचिंग फ्री चल रहा है कि नहीं वहां पे? सिर्फ अभी एक आपको मेरी रिक्वेस्ट है सर, इन मदरसे के लोगों के साथ एक मीटिंग कराने का रिक्वेस्ट एक ही है, दीन के साथ दुनिया की भी तालीम होते हैं। तो सब है, सब कुछ है उनके पास। दीन के साथ में दुनिया की भी तालीम देने का मामला आज मदरसे के बच्चों में अगर कहाँ से हो रहा है, तो डॉक्टर हमारे ये हैं मौलाना महमूद मदनी साहब, उनके साथ में हमने बैठ के सारी चीज़ों को फाइनल कर दिया है। और आज मदरसे के बच्चों को NIOS के कोर्स के तहत, NIOS का कोर्स के मालूम है कितने लोगों का है?
क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे परेशान है, स्कूल की परमिशन नहीं मिलती। कौन सी स्कूल की परमिशन की जरूरत है आज एनआईएस के सामने? जाओ मत उधर स्कूल की परमिशन के लिए। आप अपने पास अपने कैंपस में या अपने जो भी स्कूल है वहां पर एनआईएस का कोर्स कोई भी परमिशन के बगैर ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है, मेरा तुम्हारी बात नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है। और आप किसी भी स्कूल मैंने गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेते हुए ये कोर्स को पूरा कर सकते हैं। दूसरी के अंदर, तीसरी के अंदर एग्जामिनेशन है, 5वीं के अंदर एग्जामिनेशन है, 8वीं के अंदर एग्जामिनेशन है, 10वीं के अंदर एग्जामिनेशन है और 12वीं के अंदर एग्जामिनेशन है। और लाखों बच्चे इसके ऊपर पढ़ रहे हैं। और मैंने मदरसे के 10,000 बच्चों को एसएससी ने 12th पास करवा के लिया हुआ है कैंपस के अंदर, कुछ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत से मैनेजमेंट के लोग रहेंगे, परेशान रहेंगे, परमिशन नहीं मिलती, ये गवर्नमेंट ऐसा बोलती है, वो गवर्नमेंट वैसा बोलती है। और हमारे पास ऐसा कहावत आई है महाराष्ट्र में, कायद्याचं राज्य नहीं, कानून का राज नहीं है, आज कायद्याचं राज्य है। आया समझ में? कायद्याचं राज्य नहीं, कायद्याचं राज्य है। बोले तो क्या देते हैं बोलो, कानून का क्या बात करें हमारे पास, ऐसा है मामला। और ये कोई बहुत नई बात नहीं है, सैकड़ों साल से है। So we need to wind up in 5 minutes. I know, 5 minutes plus 5 minutes, no, because they all got 10 minutes. We have given you extra time. तो मदरसे के सिलसिले से भी मेरे आपको एक सबमिशन है, एक मीटिंग ले लें ताकि अप्रिशिएट भी उनको करें और उनको सपोर्ट भी करें और उनको एनकरेज भी करें कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर है, किसी के भी पास नहीं है, तो दे कैन गिव बेटर रिजल्ट्स। और जहाँ पे हम लोगों को बच्चों के खाने के, रहने के, कपड़े लत्ते की जो फिक्र की बात हो रही है, उसको भी ओवरकम किया जा सकता है। वो मेरी आपके लिए सबमिशन थी। अब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक ऐसा कमीशन है कि जो ऑल इंडिया के माइनॉरिटी के एजुकेशन के जो प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने नहीं बोल दिया है, उनके ऊपर अपील करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको क्रिएट किया है। और वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के कुछ भी अगर प्रॉब्लम इस तरीके के हैं तो मेरे इंस्टीट्यूशंस को आप ये कीजिए, क्योंकि हमने उसका बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है और उसके परमिशन से लेकर जो भी गवर्नमेंट हमारे खिलाफ ऑर्डर वगैरह इश्यू करती है उसको क्रैश करवा के लेने के लिए हम आप लोगों की मदद कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास उतने वकील भी हैं और मेरे पास लॉ कॉलेज में भी पीएचडी है। जो लोग लॉ कॉलेज में अगर आना जाने वाले हैं तो उनको पीएचडी के लिए हमारे पास आइए, हम उनको वो पीएचडी भी करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मैं चाह रहा था कि ये चीज़ों को अगर हम ये करते हैं, अब स्कॉलरशिप मिलती है, कितने 50 स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की, आपने लोगों को मालूम है कि नहीं? तो क्या करना पड़ेगा हमारे इन बच्चों को, हम जो यही बच्चे, मैं आपको कौन सी बच्चों की बात कर रहा हूँ, 10, 12 साल, 15 साल के बच्चे हैं, इनको अगर टेक्नोलॉजी वगैरह आ जाती है तो इनको हम बिठा के ये सारे काम करवा सकते हैं, जैसा आप यहाँ पे बताया गया कि ये पॉसिबल है। तो ये करने के लिए सर आपके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये सबके सामने बता दीजिए कि ट्रेनिंग देने का काम हम करेंगे, बच्चों को सपोर्ट करने का काम करेंगे। और एक बार बच्चों को सपोर्ट करने के लिए कुछ ट्रेन लोग अगर अपने पास पूना से आके यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर उनको और भी ट्रेनिंग करने का काम करेंगे। मैं आपको गारंटी बताता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे 5 साल के 7 साल के बच्चे 5,000 रुपये महीना कमा रहे हैं मेरे पास। क्या कर रहे हैं? एक सोसाइटी है जहां पे 50 फ्लैट हैं, एक सोसाइटी है जहां पे 50 फ्लैट हैं। वो फ्लैट में अगर ये बच्चा जाके सिर्फ ठहरता है, क्योंकि आज 3 दिन का खाना नहीं रहा तो भी कर सकता है, लेकिन मोबाइल नहीं रहा तो बीमार हो जाता आदमी। क्या सच बोल रहा हूं मैं? सीरियस भी हो जाता है ना। तो वहां पे बच्चा जाके उनको मोबाइल 15 मिनट में नहीं 2 मिनट के अंदर रिपेयर करके दे रहा है। और ऐसे मेरे पास सैकड़ों से बच्चे तैयार करके रखे हुए हमने। तो मैं चाह रहा था कि ये जो निगेटिविटी है उसको निकालने के लिए जो
नौजवान बच्चों को हम तैयार करने का काम कर रहे हैं, वो काम हो रहा है. लेट अस नॉट से कभी ऐसा दिन आएगा कि 100% सब की सारी दुनिया जैसा चाहती है वैसी पूरी हो चुकी है, कभी भी नहीं होने वाला है. बट परसेंटेज हैज इंक्रीज्ड. हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है. पहले इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दफनाने का काम करें. हम कर सकते हैं और हम करके बताएंगे. ये कसम खाने की बात हम करते हैं और उसके लिए लोग हैं, उसके लिए लोग मदद करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं. खान साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं. मिनिस्टर जब थे, इमरान खान साहब यहाँ पे बैठे हुए. मिनिस्टर जब थे, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, माइनॉरिटी की जितने भी प्रॉब्लम्स थे तो उसको जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, उसके वजह से आज आपको यहाँ प्रोग्रेस नजर आ रहा है और बैठना उठना सारी चीजों को लेकर नजर आ रहा है. ये जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनी हुई है, ऐसे कितने यूनिवर्सिटी बनी है. अब मेरे कैंपस में 2 यूनिवर्सिटी बनी हुई है. हमारे कैंपस के अंदर सीनियर कॉलेज का, उसके जो पैरामीटर्स हैं हमने कंप्लीट किए, तो सीनियर कॉलेज के अंदर हमको यूनिवर्सिटी मिल गई है. 2021 से मिल गई. हम खुद एग्जामिनेशन ले रहे हैं, हम खुद सिलेबस तैयार कर रहे हैं, हम खुद उसके पेपर जांच रहे हैं, हम खुद सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं. और क्या मांगता है. So we need to conclude this. So all these things are positively happening. Let us not have inferiority complex. Let us go with confidence to create something different and achieve something different. And in that, अब यहाँ पे सारे सीनियर लोग आपके साथ में हैं और जरूर जहां पर भी पड़ेगी पैसे लगते कि मैं आपके साथ में हूँ, इतना कह के मेरे राजा. बहुत शुक्रिया नामदार साहब और fellow speakers, and thank you very much the organizers for having me here. And without wasting any further time, I would like to bring this session to a close. But before that, I just want to share a few thoughts very quickly. सबसे पहली जो बात है, आज का जो हमारा थीम था आज, it was about technology and how technology can make a difference. और so बहुत सारे presentations भी हुए, इसमें बताया गया कि क्या कर सकते हैं. So from as a management professional, what I can share with you is that technology is a great leveler. It does not distinguish between people. आपका मजहब क्या है, आप किस रेस से, किस रीजन से, किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, इससे टेक्नोलॉजी को कोई फर्क नहीं पड़ता. दूसरी बात, टेक्नोलॉजी इज अ फोर्स मल्टीप्लायर. We see that in our work environment on a daily basis. The way we were working 30 years ago is not the way we work now. In fact, the kind of work that I do personally is probably 20 times the work that was being done by my predecessors 30 years ago, physically, and what I'm able to deliver through use of technology. And that's true of most of my colleagues. So it's a great leveler, it's a force multiplier. And third aspect of technology is that it is relentless. As a community, we have been fighting the wave. You know, I always tell my colleagues in business that you can ride a wave or you can fight a wave. If you keep on fighting your wave, you know, no amount of resources will take you anywhere. Regardless, you may have inexhaustible resources, but you will not be able to go past the forces that you are up against. But if you ride the wave, then obviously you put tailwinds in your mission. And of course, there are too many things that we can talk about today, but since the theme of this session was about technology, I thought I will just share these few perspectives. It's a great leveler, it's a force multiplier, and it's absolutely relentless. And I would reiterate what Pastor Farooqi was talking about. You know, as a community, we have missed. In fact, he reflected on the historic achievements of the community, Muslim community. Great thinkers, great mathematicians, outstanding contributions to science and technology. And then suddenly the community just closes up. Voices of reason, logic, discovery given a go by. And a mindset which is always kind of
blaming, self-flagellation, victimhood, blah, blah, blah. Meanwhile, the rest of the world has moved ahead, riding the wave, and I don't want to take too much time citing the examples of too many communities, maybe even difficult circumstances than us, and they've done so well. You know what I'm referring to. So I think the message that I would like to give is that we have to embrace technology. You know, I was in a Muslim institution, a renowned one, a few months ago. I was one of the early adopters of ChatGPT, and I was interacting with some of the faculty, and I showed them how it worked. And I was actually experimenting with it on a daily basis every night. But the reaction that I got from the renowned faculty of that university was quite revealing. It is useless. It can never replace human intervention. It can never replace human research, and so on. That's very reflective of how we think and we act. And I think this is the mindset that is causing us so much of distress. You can use technology to your great advantage, as our friend Abdul Subhan just explained. Or you can choose to close your eyes and let it pass. I think we have to make our choices very carefully. और जाने के पहले एक छोटा सा पैगाम मैं सबको देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे हमारे उलमा हज़रात और बड़े बुजुर्ग, कि जो कौम सुबह नहीं उठती, सवेरे नहीं उठती, उसकी कभी तरक्की नहीं हो सकती। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ NGOs के साथ जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे इलाकों में जो मुस्लिम इलाके हैं, और वहाँ सारी कोशिशें इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि पूरा मोहल्ला 12 बजे सो के उठता है। ये कौम कभी कामयाब नहीं होगी अगर हम सुबह उठने की आदत नहीं डालेंगे। और इस छोटे से पैगाम के साथ मैं अपने इसको सेशन को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। अब सवाल जवाब का वक्त बहुत कम बचा है, फिर भी अगर कुछ सवालात हो, अब्दुल सुभान साहब कह रहे हैं कि किसी को पूछना हो तो प्लीज, हाँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी, बस एक सवाल पूछ लें आप। हाँ, my name is Faisal Akhtar. I am working as a principal for Sunrise School Basti, and I am president for Human Foundation. Since this is a technical session for empowering and uplifting the underprivileged, तो दो चीज़ें हैं। पहली तो ये कि टेक्नोलॉजी ने सच में बहुत दिया है सोसाइटी को। हमारे दौर में करीब 15 साल पहले अगर हमें पढ़ना है तो अच्छे ट्यूटर की तलाश होनी चाहिए थी। आप सवाल पूछिए। बस आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश। तो इसका अच्छा रोल रहा है आज की डेट में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यू मस्ट बी हैविंग एन इंटरनेट कनेक्शन एंड यू कैन जस्ट लर्न फ्रॉम IIT and IIM प्रोफेसर्स फॉर अ वेरी चीपर प्राइसेस। तो ये तो चीज़ है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट ये महंगी भी है। व्हेन द टेक्निकल पर्सन कम टू द स्कूल्स लाइक आवर्स, they say that this is very cheaper, 100 rupees per student, and that is going to cost 1200 rupees for a student. If a school is having 1000 students, this is going to be 12 lakh rupees. So please tell me some these kind of apps which is really very cheaper for 50, 60 or a lakh rupees for annum. Thank you. That's a very good question actually. When you scale, then things are expensive and technology is absolutely expensive. ये पूरा रेवोल्यूशन जो है ये एडटेक इंडस्ट्री जिसको कहा जाता है, जहाँ एजुकेशन को टेक्नोलॉजी पे अब ये पिछले 4-5 साल में स्पेशली लॉकडाउन के बाद इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो गया। लेकिन ये इसकी जो बुनियाद फंडामेंटल वो अगेन एक मुस्लिम लड़के ने किया। शिकागो में रहता था, सलमान खान नाम था उसका। उसकी एक भांजी थी, दूर रहती थी, नादिया नाम था उसका, और उसको वो पढ़ाता था रिमोटली क्योंकि बहन के पास एक शिकायत रहती थी कि बच्ची पढ़ती नहीं है, उसको मैथ में काफ़ी मुश्किल होती है।
तो सलमान खान ने उस जमाने में नया अभी एक छोटा सा स्टार्टअप था, 15-20 लोग उसमें काम करते थे, उसका नाम था यूट्यूब, ज़्यादा लोग नहीं जानते थे उसको। उस पर वो वीडियो बना के डालता था और अपनी भांजी को लिंक भेजता था और ये बोलता था देख लो। सलमान खान ने इस तरह के 6,500 वीडियो फ्री बना के डाल दिया और उसको बिल गेट्स मिला और बिल गेट्स ने बोला यूट्यूब से निकलो, और इसकी पूरी एक एनजीओ टाइप बना के उसने खान एकेडमी पूरी फ्री कर दिया। आप उसको इसी तरह, तो अब ज़्यादातर अब कमर्शियल हो गया है ज़्यादातर, और बहुत सी एडटेक कंपनीज आ गई, जैसे मैंने आपको बताया बाइजूस वगैरह आ गई, $22 बिलियन की, $1 बिलियन की तो रेवेन्यू है 60,000 करोड़ की। तो यस, इसमें कैपिटलिज्म आ गया है, लेकिन अभी भी अगर आपको फायदा लेना है, देयर आर इनफ पीपल आउट देयर हु हैव मेड ग्रेट लेसन्स, वीडियोस सारी टॉपिक्स पे, केजी से लेके 12वीं तक की टॉपिक्स पे और आइंस्टाइन की थ्योरीज पे भी, और हर टॉपिक आपको फ्री मिल जाएगी। आप खान एकेडमी पे जाइए, सलमान खान के वीडियोस देखिए, बहुत से माशाल्लाह दुनिया में इस तरह के अच्छे लोग हैं जो अभी भी खिदमत करना चाहते हैं, एंड दे डोंट वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, एंड दे आर डूइंग इट। आई थिंक ये हम जब भी बात करते हैं कॉस्ट की, हम ऑलवेज वी गो फॉर दिस ओपन प्लेटफॉर्म, लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ा जो चैलेंज है इंफॉर्मेशन का नहीं है। यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन, अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या बच्चे को चाहिए, बहुत रिलेवेंट और कम टाइम में, क्योंकि दैट इज व्हाट, बहुत कस्टमाइज चाहिए। बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है उस वक्त पे, उसका सोल्यूशन। देखिए, आप हर चीज को फ्री में तलाश मत कीजिए, होता है। हाँ, जो होल मेरी पूरी कोशिश है, ये मेरी एक्चुअली बिकम ए मूवमेंट फॉर माई सेल्फ, कि हाउ डू वी ब्रेक दैट बैरियर, जो खाली अमीर को ही क्यों है तो उसका एक्सेस, हाउ डू वी मेक श्योर दैट इट इज एक्सेसिबल फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी, एंड दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रस्ट मी, आज ये 350 करीब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, छोटे इंस्टीट्यूशंस आर यूटिलाइजिंग और हैप्पीली, क्योंकि रेवोल्यूशन दे आर सीइंग, बच्चे एम्पावर्ड हो चुके हैं, टीचर्स आर फीलिंग एम्पावर्ड, जो वो कभी सोच नहीं सकते थे। वो 5 बुक्स के रेफर करके कोई R&D किया हुआ अच्छा सा कंटेंट नहीं बना सकते थे। टीचर हमारी 2 काम करती है, घर में भी करती है, स्कूल में भी करती है, उसके लिए पूरा सोल्यूशन है। मैनेज सबके लिए जब सोल्यूशन देते हैं, जरूरत के हिसाब से रहता है, कस्टमाइज रहता है, वो सोल्यूशन की जरूरत है, और उसके लिए आप एक्सप्लोर कीजिए। वन सोल्यूशन इज देयर which is ours, but there are many other possible. Thank you. We bring this session to a close, but not before we have distribution of souvenirs by Shai Sajjati sir. Please. Cash में दियो तो अच्छा होता ना। मेरा कल एक मूवमेंट चलाइए, ये सोवेनियर के सेक्टर में भाई और इन लोगों में कराइए। बहुत हमारा ऐसा ये घर में बता सके कि यहाँ जाके दिए, बताऊँ इनाम आपको दिया। आप तो हमारे डॉक्टर मीनार हैं, जिससे हम सीख रहे हैं डेकेड्स। Sir, thank you very much. It's such a pleasure meeting you. Thank you very much. Chennai. Thank you. तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि अभी अगला सेशन 30 मिनट्स का है और इसके बाद लंच का इंतज़ाम है, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है
इस वजह से कंटिन्यूअस हम इस सेशन को चला रहे हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ फाउंडर एंड चेयरमैन शाहीन ग्रुप डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब, शाही इमाम ईदगाह लखनऊ एंड चेयरमैन इस्लामिक सेंटर, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल साहब। डॉक्टर हुसैन मुदव्वर साहब केरला से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। जी रहमान अशफाक भाई गए हैं, ये सेशन में आना चाह रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट 2023 की मैं तमाम हजरात का खैर मकदम करता हूँ। आईडू के जिम्मेदारों की जानिब से उनका वालिहाना इस्तकबाल करता हूँ। आज का हमारा सेशन है कि मेन स्ट्रीमिंग मदरसा एंड मुस्लिम एजुकेशन। मदरसा अभी कल से मदरसे को लेकर, मदरसे की मेन स्ट्रीमिंग को लेकर कई लोगों ने गुफ्तगू की। अभी पीए इनामदार साहब ने भी कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो लाखों की तादाद में मदारिस हैं, उनके पास तमाम स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, बस उनको एक फॉर्मेट देने की ज़रूरत है ताकि करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान में एजुकेशन की लाइन में काम हो सके। मैं बिला किसी तमहीद के, क्योंकि कल से तमाम हजरात तालीमी एजुकेशन को लेके, तालीमी कॉन्फ्रेंस को लेके, उसकी रोड मैपिंग को लेके बहुत सिंसियरिटी के साथ गुफ्तगू चल रही है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये न देखो कि चरागों की लोएं मध्यम क्यों हैं, ये न देखो कि चरागों की लोएं मध्यम क्यों हैं, हमसे पूछो कि हुआ जश्न चरागा कैसे। बिला किसी तमहीद के मैं आज के इस कॉन्फ्रेंस के और इस सेशन के रूह रवा डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का नाम बिल्कुल इंट्रोडक्शन के तारुफ का मोहताज नहीं है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से ये मदरसे के बच्चों को लेके कि मेन स्ट्रीम में उनके अंदर साइंसी टेम्परामेंट और एटीट्यूड कैसे डेवलप हो, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और बेदर्द की सरजमीन से उठकर पूरे हिंदुस्तान में जो जाल बिछाया है, मैं इनका आईडू के जिम्मेदारों की जानिब से और सरजमीन लखनऊ के जिम्मेदारों की जानिब से, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों की जानिब से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आपने जिस जफाकशी के साथ अपनी मंजिल का रास्ता तय किया है, यकीनन लायक मुबारकबाद है। हो पाँव में ताकत तो चल के रहता है, जमाना लाख गिराए संभल के रहता है, और हो जिस चराग में ताकत लो बढ़ाने की, हवाएं लाख बुझाए जल के रहता है, जल के रहता है। तो मैं बगैर किसी तमहीद के मैं आपको अदब एहतराम के साथ डाइस पर मदऊ करता हूँ कि आप आएँ और मेन स्ट्रीमिंग मदरसास, उनके बच्चों के लिए उनका रोड मैप क्या होना चाहिए। एक बात और मैं गोशगुजार करा दूं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मदारिस में एडमिशन्स चल रहे हैं, पूरे शव्वाल का महीना है और एडमिशन्स चल रहे हैं और सब लोगों के सिलेबस डिजाइन हो रहे हैं। तो यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में एक बात और तय हो जानी चाहिए, मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार बैठे हैं, कि कुछ ऐसा एक सिलेबस डिजाइन कर दिया जाए जो
प्रपोजल जो है मदारिस इस्लामिया के जिम्मेदारान को भेज दिया जाए और उसके बाद उनके साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करके उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश होना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि सर तशरीफ लाएं और गुफ्तगू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह का फजल है कि मैं आप जैसे काबिल तरीन लोगों के दरमियान में यहाँ पर आज मौजूद हूँ। मैं सिर्फ अपने चंद आखिर से तजुर्बात आपके सामने रखूँगा, कुछ गुजारिशात रखते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैं तमहीद के तौर पर बताना चाहूँगा कि शाहीन 35 साल पहले एक छोटे से कमरे में शुरू हुआ था 17 बच्चों के साथ। मैं अक्सर रिपीट भी करता हूँ ताकि लोगों को हिम्मत भी हो जाए। 17 बच्चों के साथ बगैर प्लास्टर और बगैर फ्लोरिंग की कमरे में 12 बाई 18 का कमरा था। एक तरफ सामने था, पीछे एक दरवाज़ा था, गली में मैं ठहरता था, अंदर एक टीचर पढ़ाते थे। खानदान के कुछ बच्चे, दोस्त अहबाब के कुछ बच्चों को इन बिटवीन एकेडमिक ईयर शुरू किया था। उस वक्त मुझे एहसास था कि हमारा स्कूल बस एक एडिशनल स्कूल ना हो बल्कि कुछ डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, और एहसास था कि स्कूल बच्चे की तमाम तर तालीमी ज़रूरत पूरी करेगा। उस वक्त हम दीनी ऐसी तालीम के हसीन इम्तज़ाज की ख्वाहिश दिल में पैदा करके 80-20 का फार्मूला बना लिए थे, यानी स्कूल में 80% असली तालीम होगी और 20% दीनी तालीम होगी। ये हम आगे लेके चल रहे थे और तमाम तर तालीमी ज़रूरत स्कूल पूरी करेगा, ये एहसास के साथ। तो फौरी एहसास हो गया कि नाज़रा कुरान एक अहम तरीन तालीमी ज़रूरत है, दीनी तालीम एक अहम तरीन ज़रूरत है। तो हम क्लासरूम में शुरू किए। फिर फौरी एहसास क्लासरूम में नाज़रा कुरान पढ़ाना शुरू कर दिए और एक क्लास में 3 टीचर जाते थे, इनफरादी तौर पे पढ़ाना, फिर इज्तिमाई तौर पे बोर्ड पे पढ़ाना। और प्रॉस्पेक्टस में हम लिख दिए थे उस वक्त 35 साल पहले कि शाहीन में एडमिशन लेने के बाद बच्चा किसी मदरसे को नहीं जाएगा, मस्जिद को नहीं जाएगा, कोई हाफिज साहब घर को आके नहीं पढ़ाएंगे, ये मना है। अगर ऐसा करेंगे तो हम एडमिशन कैंसिल कर देंगे। माँ बाप अपने शौक के साथ सवाब के लिए पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज ये जिम्मेदारी शाहीन की है, हमारी है, और हम हर लिहाज से जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये एहसास के साथ हम काम शुरू करें। माशाल्लाह ये आगे बढ़ता गया और जैसे ही ये बच्चे सेकंड स्टैंडर्ड में LKG UKG फर्स्ट में कायदा पढ़ाने का सिस्टम शुरू किए थे, सेकंड स्टैंडर्ड में क्लास में 30 पारे नाज़रा कुरान पढ़ाए और सेकंड पास बच्चों को शोबे हिफ्ज़ मिली। हमारा अपना एक शोबे हिफ्ज़ शुरू किए, उसमें 80-20 का फार्मूला इख्तियार करें। 80% वक्त उल्टा कर दिए। स्कूल में 80% स्कूल की तालीम होती थी, 20% दीनी तालीम होती थी। शोबे हिफ्ज़ में 80% हिफ्ज़ की तालीम होती और 20% मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस की तालीम देना शुरू कर दिए। और ये बच्चे LKG UKG फर्स्ट में क़ायदा, सेकंड स्टैंडर्ड में नाज़रा कुरान, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल करते थे मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस के एक पीरियड के साथ। ये बच्चे वापस 6 में गए, माशाल्लाह 15-20 दिन के अंदर महीने के अंदर अपने साथियों से बेहतर परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिए। और ये आगे बढ़ी माशाल्लाह 8, 9, 10 करते करते पहली ही हमारी हाफिजा फारिगा राबिया बसरीन माशाल्लाह कर्नाटका के सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ली और अब MD करके हैदराबाद में प्रैक्टिस करी। ये सिलसिला आगे बढ़ा, बेशुमार बच्चे हिफ्ज़ करके शाहीन के शोबे हिफ्ज़ से हिफ्ज़ करके आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ जैसा कि मैं बताया आपको, शाहीन का टारगेट था कि तमाम तर तालीमी ज़रूरत हम पूरी करेंगे। तो एक फैशन है, हर जगह है, अफसोस की बात है, वो ख़त्म होना चाहिए। हम ट्यूशन को इरेडिकेट करना है। देखिए, याद रखिए आप, ये ट्यूशन हमारे बच्चे भी जा रहे थे, शाहीन में एडमिशन ले रहे हैं, रिक्वेस्ट करके अप्रोच करके बड़े शौक से, और बाद में ट्यूशन भी जा रहे हैं। स्कूल से घर बच्चा जाते ही फौरन ट्यूशन जा रहे हैं। हमको बुरा लग रहा था, गैर फितरी तरीका है। तो हम किसी दिन बैन कर दिए, लिख दिए प्रॉस्पेक्टस में, कोई बच्चा ट्यूशन जाएगा तो शाहीन से एडमिशन कैंसिल कर देंगे हम। लोग नाराज भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 महीने के अंदर हम साबित कर दिए कि ये ट्यूशन नुकसानदेह है और सारे बच्चे ट्यूशन जाना बंद कर दिए। और आज भी इधर आपको खुशी होगी कि इंडिया का ओनली डिस्ट्रिक्ट है ट्यूशन फ्री डिस्ट्रिक्ट बीदर माशाल्लाह है। और हम ट्यूशन की बीमारी को खत्म कर दिए। ट्यूशन की ये बीमारी है, कमजोरी है, इसको इरेडिकेट करने की कोशिश करना चाहिए संजीदगी के साथ। बच्चा जाके स्कूल में यस मैडम ओके मैडम बोल रहा और ट्यूशन में यस मैडम ओके मैडम बोल रहा और रिपीट नहीं कर रहा, रिवाइज नहीं कर रहा, रिकॉल नहीं कर रहा, पढ़ने का टाइम नहीं है उसको, और वो कोरा का कोरा रह जा रहा। तो उसके बड़े अच्छे नतीजे निकले माशाल्लाह। और उस दौरान हमको एहसास हुआ कुछ बच्चों को जरूरत होती है एक्स्ट्रा केयर की।
तो उस वक्त हम उनके लिए स्पेशल इंतजाम शुरू कर दिए। गौर करें, एक्स्ट्रा कोचिंग, रेमेडियल कोचिंग, स्पेशल कोचिंग के नाम से करते करते 6 महीने के अंदर फिक्र करे, मीटिंग्स किए, रिसर्च किए कुछ, और एक तरीक़ाकार बना लिए और एक सिस्टम बना लिए, एक डिपार्टमेंट बना लिए। डिपार्टमेंट का नाम रखे AICO, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। हॉस्पिटल में ICU होता है, हम AICU बना लिए माशाल्लाह। एक टीचर 6 बच्चे होते हैं और बच्चे की जरूरत जहाँ पे होती है वहां से हम शुरू करके उसको आगे बढ़ाते हैं। ये काम करना शुरू कर दिया माशाल्लाह। और कोई बच्चा ट्यूशन नहीं जा रहा था। इस दौरान कुछ ड्रॉप आउट बच्चे हमारे पास आए, पेरेंट्स परेशान है, 3 साल से स्कूल में बच्चा फेल हो रहा, वर्कशॉप में काम कर रहा था, मामू की ख्वाहिश हुई लेके आए। तो हम ऐसे बच्चों को लिए और AICU में रखकर उनको 3 महीने 4 महीने में मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस की बेसिक को ठीक करके 9, 10, 11, 12 कराए माशाल्लाह। ऐसे बच्चे भी सक्सेसफुल हुए और इसमें माशाल्लाह इंजीनियर हैं, वेटनरी ऑफिसर हैं, बड़े बड़े कोर्सेस में जो है ज्वाइन कर लिए, ड्रॉप आउट भी ज्वाइन कर लिए। तो 12-13 साल पहले मुझे ख्याल आया हमारे हाफिज बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं और हमारे ड्रॉप आउट भी साथ ही साथ सक्सेसफुल हो रहे हैं। कुछ लोग जानते होंगे, ख्वाजा पटेल हमारे वन ऑफ द डायरेक्टर हैं, वो ऐसे ही ड्रॉप आउट थे, डीजल मैकेनिक थे। और 2 भाई फेल थे, स्कूल फेल थे, वो आज एक वेटनरी ऑफिसर है और शाहीन के अंदर सर वाइस प्रिंसिपल हैं जो 7000 बच्चों को मैनेज करते हैं। ये ड्रॉप आउट थे। तो 12 साल पहले ख्याल आया ये तरीक़ाकार क्यों ना हिंदुस्तान भर के हुफ़ाज़ के लिए अपना जाए, तो ये ज़्यादा कारगर होगा, ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि हाफ़िज़ ज़हीन होते हैं, मेहनती होते हैं। तो ख्याल आया, ख्वाहिश पैदा हुई और मीटिंग वगैरह रखकर हम एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें। प्रोग्राम तरतीब देना शुरू कर दिए और प्रोग्राम का नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस, नाम रख के ऐलान किए। कुछ बच्चे आ गए माशाल्लाह। देखते देखते 4 साल का प्रोग्राम था, लेकिन 3 साल के अंदर उसके नताइज आना शुरू हो गए। 3 साल में पहले ही बैच में पहला बच्चा जो फारिग हुआ, हाफिज अबू सुफियान, वो रायचूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर लिया है और DMD की तैयारी कर रहा है। बेशुमार बच्चे माशाल्लाह को इस साल 12 ऐसे हाफिज जो कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गए थे, मेडिकल कोर्स में लिए हैं। आपको इत्तला मिल जाएगी महीने 2 महीने के अंदर अंदर। इस साल 25-30 ऐसे हाफिज जो जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए थे, गवर्नमेंट मेडिकल सीट लेने वाले हैं। लास्ट ईयर हमारा एक टॉपर 680 मार्क्स लेने वाला वो भी हाफिज है और आज भोपाल के एम्स भोपाल में पढ़ रहा है। ये ख्याल था। अब जो है 12 साल पहले हम काम शुरू करें, नताइज अच्छे आ रहे थे। 2, 4, 5, 10 लोगों से घूमे फिरे, 12-15 सेंटर 25-30 बच्चों के लिए बना लिए। उलमाए कराम बीदर पहुंचे, 1 से 2 मरतबा विजिट करके वो खुशी का मुजाहरा करे और वो ख्वाहिश जाहिर करे कि इस ख्याल को, नजरिए को आलम के कोने कोने में फैला दो। हमारी हिम्मत अफजाई करे और हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। 20-25 सेंटर हो गए थे, 50 बच्चे, 100 बच्चे, 80 बच्चों के। खासतौर पे लखनऊ में 3 सेंटर अभी फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन ये 2.5 महीने पहले ख्याल आया इसको मास लेवल तक पहुंचाना चाहिए। ये आज की ज़रूरत है। मदरसे बेचैन हैं, मदरसे मुतासिर हैं, उनके पास डायरेक्शन होना चाहिए। उलमाए कराम ख्वाहिश कर रहे हैं, दानिश्वर हजरात ख्वाहिश कर रहे हैं कि दीनी ऐसी तालीम का इंतजाज होना चाहिए। तो 2-2.5 महीने पहले ख्याल आया कि इसको मासिस तक पहुंचाना चाहिए। तो हम कुछ मशवरे किए, दानिशरों से, उलमाए कराम से मशवरे किए, एक प्रोग्राम बना लिए और वो प्रोग्राम का नाम रखे मदरसा प्लस के नाम से उसको इंट्रोड्यूस किए, मशवरे किए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तरीक़ाकार ये बनाए हैं कि मदरसे में, बड़े बड़े मदरसे जो खाली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खाली है, जैसा कि इनामदार साहब बात बताए, बिल्कुल हकीकत है ये कि बड़े बड़े मदरसे हैं और 20% भरे हुए हैं, 10% भरे हुए हैं, वहाँ पर जगह खाली है। तो हम ख्याल आया चलो वहाँ पे मदरसे वालों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बच्चों को अकोमोडेशन दो, खाने का इंतजाम करो, निगरानी करो, उनकी तरबियत करो। हम टीचर रखेंगे और तरीक़ेकार जो है बताएंगे, सिस्टम बताएंगे और NIOS से उर्दू मीडियम से 10th पास कराएंगे। लोग उसको जो है पसंद करना शुरू करें और एक 5000 हुफ़ाज़ को इंडिया भर के असली तालीम से जोड़ने और 10th पास कराने का मनसूबा बना लिए और उसको पेश करें। 50 मदारिस की ज़रूरत थी हमको। रमज़ान से 20-25 दिन पहले मैं घूमना शुरू किया इंडिया भर में, माशाल्लाह। लेकिन लोग ज़्यादा ख्वाहिश जाहिर करें और कुछ लोग खुसूसी रिक्वेस्ट के साथ ज्वाइन कर लिए। आज 60 बड़े मदरसे इंडिया भर के मदरसा प्लस से जुड़े हुए हैं और इंडिया के तमाम उलमाए कराम, बड़े बड़े और तमाम उलमाए कराम इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और इसको एक बड़ी उम्मीदों के साथ जब से हम ये ऐलान करे हैं तो हर तरफ से, इंडिया के कोने कोने से दुआएं जो है लोगों की शुरू हो गए हैं और उसी की नतीजा है माशाल्लाह ये प्रोजेक्ट बिल्कुल कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है।
500 टीचर्स की हमको जरूरत थी। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी की मदद लेकर हम 15-20 सेंटर्स में जो है इंटरव्यू रखे। अब उनका रिक्रूटमेंट हुआ है, बीदर में बुला के उनकी ट्रेनिंग दिए हैं, मदरसों को टीचर्स भेज दिए हैं। अभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन शुरू हुआ है। अभी हमको स्टूडेंट्स चाहिए। तो कुछ लोगों का मशवरा था कि हुफ़ाज़ के साथ कुछ यतीम बच्चों को भी लें, तो ठीक है, उनको ऐड किए। लड़कियों के लिए 6 सेंटर तय किए हैं। कुछ उलमा कराम हैं जो बड़ी उम्र के हैं, 20-22 साल के हैं और कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए एक स्पेशल सेंटर श्रीरंगापट्टनम में, मैसूर के करीब में तय किए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हुफ़ाज़ और उलमा कराम जो 10th पास हैं, किसी भी तरीके से पास हो गए हैं, तो उनके लिए बीदर में 200 निशिस्तों के सीट के साथ बीदर में सेंटर बनाया है। जो 10th पास हैं, 12th पास हैं, डिग्री पास हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, चलेगा। 10th पास हैं, बगैर पढ़े लिखे पास हैं, संभव गेट पास ले लिए हैं, उनको बुनियादें ठीक करके हम उनको 11-12 में बैठने के काबिल बनाएंगे। जो 12 पास हैं उनकी बुनियादें ठीक करके उनको डिग्री में बैठने के काबिल करेंगे। जो डिग्री पास हैं उनकी बुनियादें ठीक करके उनको काबिल करके बीएड के लिए तैयार करेंगे और दीगर एग्जामिनेशंस के लिए तैयार करेंगे, उनको एम्प्लॉयबिलिटी के लिए तैयार करेंगे इंशाल्लाह। ये मंसूबा जो है इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप तमाम हजरात जो है जो इस बात को समझते हैं, इसको पसंद करते हैं, यकीनन सबकी दुआओं का नतीजा है ये काम हो रहा है। ये काम अल्हम्दुलिल्लाह ना ही हमारे तस्वुर में आ सकता था, मेरे तस्वुर से बढ़ के है, ख्वाहिश से बढ़ के है, अल्लाह रास्ते निकाल रहा है, अल्लाह काम ले रहा है। मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप तफसीली देखिए, समझिए। madrasa+.org हमारी वेबसाइट पे सारी चीज़ें हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब और अलावा कई जो है उलमा इकराम हैं जो इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब के तीनों बेटों के मदरसों में ये सेंटर कायम हुआ है। मैं खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब को फ़ोन पर बता रहा था, आधे मिनट की गुफ्तगू में बोले कि मियाँ हमारे मदरसा जो दरभंगा में चलता है वहाँ पे ये सेंटर कायम कीजिए। तो वहाँ पर भी हम कायम किए हैं, 60 मदरसे हैं। लेकिन सेकंड फेज के लिए ये प्रोग्राम शुरू होने के बाद 6 महीने के बाद मैं लोगों को रोक कर रखा हूँ, रिक्वेस्ट को जो है पेंडिंग रखा हूँ, उनके डिटेल लेके हम सेव कर रहे हैं। मजीद मदरसे तैयार हैं, ये मदरसे बदलेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी तब्दीली आएगी। जैसा कि अभी हमारे इनामदार साहब जो जिक्र कर रहे थे, वाकई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल वालों के पास नहीं है। और देखिए 2-4% जो है ये बदलेंगे तो दुनिया को बदल के रख देंगे, ये बड़ी तादाद होती है। मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि 14 से 18 साल की उम्र के बच्चे हमारे पास गाँव में 10% हैं, 10% हैं। सिर्फ 3 करोड़ हो रहे हैं। आप कैलकुलेशन करके देखिए, सिर्फ 3 करोड़ हैं। 3 करोड़ के 5% को आप मदद कर दीजिए, उनको मेहनती बना दीजिए, उनकी लाइफ स्टाइल को ठीक कर दीजिए, उनको फ्यूचर के लिए तैयार कर दीजिए। इंशाल्लाह ये 5% पूरे हिंदुस्तान को संभालने वाले बनेंगे, हमको ये उम्मीद है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, इस प्रोग्राम को फैलाइए। और बच्चे, आप यहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं, NGOs के जिम्मेदार हैं, इंस्टीट्यूशन के जिम्मेदार हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से अपने इलाके में बच्चों को, हाफिजों के लिए इसकी तशहीर कीजिए, बच्चों को बुलाइए। सिर्फ हिफ्ज़ का ठीक होना काफ़ी है, सिर्फ ठीक होना काफी है। वो पेन नहीं पकड़ा जिंदगी में चलेगा, हमको ज्यादा खुशी होगी ऐसे बच्चे, चलेगा, पेन नहीं पकड़ा तो भी चलेगा, उसको हम 18 महीने में 10th या 9th से सलाहियत के साथ, वो तरीका नहीं शॉर्टकट के साथ, खते नहीं, सलाहियत के साथ, एबिलिटी के साथ उनको पढ़ा के आगे के लिए। सवाल हुआ था परसों हमारी जूम मीटिंग में, जो है सवाल हुआ था आगे क्या होगा। देखिए आगे माशाल्लाह अल्लाह रास्ता निकालेगा। कुछ लोग मेरे पास आए, आके बोले कि हाफिजों को अपने इंस्टीट्यूशन में फ्री एडमिशन देने के लिए तैयार हूँ। अल बदर डेंटल कॉलेज वाले बीदर आकर लेटर देके गए हैं, मैं 5 हाफिजों को सालाना डेंटल कोर्स, BDS कोर्स हॉस्टल के साथ बगैर फीस के फ्री पढ़ाऊंगा, और मेरे पास दूसरे कोर्सेज भी हैं। तो हम ऐलान कर दिए कि मदरसा प्लस एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन में की लिस्ट में शामिल होने के लिए लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन अपने तरफ से हम ऑफर दें, हम हाफिज बच्चों को भेजेंगे, 2% 4% बच्चों को हाफिजों को देंगे। तो ये बच्चे जो है 10th पास कर लेंगे। मदरसों में ये ITIs हैं, मदरसे में B.Ed कॉलेजेस हैं, मैं देखा हूँ घूम फिर के खाली हैं, बंद पड़े हुए हैं, उसको फिर से शुरू किया जा सकता है, हिम्मत दिलाई जा सकती है। और ये टीचर्स का पेमेंट शाहीन कुछ NGOs की मदद के साथ टिचर्स की पेमेंट करेगा, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और रहमान खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, सिर्फ फोन पे बात कर रहा था, मैं जिक्र कर रहा था कि इस तरह से मैनेजमेंट थोड़ा सा जी बस शुक्रिया अदा करके बात खत्म करूंगा
कि इस तरह से कुछ इंस्टीट्यूशन हमारी मदद करें, तो फोन पे बता दिए कि 5 मदरसों का खर्च मैं दे दूंगा, इंशाल्लाह आप तैयार हो गए। बेंगलोर में एक दिन में 15 मदरसों के लिए वादा हुआ है और माशाल्लाह काम हो रहा है। अभी तक 24 मदरसों के लिए हमको स्पॉन्सरशिप मिल गई है। हमको फिक्र नहीं है स्पॉन्सरशिप की। इंशाल्लाह लोग आगे बढ़कर इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। आप सबसे ख्वाहिश है कि तलबा को, हुफ़ाज़ को सेलेक्ट करके भेजिए, जिम्मेदारी से भेजिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लेटर हेड पे भेजिए। और हमारे 6 जोन बनाए हैं इंडिया भर के जो है 6 जोन में तकसीम किए हैं। जोनल कोऑर्डिनेटर, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वेबसाइट पे madrasa+.org या shahinGroup.org दोनों से जो है विजिट कर सकते हैं। आप हुफ़ाज़ को सेलेक्ट करके, साथ में यतीम बच्चों को सेलेक्ट करके भेजिए। बल्कि लॉकडाउन में बच्चे जो स्कूल डिसकंटिन्यू कर दिए थे और फारिग हैं, ऐसे बच्चों को भेजिए। हम मिक्सअप हाफिजों के साथ इनको मिक्स करके एक अच्छे माहौल में, ये फर्ज आइन है, हाफिज बनाना फर्ज आइन नहीं है। बुनियादी ज़रूरी दीनी तालीम देना, उनको एक माहौल देना, उनको मेहनती बनाना, उनकी लाइफ स्टाइल को ठीक करना, ये फर्ज आइन है। इंशाल्लाह मदरसों में ये भी काम होगा। यतीमों को, गरीबों को, ड्रॉप आउट बच्चों को पढ़ाने का एक कल्चर शुरू हो जाएगा और ये फर्ज आइन को पूरा करने के लिए हमारे मदारिस जो बड़ी तादाद में हैं, और ये अगर काम करेंगे इंशाल्लाह बड़ी तब्दीली आएगी। जज़ाकल्लाह। मैं आप तमाम से दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया सर। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सरजमीन पर मदरसतुल उलूम का क़याम और उसकी शमा और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को फैज़याब कर गई। जैसा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि हम अपने कौम के हाथ में, हमारे दाहिने हाथ में कुरान हो, बाएं हाथ में साइंस हो और सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हो। ये हमारी कम्युनिटी का फाउंडेशन होना चाहिए। बिला किसी तमहीद के मैं शहर लखनऊ के बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम लायक व फायक इस्लामिक स्कॉलर, ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड के असासी रुकन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि डाइस पर तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन, अम्मा बाद। अव्वल तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे शहर लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जैसा एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन कायम किया, जो कि मुल्क और कौम की बेहद खिदमत अंजाम दे रहा है। और कल रात में इत्तेफाक से और भी ज़्यादा खुशी हुई, जो कि मैं निकाह बहुत पढ़ता हूँ, तो कल रात में एक जगह निकाह पढ़ने गया था, तो वहाँ से कुछ लोग सऊदी अरब से आए थे, तो उनसे तज़किरा हुआ। उन्होंने, उन हज़रात ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का तज़किरा किया और ये बात कही कि गल्फ़ कंट्रीज़ में अभी तक अच्छी अच्छी कंपनीज़ में अच्छी अच्छी पोस्ट पे जनरली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते थे और उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। अब उसी के साथ साथ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के भी बड़े बच्चों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ये सुनकर मुझे अपने आप में बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। चंद माह पहले जब अमेरिका गया, वहाँ पर मुसलमानों का एक इज्तिमा था, तो जब लोगों ने लखनऊ का ज़ाहिर सी बात नाम सुना, तो यहाँ के टुंडे के कबाब पराठे या इदरीस की नहारी या रहीम की कुलचे नहारी का में उन लोगों ने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया, बल्कि सबने तालीम ही के बारे में ज़्यादा पूछा। और दारुल उलूम नज़रतुल उलमा के साथ साथ जिस इदारे का सबसे ज़्यादा तज़किरा हुआ वो अल्लाह के करम से हमारी इसी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का हुआ। इसके लिए मैं प्रोफेसर साहब को और उनकी पूरी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरीके से कल प्रोफेसर वसीम अख्तर साहब ने पूरी बात बयान की, किस तरीके से एक छप्पर से इस इदारे का आगाज़ हुआ, और अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने, और फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या दारुल उलूम देवबंद हो, ये जितने भी इदारे शुरू हुए किस तरीके से शुरू हुए और कहाँ तक गए, ये कहानियाँ और ये वाक़यात हमें अपनी नई नस्ल को ज़रूर सुनानी चाहिए, जिससे कि उनके अंदर एक खुद एतमादी पैदा हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो। और इस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे अहम बात रही है वो ये कि तमाम स्पीकर्स ने, तमाम मुकर्रीरीन ने बहुत ही पॉजिटिव एक पिक्चर कौम की पेश की है, और उससे ये ज़ाहिर होता है
कि आज भी अगर हम लोग अपने सिर्फ और सिर्फ इसी तालीम और तरबियत के मिशन पर लगे रहें तो इंशाअल्लाह हम अपने इसी अजीम शान मुल्क में तामीर और तरक्की की तमाम मंजिलें तय करेंगे। अल्लाह का करम है कि अपने मुल्क में हमारे उलमा इकराम ने हर दौर में मुल्क की रहनुमाई की है, कौम की रहनुमाई की है, और उसका आगाज़ मदारिस इस्लामिया से ही होता है। अगर आप देखें तो तारीख़ में सन 1701 में इसी शहर लखनऊ में दारुल उलूम निज़ामिया फ़िरंगी महल के नाम से मुल्क का सबसे पहला मदरसा अल्लामा निज़ामुद्दीन मोहम्मद फ़िरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया, और अल्लामा निज़ामुद्दीन ही ने मदारिस के लिए एक सिलेबस, एक निसाब, दर्स निज़ामी के नाम से तरतीब दिया, जिसकी की सबसे बड़ी खसूसियत और ख़ासियत ये थी कि जितने भी अपने यहाँ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम हैं उन्होंने अपने मदारिस में उसको एज इट इज़ लागू किया, निफाज किया उसका, चाहे दारुल उलूम देवबंद के मदारिस हों या हमारे बरेलवी मकातिब फ़िक्र के मदारिस हों, और पिछले 300 सालों से इसी सिलेबस के तहत पढ़ाई जारी है। और जाहिर सी बात है कि हालात के लिहाज से उनमें किताबों की तब्दीलियाँ हुई हैं और होनी भी चाहिए, और ये सिलसिला हमेशा जारी व सारी है। जब भी कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती है ख़ासकर एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसमें बार बार ये बातें सुनने को मिलती हैं कि साउथ इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है एजुकेशन के मैदान में, वहाँ मुसलमानों ने और नॉर्थ इंडिया में नहीं की है। और हम ये समझते हैं कि ये बात मुनासिब नहीं है। जो साउथ इंडिया से लोग आए हैं उनसे माजरत के साथ कि अगर आप देखें तो नॉर्थ इंडिया में एजुकेशन पे ज़्यादा बड़ा काम हुआ है साउथ इंडिया के मुकाबले में। नॉर्थ इंडिया में लाखों की तादाद में उलमाए कराम ने मदारिस कायम किए हैं, और इन्हीं मदारिस से फारिगीन ने, चाहे सर सैयद अहमद ख़ां हों, उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम की, हमारे और उलमाए कराम ने जामिया मिलिया इस्लामिया कायम की, वसीम अख्तर साहब भी मदरसे के फारिग हैं, उन्होंने ये इदारा कायम किया। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो सैकड़ों और हज़ारों स्कूल कॉलेजेस कायम किए हैं मुसलमानों ने, तो इल्म की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल ज़्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम लोग किस तरीके से जो मदारिस का सिलेबस है, और हमें अपने जहनों में बात भी रखनी होगी कि हर इदारे का, हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक मकसद होता है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके लिए एक मिशन और एक विजन सेट किया जाता है। तो जो मदारिस का सबसे अहम विजन और जो मिशन है वो ये कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को दीन की तालीम से पूरी तरीके से आरास्ता कर सकें, जिससे कि हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में जो मसाजिद का निज़ाम है, उन मसाजिद से किस तरीके से सही तौर पर हय्य अल सलाह हय्य अल फलाह की सदाएं उठ सकें, पाँचों वक्त की नमाजें सही तौर पर अदा कराई जा सकें। उसी के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का कि अपनी ज़िम्मेदारी को हम लोग किस तरीके से अदा कर सकें, ये एक मदारिस का बुनियादी मकसद है, और उसमें अल्लाह करम से ये मदारिस पूरी तरीके से कामयाब हैं। लेकिन हालात के तहत मदारिस ने हमेशा अपने अंदर तब्दीलियाँ पैदा की हैं, और आज भी तब्दीलियों की गुंजाइश है, और मदारिस के ज़िम्मेदारान हर पॉजिटिव चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आज भी तैयार हैं, बशर्ते ये कि जो उसका बुनियादी मकासद हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। तो लिहाजा चाहे हमारे शाहीन एकेडमी ने जो अपना एक मिशन मदरसा प्लस का शुरू किया है, वो एक ऐसा मिशन है कि मदारिस के जो बुनियादी मकासद हैं उसी से पूरी तरीके से वो मेल खाता है। और इसी के साथ साथ हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि चंद मशवरे ये हैं। उस सिलसिले में पहला मशवरा ये है कि जैसे इनामदार साहब ने फरमाया कि उनसे इस सिलसिले में मदद ली जाए, कि शाह सिद्दीकी साहब भी इस पर बार बार इस कल के सेशन में भी जोर दे रहे थे कि कौन सा ये तरीक़ा हो सकता है कि हमारे मदारिस की जो आलमियत की डिग्री है, जैसे दारुल उलूम नदवतुल उलमा की है, कि उसको इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट उसको रिकग्निशन मिल सके। इस सिलसिले में गौर करने की ज़रूरत है। प्लस ये कि जो बार बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तस्करा किया जाता है, या जब हम अमेरिका गए तो वहाँ सबसे ज़्यादा इस पर तस्करा रोबोटिक्स का हो रहा है, उससे हम अपने मदारिस के बच्चों को किस तरीके से वाकिफ़ करा सकते हैं। शाह सिद्दीकी साहब ने जो मशवरा दिया कि मदारिस में स्मार्ट क्लासेस कायम किए जाएँ, ज़रूर कायम किए जाएँ, और इसके पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगर जो बड़े मदारिस हैं
खासकर यूपी में उनके जिम्मेदारान से जो ये कमेटी बनी है वो राब्ता करें, और हमें पूरा यकीन है कि उनके जिम्मेदारान बिल्कुल इस बात के लिए राजी हो जाएंगे कि वहाँ पर ये स्मार्ट क्लासेस, एक भी स्मार्ट क्लास अगर एक बड़े मदरसे में कायम हो जाए और हफ्ते में सिर्फ एक दिन जो मौजूदा मसाइल हैं, जैसे जो भी नए नए डेवलपमेंट्स हैं, चाहे जिस भी लेवल पर हो, जिस भी सतह पे वो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर एक लेक्चर उन मदारिस के बच्चों को हफ्ते में सिर्फ एक दिन भी सुनने को मिल जाए, तो हम ये समझते हैं कि उससे मालूमात में इजाफा होगा। और फिर कि हम अपने मदरसों के बच्चों को किस तरीके से, खासकर चाहे अरबी ज़बान हो या इंग्लिश हो या जो रीजनल एक ज़बान है, उसमें किस तरीके से उनके अंदर स्पीकिंग पावर पैदा कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में जो एक सबसे बड़ी कमी आ रही है वो ये कि बच्चे 10-12 साल अरबी ज़बान पढ़ते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स की है वो अरबी ज़बान से बोल नहीं पाते, उनके अंदर अरबी की स्पीकिंग पावर नहीं आ पाती। और सेम चीज़ इंग्लिश के बारे में है कि इंग्लिश रवायती तौर पर पढ़ाई जा रही है, लेकिन प्रोफेशनली इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही है। तो लिहाजा ये दो जो ज़बानें हैं, एक अरबी और एक इंग्लिश, अगर इन पर मदारिस में, खासकर जो बड़े मदारिस हैं, उनको हम लोग परस्यू कर सकें कि किस तरीके से प्रोफेशनली इन ज़बानों को पढ़ाया जाए, जिससे कि बच्चों के अंदर उसको स्पीकिंग पावर आए। हम मदारिस के बच्चों के अंदर किस तरीके से खुद एतमादी पैदा कर सकें, किस तरीके से उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर सकें, ये वो चंद बातें हैं जिन पर अगर तवज्जो दी जाए तो इंशाअल्लाह इस जो सेशन है इसका एक अच्छा नतीजा निकल सकता है। और प्लस ये कि अभी हमने साल भर पहले भी ये बात एक कॉन्फ्रेंस में कही थी, उसको फिर से आज दोहराना चाहता हूँ कि हमें अपने मदरसों के निसाब में अपने मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन की तालीम को ज़रूर शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमारे मुल्क के मदारिस के बच्चों को इस बात का इल्म हो कि जो हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या इख्तियारात, क्या हमें राइट्स दे रहा है, इस राइट्स के साथ साथ हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, जिससे कि हम सही तौर पर मुल्क को सही सिमत में ले जाने वाले बन सकें। और मदारिस पे जो बार बार उंगलियां उठती हैं, उस सिलसिले में अभी चंद महीने पहले यूनाइटेड नेशन से एक डेलीगेशन आया और उसमें मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, मुस्लिम मोहतरमा थी। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू किया। उसमें से चंद बातें ये थी कि उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात पर थी और जिसको वो सबसे ज़्यादा नापसंद करती हैं कि मदारिस चंदे पर चलते हैं, और दूसरे ये कि मदारिस से निकले हुए बच्चों को अच्छी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। तो उनकी खिदमत में मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि जितने भी बड़े इदारे हैं पूरे दुनिया भर में वो सब चंदे ही से चलते हैं, और मदारिस के ज़िम्मेदारान किसी के जेब में हाथ डाल के चंदा नहीं वसूल करते हैं, बल्कि लोग अपना दीनी और मजहबी फरीज़ा समझ करके इन मदारिस को ये चंदा दिया करते हैं। मैंने उनसे आखिरी बात ये कही थी कि जितनी भी बड़े इदारे हैं, हद ये है कि यूनाइटेड नेशंस भी मुल्कों के चंदों ही से चला करता है, तो इस वजह से मदरसों पर ये उन पर एतराज़ करना बिल्कुल ही नाजायज़ है। दूसरी बात ये कि मदरसे से निकले हुए बच्चे अनएम्प्लॉयड नहीं रहते हैं, बल्कि अगर आप देखें तो मदरसा जो कि पूरे मुल्क में हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज कर सकते हैं कि वाहिद ऐसा एजुकेशनल सिस्टम है जो कि बच्चों को फ्री में न सिर्फ ये कि एजुकेशन दे रहा है, बल्कि फूडिंग, लॉजिंग सब कुछ फ्री में है, और जहाँ तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी की जाती है, उनको सच्चा और अच्छा इंसान और शहरी भी बनाया जाता है। किसी मदरसे में बाय एंड लार्ज आपने ये नहीं सुना होगा कि वहाँ के बच्चों ने किसी टीचर पर हाथ उठाना, जो दूर की बात किसी टीचर की शान में गुस्ताखी की हो। ये मदारिस के बच्चों की तरबियत की सबसे बड़ी मिसाल है, और ये वाहिद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से निकले हुए बच्चों को 100% एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आप देखेंगे कि इल्ला माशाअल्लाह कोई कहीं भी मदारिस का फारिग को आप अनएम्प्लॉयड नहीं देखेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे मदरसे के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन सकें, IAS IPS ऑफिसर बन सकें, इस सिलसिले में जो कोशिशें शुरू की गई हैं उनकी हम सब लोग पूरी तरीके से हिमायत करते हैं। और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने खासकर इस सिलसिले में जो शुरू किया है, हमारे इनामदार साहब ने जो शुरू किया है, इन तमाम कोशिशों में हम लोग आपके साथ हैं। एक बार फिर से मैं तमाम मुंतज़मीन को आज के इस कॉन्फ्रेंस की मुबारकबाद पेश करते हुए
कि आप हजरात ने हमारे इस अदब व तहजीब के शहर और इस इल्मी दो शहर को का इंतखाब इसके लिए किया, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह यहाँ जो बातें तय की जाएंगी वो अपने उससे हम सबको, पूरी कौम को इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और मदरसों के सिलसिले में जो चंद बातें अर्ज़ की हैं, अगर आपकी टीम इन बातों को लेकर के मदरसों को परस्यू करेगी तो कोई वजह नहीं कि मदारिस के ज़िम्मेदारान इनको अमली जामा ना पहनाएं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि तालीम के माहिरीन को चाहिए कि वो तलबा में तहकीक, तख्लीकी सलाहियत, कारोबारी और अखलाकी क़यादत की सलाहियत को पैदा करे। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। इन तमाम चीज़ों के साथ मैं अब हमारे अगले जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर हुसैन मुदव्वर साहब, प्रिंसिपल मालाबार जामिया इस्लामिया केरला। First of all, I extend my sincere thanks and gratitude for the organizers of this August gathering and Integral University officials also. About madrasa education, so many valuable suggestions are submitted in front of us regarding madrasa education. I need only 5 minutes because I have only 3 points. We are gathered here to hear and to give and take from the experience and share their views and their advices. In Kerala, we have a system in madrasa education that is adopted by our ulamas, forefathers, maybe before 70, 80 years, combined the modern education and religious education. Madrasa means centers of Islamic studies center. So all Muslims should know what is Islam basically for their rituals, ibadat. They should know history of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. They should know reading Quran and some Islamic history. That is essential for all Muslims, men and women. So that is enough 1 hour or 2 hours per day for 5 or 6 years. And other time, we can send our students to general school. In our place, in our state, all Muslim students, they enrolled in general school, government school, aided school, private school. In morning, 1 or 2 hours, they are going to madrasa or maktab attached with the masjid, and they are studying there. That is enough because government spent too much funds for infrastructure, salary of teachers for modern education. We should utilize that. That is one thing. And another thing, we need ulamas, but all people no need to become ulamas. Maybe in one village, 2, 3 ulamas enough. So they can go to Darul Ulums, like our Nadwatul Ulama or Darul Ulum Deoband, Jamia Salafia, Banaras, Jamias and Darul Ulums. We can select some students to go to higher study to become ulamas in those institutions. And nowadays, we want become our ulamas with awareness in modern education also, because we are living in a multicultural, multi-religious society. Alim means leader, and Imam is a leader who can lead the society. He should know what is happening and what is the languages, what is the subjects. So in Jamias, higher study centers, we should include languages, English, Hindi, and other languages, and there should be mathematics and history and science all. And the third one that Shaheen Group is doing, we have thousands of students, Hafiz and madrasa educated students. They have no any future in job.
and employment. So we can select them and train them 2-3 years, and they can write examination, government examination, and they will become in mainstream. That is the method to enter the mainstream of the education or general education. This type of, or this sort of conferences, it will produce too much, or there will be the output in the implementation of the new methods in madrasa education. My suggestion to conduct madrasa education conferences in several parts of our country. Now we are here, all of us, or most of us know what we should be doing. But those who are running madrasas, teaching in madrasas, management of madrasas, they are not aware of these type of suggestions and this model of institutions. And thank you. Assalamu alaikum. बहुत शुक्रिया। मैं आईडू के हमारे जिम्मेदार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक शेखुल जामिया लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और मेहमानों को मोमेंटो पेश फरमा दें। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल साहब। डॉक्टर मुनव्वर साहब। बहुत शुक्रिया। एक मिनट सर, ये रेहान अख्तर साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ के वाइस चांसलर, वो वाइस चांसलर, इन तमाम लोगों के लिए अल्लामा के एक शेर के साथ इस मजलिस के अख्ताम का ऐलान करूँगा। अल्लामा का शेर है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। कमाल है। और तमाम हजरात से ये है कि हम यूनिवर्सिटी जिम्मेदारों की जानिब से लंच का इंतज़ाम है, आप हमारे हमने वाला हो ताकि हम लोग बैठ के कुछ और गुफ्तगू। 3:15 बजे से नेक्स्ट सेशन का ऐलान होगा, ऐलान किया जाता है। आप तमाम हजरात तशरीफ लाएँ ताकि वक्त मुकर्ररा पर इस सेशन का आगाज़ हो सके। कैसे आप? कैमरे के बीच से
अब 2-3 आए हैं। हाँ ये कर रहा था, आप आ रहे थे तो उनके साथ कदीर साहब के साथ, और आप करिए सर। चलेगा है दे दूँ उसमें पेन ड्राइव दे I'd love to keep in touch because your full name you write down? And I would request you to spare some time with us. सर यही नंबर So, because this program has recorded, it's not only education, it's
एमयू में जब मुझे कितने बजे के 5 साल का कितने बजे WhatsApp में this number sir I'll get in touch education basically we also as communication currently based in my family is my heart is लक्ष्मी भाई तो फिर मैं आपको टाइम भी कोविड फॉर्म में मार दिया वहाँ पे आपकी फिक्र जब वो हवा महल हवाई महल बन गया किला बन गया है आई मीन हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसका इतना रेट बढ़ा दिया मेरी बात ऑन बोर्ड वी वर प्रोटेस्टिंग फॉर दैट कि चैरिटेबल तब जाके समझे अब जाके उन्होंने 50,000 That's why I keep you for this. I need your support.
Yes, चीजें स्टार्ट नेगेटिविटी भाई सर अच्छे लोग आपकी यूनिवर्सिटी भी बनी है उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद और जो बातें आपने सर कही एक छोटा वो सा ग्राउंड रिकॉर्ड में मुझसे जुड़ा हुआ है वो मैं बता नहीं पाया आपको How bad acidity problem, so I should go and have a lunch and come back. Yes, madam. मैं आ जाता हूँ ना। सर को लंच करना लंच कर लेने दो भाई सर को Hey, Saiba. You must read today's article in Times of India, Bombay edition. the Bombay. Yeah. You see that? Okay. You read about how inmates of the hospital. Can you take an example? It's an article which has come in Times of India today about the orphanage girls of Mumbai who have achieved big milestones. उसमें से एक जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मल्टीनेशनल, एक जनरल मैनेजर है पब्लिक रिलेशंस आईसीआईसीआई बैंक.
लेकिन हमें पैसे नहीं, हमें पैसे नहीं। यहाँ बाहर बैठ जाएगा, इसमें निशान लगे हैं, दिक्कत हो तो बता दो।
देखो इधर बैठे कम कुर्सी के ऊपर बोतल है उधर बहुत है ये वाली रोटी अस्सलाम वालेकुम खाना हो गया जी बिल्कुल हो गया वो हनीफा का स्पेलिंग रॉन्ग है HANIFA चाहिए अगर चेंज कर सकते हो तो कर लो नहीं तो कोई बात नहीं हो जाएगा तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं घर की बात
I can file a Chachi. I can file a. हाँ बाहरों साइड है कल बात की थी हमने एंटरप्रेन्योरशिप पे जी 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 टुमारो डिस्कस दैट हाँ जस्ट दो जस्ट जी बताएं कैसे करते हैं आपके अलीगढ़ में करते हैं इसको बढ़िया अभी फिलहाल कितने आवर्स का कोर्स है Actually, this is 2 months. Course months. It runs every Sunday. So बारह Sunday का session है और इसमें 2 ग्रुप हैं अच्छा अंडरग्रेड नहीं undergrads they put to be very मेरा project I can find out and PG. Who knows that? No, he will not. Come on, you are emphasizing on the fact that school leaders कुछ है बनाया हुआ सर बोल सर आप इससे बैठ करके बोलेंगे या फिर पोडियम से बोलेंगे आप पोडियम से डिजाइन कर सकते हैं आपने डिजाइन किया है ओलंपियाड में स्कूल से कनेक्ट हम लोग स्कूल से ही काम है डिजाइन मैं मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम ग्लासगो यूनिवर्सिटी एंड इन स्पेस कॉलेज मैं पीएचडी फ्रॉम जॉर्जिया फर्स्ट ईयर अभी मेरा फर्स्ट ईयर है जॉर्जिया कंट्री Country है So nice meeting you. कहाँ पे बॉम्बे में Okay. This is my card. I'm professor in commerce at university. So you are not a student. हाँ यहाँ से मॉनिटरिंग है हमारे पास कम है महाराष्ट्र में ज़्यादा है हमारे पास बट वी आर टारगेटिंग जैसे एजुकेशन स्कूल This is group of एनटीआई का अच्छा दिया था We can discuss that after students के स्कूल के साथ काम करते हैं उसका स्कूल नहीं अच्छा our Olympiad program is running into the school. So how we can So what we can do, school level पे कैसे लाएं? we would like to develop a model, एक model develop करके course को develop करके तो उसको स्कूल में घुमा सकते हैं that we can teach to the school. Entrepreneurship is also my interest area. I'm doing research on that, computer and all, you know. And my domain is also. Yeah. But इसको school level पे हाँ वो एक डिजाइन करना पड़ेगा वो kind of like activity because theory तो थोड़ा देना ही पड़ेगा एक theory हुआ और activity based you can divide those things like theory का format क्या देना तो हमारे activity का कोई समझेगा नहीं For example, yesterday I was mentioning case studies कराना so it's not necessary that you just like it, dress up your so now the students they discover pick करते हैं
वही शुरू होगी छोटे लेवल पे लाना आपको ड्रिल डाउन करना है, राइट डाउन करना है, तो उसको जब एकदम समझ में बता कि मार्केटिंग क्या होता है, स्टूडेंट डेवलपमेंट क्या है, फाइनेंस क्या होता है, तो फिर छोटे बेस्ड होना ही चाहिए। डायरेक्ट एक्टिविटी को बोलेंगे एक प्रोडक्ट बनाओ, एक प्रोडक्ट लॉन्च कम से कम 10 घंटे का उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए, एक मटेरियल दें उनको, बेस क्रिएट करें, उसके बाद ही एक्टिविटी का। अदर हाउ विल यू डू एक्टिविटी पेडागॉजी मैच नहीं होगा, ओनली पेडागॉजी ओनली एक्टिविटी तो बना नहीं प्लस एक्टिविटी तो बच्चों को सेम होगा ना, फिर उसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर सकते हैं, नेचुरली रहेगा वरना फिर बच्चों की रोल वेरी चेक करके कॉम्पिटेंसी वो लेवल नहीं सर बच्चों को फाउंडेशन भी होता है ना, वो 11th-12 में कॉमर्स पढ़ते हैं, वो जो अकाउंटिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, एक जा चुके होते हैं। मुझे वो दो थोड़ा सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस लाइक प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, तो सेकंड पे पीछे लोग आते हैं, सपोज लीगल वाले बैंक वाला बैंकर तो बट बाय द एंड ऑफ 3 में तो बच्चे काफी बड़े हैं। के आगे अभी बच्चे लोग मतलब कुछ डेवलप हो जाए, रीडिंग राइटिंग की स्ट्रॉन्ग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन डेवलप नंबर के बाद को मॉडलिंग आते हैं, बाकी ऑनलाइन डिलीवरी फॉर्म बस कंटेंट पार्ट बना डिलीवरी फॉर्म को मैं डिसाइड करता हूँ ऑलरेडी रेडीमेड कंटेंट दें या फिर बुक्स डेवलप करेंगे डिलीवरी पार्ट बस पहले कंटेंट क्या होना दैट इज बेसिक कितनी आवर्स का हो डिलीवरी पार्ट फिजिकल डिलीवरी और रेजिस्टेंस अभी आएगा मतलब इस लेवल पर
We can take it. You want to watch it? We can take it on the board. बहुत बहुत मुबारक। बहुत बढ़िया करना। अरे मैम बस विशी साहब कह रहे हैं हमारे की मैनेजमेंट यही होना चाहिए। वाकई में भाई मजा आया। वो असल में हमने सीखा कोविड से। कोविड में हमने 13 कॉन्फ्रेंसेस की, मतलब 2020 एकदम, उसमें ये था कि 1 घंटे में खत्म करना है, तो वो ट्रेंड बन गया। और स्पीकर वैसे कोई किसी को भी मौका मिलता है ना तो हम लोग कंफर्ट जोन में हाँ, इतना बताते हैं। वो तो होता ही है थोड़ा। और सर कैसे आप यहीं हैं क्या? नहीं, मैं साहब एमयू में हूँ। साहब मैं भी एमयू का हूँ। अच्छा। हाँ, 1978 से लेके 95 78 से लेके 95 तक जो है वहीं रहा। हम तो पीयूसी, बीएससी, 86 में पैदा हुए तो कहाँ। हाँ, पीयूसी, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एमफिल, फिर नौकरी की 6-7 साल वहीं। माशाल्लाह। अब मैं गवर्नमेंट यहाँ यूपी में 4 गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ में है। अच्छा अच्छा। एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीनियर मोस्ट टीचर हूँ और 3-4 बार प्रिंसिपल अप्रिशिएट भी किया। मोहम्मद तारिक नाम है। अच्छा माशाल्लाह। और रिटायरमेंट सामने दिख रहा है। कोई बात नहीं। अब काम शुरू है आप लोग नहीं का। सही, रिटायरमेंट के बाद ही काम शुरू हुआ। वैसे बताऊँ आपने गवर्नमेंट में तो बाइंडिंग्स हैं, मजा फरमाया लिमिटेशंस हैं। कि ये जो आज का खाना आपने खाया? आज का इंटरेक्शन ये मुझे जो अच्छा लगा कि भाई अल्लाह ने दिया है, उससे तो पेट चलता ही रहेगा, रोजी रोटी तंदुरुस्ती चलती है, कुछ किया जा सकता है। और लखनऊ कौम के लिए कुछ किया। लखनऊ जैसी जगह में रहकर कुछ तो किया जा सकता है। लखनऊ की बात नहीं, सब जगह नहीं मैं यहाँ पर जरूरत है, सब जगह करा जा सकता आप रिमोट एरिया में हैं या आपको कोई और लिमिटेशंस भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल अल्लाह का शुक्र है कि हेल्थ ठीक है। वहाँ ज्यादा जरूरत है। अब ये सब मोटिवेट करते हैं हम लोग को, सर स्पेशली बुलाया शाह साहब अलीगढ़ से, वाइस चांसलर। हम अलीगढ़ से ही हैं सर। नहीं, हम तो बिजनेस करते हैं। मेरे कहाँ पर? अलीगढ़ में मिसेज है मेरी कॉमर्स में, तो आसिया चौधरी यही कल थी स्पीकर। अच्छा, तो हम लोग का मुझे लगता है हम लोग के हाँ हम लोग से दूर नहीं है। हाँ अच्छा सर, हम भी अलीग हैं। अच्छा आप बड़ा भाई भी मान सकती, छोटा भी मान सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप लखनऊ में हैं? हाँ मैं यहीं पर है। 4 कॉलेज यहाँ गवर्नमेंट के कमीशन हो गया था, वहाँ हमने पढ़ाया कैंपस में 5.5। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो यहाँ कॉलेजेस में गवर्नमेंट अच्छा उसमें सर मैं ये अर्ज कर रहा था, उस वक्त आप बहुत मशहूर थे। मैं मोहम्मद तारिक, यहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज जो है 4 है, उसमें एक कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ, महाराजा बिजली पासी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, तो मैं प्रोफेसर हूँ फिजिक्स का। और अब मैं भी रिटायर होने वाला हूँ दिसंबर में, और सोच रहा हूँ कि आप ही लोगों का दामन थाम के कुछ खिदमत की जाए इन लोगों की, तो इंशाल्लाह। मैं अनाउंस करता हूँ। कंप्यूटर खराब हुआ तो क्या करेंगे? हम क्या चाह रहे हैं? हमारे जितने भी डिग्निटरीज हैं उनसे दरख्वास्त है कि बाहर आईडू के जिम्मेदारों की जानिब से एक फोटो सेशन है, तो वो लोग वहाँ तशरीफ ले जाए। सामने जी सामने ऑडिटोरियम के सामने आईडू के जिम्मेदारों की जानिब से तमाम डिग्निटरीज से दरख्वास्त है कि वो वहाँ तशरीफ ले जाएं। इंटीग्रल के वाइस चांसलर, वो वाइस चांसलर और उसके तमाम एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ मौजूद हैं। अच्छा पूरा खाली फोटो यादें रहनी चाहिए।
मेंटेन स्टॉक कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। अगर 1 लाख से 1.5 लाख डाउनलोड किया है, 7 लाख का है तो उसको डाउनलोड करना चाहिए। तो आपने पहले मीटिंग में लोग क्या कर सकते हैं, आपने पूरा डाउनलोड कर लिया? नहीं टोटल नंबर दिया हुआ हाँ, बट ये जो 1.7 और 1.7 का तो एड्रेस भी मिल जाता है, पासवर्ड भी मिल जाता है, बाकी करने की उसी की बात उसी इनका एड्रेस हमारे पास नहीं है। तो फिर मैं जानना चाहता हूँ रजिस्टर ये भी किया, वो बोला तो अनरजिस्टर्ड नहीं है, ये इनका क्या है? मुझे कुछ कमी प्लीज सर कोई फर्क नहीं पड़ता यार। सर Then I give you the whole document. I'm simply saying you are giving a very important information that 1.7 lakh इसमें है, बाकी और 6 लाख जो है और कहीं है उसको डालना चाहिए। तो वो कैसे, उनमें और इनमें क्या फर्क है? You have to find out that how come they are not included in the listing, और क्या उसमें शायद उन्होंने कुछ सबमिट नहीं किया होगा या डॉर्मेंट हो गए होंगे। लेकिन 1.78 में भी कम से कम 400-500 हैं जो ब्लैक लिस्टेड है, जिनके खिलाफ सिवाय या एक डॉट चल रहा है। ये वो डॉक्यूमेंट आपको भेजेंगे, ये जरूर भेजिएगा। ओके, दोनों जवाब दो, तो एक ही था। खाली साल का काम कर जाएगा। We are starting the last session of this today's last session, followed by valedictory function. All are requested to come to the conference hall. Doable आइडेंटिफाई करेंगे 3, 4, 5 ऐसी मीटिंग करिए कि सोना चाहिए। हम खिलाएंगे नहीं आपको। मैं शरद निकल रहा हूँ और मुझे साहब ने कहा तो लेकिन आप तो वेलिडिटी में हैं, वो कर लिया, वो काफी आप जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं यार? आप जल्दी चले गए थे, अपनी खोली देंगे। कल आप में जाइएगा, 2 बार तो निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर हमारे वॉलंटियर हजरात हैं और लोग जो हैं बाहर खड़े हैं, तो अगर उनको थोड़ी सी आवाज दे दी जाए तो जी। इसकी जो थीम है enabling the underprivileged students to access quality education, इसमें मैं जनाब अमीर मुदस्सर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि बराए करम तशरीफ ले आएं। जीसी पाल साहब,
अगर तशरीफ़ ला चुके हों, तशरीफ़ लाएं इकबाल साहब। डॉक्टर कौसर साहब आ जाइए। अगर हम बाहर आवाज़ लगा सकते हों कि हमारे गायब है, अय्याशी कर रहे हैं सारे। हाँ भेजा शुरू करें जल्दी साहब। शहीद भाई शुरू कर लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे साथ स्टेज पे दो मेहमानान मौजूद हैं, जनाब अमीन मुदस्सर साहब। अमीन मुदस्सर साहब जो हैं वो बेंगलोर से तशरीफ़ लाते हैं, सिग्मा के फाउंडर डायरेक्टर हैं। अमीन मुदस्सर साहब को जाना जाता है पूरे मुल्क में करियर यात्रा को लेकर। 1.5-2 महीने के लिए ये अपने घर को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान की खाक छानते हैं और वहाँ पर बच्चों को करियर गाइडेंस कराते हैं। आपने कोविड के वक्त में, जब इनको कोविड हुआ था, तो हॉस्पिटल में बैठे बैठे एक वेबसाइट बनाई थी और वो वेबसाइट इतनी यूज़फुल हुई वहाँ के लोगों को कि वहाँ के कई अखबारों ने और कई टीवी चैनलों ने और नेशनल मीडिया ने इसको नोटिस किया। ऐसे लोग आज हमारे साथ में हैं। हमारे साथ जनाब जीसी पाल साहब हैं। आप डॉक्टर जीसी पाल साहब एमफिल किया है आपने, पीएचडी किया है सोशल साइकोलॉजी में, जेएनयू से फारिग हैं और डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज़ के। मैं इन दोनों हजरात का हमारे इदारे ईडीओ की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम थीम की तरफ चलते हैं। मैं जनाब अमीन मुदस्सर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने प्रेजेंटेशन के साथ आगे बढ़ें।
Assalamu alaikum to everyone present here. Stage के सामने जो है the stars of this country, the big people. So with all humility, I would like to speak a few things on the topic which is for today's afternoon. Jazakallah khair first for EDU for inviting me and giving an opportunity for me to present what I could present from the experience of last 22 years. तो जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि let me go and share what little efforts we could do so that if this can inspire and this can be used to build up more and we could bring a change in the lives of the underprivileged. This is briefly about me. I did my engineering only to realize that I will never ever be a great engineer in life. I joined engineering in the typical herd mentality about 25 years back. वो होता है ना, लड़की हुई तो डॉक्टर, लड़का हुआ तो इंजीनियर. तो दीदी डॉक्टर थे तो मुझे इंजीनियर में जमा दिया गया. Luckily my parents were like Farhan Qureshi's parents in Three Idiots. They did pursue me for some time but then they gave it up. They said do what you want to do in life. तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है that being in Bangalore रहमान खान साहब हैं. Bangalore is a hub of tremendous community initiatives. So I was exposed to community as early as my 11th grade when I was given a prize by a Muslim organization for securing 81% in my 10th. And after that program, I was standing with the president secretary of the organization and my father told, "Beta, तुम्हें भी इनकी तरह कौम की खिदमत करनी है." अब 11th standard guy, what does he know about कौम की खिदमत, community upliftment? That was the spark that lit the whole journey. So Alhamdulillah, off late I got nominated as a member for the Karnataka State Higher Education Council, which I never expected from the current dispensation. But maybe Allah Ta'ala wanted to take more work and I'm happy to be here. So can we all rub the hands? Rub your hands, please rub your hands. Please rub your hands. It's a nice thing to do in the afternoon. It's AC and all. And apply on your face. I call this fair and lovely. This is the natural fair and lovely all of us can apply whenever we want some freshness. And I love to use it every time I'm in an afternoon session. खाने के बाद session कितना मुश्किल होता है. I'm sure all of you remember this movie. And this is so ingrained in our minds. मेरे पास, right? तुम्हारे पास क्या है? This I call the version of 2023. मेरे पास time है. And if anybody can say मेरे पास time है, he is the richest person now. And this is what is the essence for all of us doing our best for the upliftment of the underprivileged. I call upon the entire community, the entire society. रमजान तो हो गया, 2.5% दे दिया ना, 2.5% तो अल्हम्दुलिल्लाह दे देते हैं. लेकिन आज जरूरत है 1% quality and productive time for the community. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, सबको, कि हम जो है उस फर्ज को अदा कर दिए. 2.5%, you know, we are like done, दे दिया, NGO को दे दिया, ऑनलाइन दे दिया, फैमिली में दे दिया. But it is time now for giving 1%, not even 2.5, of our quality productive time. Because today, if the best brains can contribute 1% of their time, they can make an impact which we cannot imagine. I mean, the best brains came, so we have this conference. India's who is who, people had a kicker. They could have easily enjoyed their with their grandchildren. आज कितने लोग हैं हमारे पास जिनके पास टाइम है लेकिन उनके पास वक्त देने का जज्बा नहीं है. तो I start with this. So I have put my presentation highlighting what things we were involved in the last 20 years and how we could make an impact in helping the underprivileged kids see better education. So I am presenting what we did, the impact it made, and the scope of improvement, because nothing is totally great. It always has to be improved. जो पहली चीज है, आज talent scouting है, talent hunt है. I'm sure all of you are aware how in this country talent is scouted right from class 5.
We have the Jawahar Navodaya Vidyalayas, we have the minority residential schools, we have the other schools. So सारी कंट्री में जो ये टैलेंट हंट का मसला है, ये आज हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बच्चों को हम वहां तक लेके जाएं जो इंडिया के बेस्ट सिस्टम्स हैं. तो हम इस एक्सपेरिमेंट को कहाँ किए? We started a trust called Lead Trust way back in 2010, just inspired by Rahmani 30. उस वक्त मौलाना बाहयात थे, मौलाना से मुलाकात हुई. We got inspired because साउथ में रहमानी 30 का मॉडल नहीं था. In the last 3 years, we were able to help more than 500 students secure scholarships worth 18 crores. And this was only possible because we identified the need at both ends. गरीब बच्चों को क्या चाहिए? Quality education. Quality institutions के लिए क्या चाहिए? वो बच्चे जो भूखे हैं कामयाबी के लिए. So you bridge the gap, right? हमारे सामने इनामदार साहब हैं, who is the founder of the scholars program in the country. He identified talent across Maharashtra and he made a huge impact. So आज इस project में what is the scope of improvement? हमारे पास जो हैं वो NEET, IIT, CLAT, CA, UPSC के लिए हैं, but we are missing something. We need talent scouting for government job seekers. जब तक माइंडसेट नहीं बनाएंगे वो बच्चे जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार नहीं होंगे. सडनली we cannot send a WhatsApp forward and think that we will apply. They are conditioned for certain things. We need for teachers. NEP 2020 is going to create a havoc in the next 10 years. We don't have teachers. So we have wonderful people at school and college level who are very good in presenting themselves. They can be the future teachers which we need. Then content creators. All of us know how today content creators are ruling the entire market. I mean, just yesterday I was attending a workshop on prompt engineering. That is the biggest skill now. I'm telling all this in the context of underprivileged because they deserve what even we deserve. So, content creators, social workers, हमारे पास professional social workers का talent scout करना पड़ता है. Otherwise, it's so difficult to take big projects and execute them. Entrepreneurs, artists and performers, they are also have a talent. And lastly, sportsmen, right? So talent hunt has to be done at the school level, at the level of grade 5, 6 onwards, so that we also fill this gap. We have a big gap and we are not grooming these children. Our focus is continuing only on the top listed items. So we need to work on identifying talent in these areas. The second project which we did way back in 2006, I remember when the government launched the Ministry of Minority Affairs launched the scholarship program 2006 में. A letter came to Karnataka and luckily I was invited by the then Secretary for the Minorities Commission and the 3 officers. And I got the opportunity to work with these 3 officers, Tahsin Saab, Muhammad Salim Saab, right? So I got the opportunity to work with these people and then we were able to penetrate deeply into the system of schools and the department and we started a project called eScholar. We launched eScholar so that we help Muslim kids who are poor apply for scholarship. Now, what is the gap here? The gap here is many of them have the fear that if they fill the form, they will make a mistake. Or they don't have the confidence that I will fill and I will get it. So we set up a whole system. And we focus not only on government scholarship, but the corporate, NGO and CSR scholarships also. Now, of course, class 1 to 8, the scholarship has been taken out for the minority students. Only from 9th it goes on. And the budget also has been an issue. So we need to focus on the corporate, NGO and CSR funds. And through this, Alhamdulillah, we were able to help 10,000 students apply for various scholarships and they received 25 crore plus scholarship to their accounts. So we were the catalyst, we were the facilitators. We ensured that we had a team of trained people dedicatedly working on this model and we were able to change the life of these many kids. Like last year, there is a company called Merck. It's a pharma company in India and they have a Merck scholarship program. We helped 125 students apply for the scholarship, out of which 65 got selected and each one is getting 35,000 for the next 5 years, which means an impact of 1 crore 5 lakh rupees, which we don't have to give. Somebody is giving it, but there is a missing link. And if we can do that, now with that money, the parents have the confidence that our kids can study in better institutions, right? Because sometimes without the money backing, they fear and they go back.
what can we do to improve this initiative? Scholarship awareness must begin at high school levels for students, because they don't know that with marks, you don't only make your parents happy, but you also get a lot of benefits. बच्चों के दिमाग में क्या है? I am going to score 90 because my father wants, my mother wants, my school wants. But they don't realize that that opens the gateway for them to talk about their extracurricular activities and get more scholarship. We need financial planning session for parents. Parents के लिए shock होता है कि what happened, you know, how did we enter into this mess? Because right from 11th standard, today a lot of parents are forced to shell out 1 lakh or 2 lakh rupees for their 11th and 12th. So how do they manage these funds? So financial planning has to be done. Link excellence to scholarships. If we can tell that, you know, why the scholarship will come because of your excellence. Because just because you are a Muslim, you should not get scholarship. You should get because of being that plus something else. Mentor all scholars to give back. That's a very big missing link, because मेरा तो हुआ बोल के चले गए तो फायदा क्या है? I mean, it's time to give back to the society. Network community scholarship NGOs, so that, you know, we have at least an idea of कि कौन किसको support कर रहा है. If not outside network, internal network will work. Back end. We need a dedicated all India helpline for these reasons, guiding students for upcoming scholarships, how to apply and do a follow-up. There is a big gap. There is so much to be done, and this will help the under. Yeah, how much time I have? 3 minutes. Okay. Then we took the third important thing, that is career guidance. This is what I was passionate about, and we launched a project called Career Yatra, which Zubair Bhai was mentioning. And through this, we have conducted them for life, but unfortunately majority of them, they don't do that. So we have conducted sessions across the country, and we have impacted 50,000 kids, 20% guaranteed increase in their board exam. I'm not for marks, but I just want to make them feel confident that I can do it. It's not great, it's not so difficult, and that's what we did. We need to train teachers on memory, create content in regional language, reach out to rural areas, do train the trainer programs, emulate Teach for India. I'm sure all of you have heard of Teach for India, right? It's a big initiative, and create social media content. Now, these are the things which we have started. This is a project which we have started, pilot project. We have put in 4 lakh rupees, and we have got 20 laptops. We are starting a laptop bank. Book bank ka zamana gaya, ab laptop bank chahiye. The biggest thing that our kids are missing now is they don't have a laptop, they have a mobile phone. Laptop brings in you the correct framework to understand and learn things. All of us who learn online, we know how it impacts. We should set up laptop banks at district level.
We should encourage parents to buy laptops for kids as early as high school. Use technology and user permission. हमने एक software लिया है which will work in stealth mode and monitor the laptop. We take permission from the child saying that your laptop is under observation. So we will know everything what you click. You still want to use the laptop? Yes. Because I'm not using the laptop to go and watch Suno Chanda, right? All that stuff. We are very clear. We have raised community money, zakat money to give them laptops, not to go and play games. Encourage zakat donors to sponsor laptops, right? We need to make them think differently. Last project that we are currently working on is project Reader to Leader, where we have subscribed for this magazine. This is one of India's most popular student magazine. It encourages a child to learn creativity. It's called Robin Age. It will cost 1,400 per year for 20 issues. The finest magazines where the most affluent parents get this for their kids. Now this we are giving it to poor kids with a trainer who will use the magazine to discuss with them and make them become more creative. 1 more minute. Yeah. So I'm on time. Conclusion 1 of 5. So I have 5 slides for conclusion. Time and efforts are the 2 missing elements for bringing the transformation. We need to fix this. हमारे पास लोगों के पास टाइम नहीं है, पैसा है, टाइम देने के लिए रेडी नहीं है, एफर्ट लेना चाहिए, कुर्बानी. So we need to encourage this in the community. हमारे गरीब बच्चों के अंदर माइंडसेट प्रॉब्लम है. They think मेरा बाप गरीब, मैं गरीब, वो भी गरीब. They have a lot of issues with mindset. They think जिस तरह baby elephant बड़ा होने के बाद भी he thinks he can't break the chain. They think they can't break the chain. So we need to work on their mindset. We need to tell them about the opportunities that they have because nobody tells them. Their father has no information, mother has no information. We need to upgrade our youngsters with skills because even a crow becomes better by changing his way of drinking water. So imagine if human beings get skilled. The key to successful problem solving is not having all the answers, but in asking the right questions. I think each one of us should ask the right questions at the right platforms with the right people. Inshallah, we will get more. So this is my contact number. If anybody is interested to discuss more after the workshop, inshallah, we can. And thank you so much, Zubair bhai, for giving me enough time. And Jazakallah khair everyone for listening to me patiently. Thank you so much. Thank you, Mr. Sir. I would request GC Pal Sir, Dr. GC Pal Sir, the Director of Indian Institute of Studies. Good afternoon. Being a last speaker actually has the advantage also disadvantage. So I can't recall actually what has been already been discussed because there will be repetition. There is main disadvantage, there will be repetition because we are talking about this enabling for quality education, enabling at different levels, at institutional level, at this community level, even at this policy level also. But I will focus on, because I am not a practitioner, simply researcher, because we have the data already, we have the, what is the position of this underprivileged, not like a specific group. I will talk of underprivileged, but I will go a little beyond of the, we have last session we had the institutional mechanisms which have not been able to provide the quality education that has been discussed, we understand. And now the focus is on now child. If you look at this title, it is now at the underprivileged students. When you talk of students, that means we are narrowing down our focus to this household or the parents. So what can be done for the parents? What can be done for the children? When you talk of children, that means we are talking of what they are already in the schools, because you see it is not written underprivileged children, underprivileged students. That means we assume most of the students from underprivileged background are already in the mainstream system or in system. And what can be done for their to enhance the quality education? But before coming to that, because there will be a lot of repetition, I will just try to see that because earlier speaker talked about these missing links. And if you look at the data, but I will just bring to a few insights. If you look at, forget about the institution, forget about this classroom system or even what has been in the policy. We have I will just take 4 things because it's just I was thinking how to bring up. Because many things I won't tell because I am thinking that this should be done for children, this should be done because those who are practitioners, they are doing, they have provided enough insight how they are achieving the target, like result-oriented outcomes. But you look at this, if you look at the globally, there is a question of
quality education is a fundamental right globally. But if you look at Indian context, look at this 2009 right to education. The question of when I'm talking of missing links, the question it is not right to education. That is why it is derived. We are going for universalization of education. When you talk of universalization of education, immediately we are going for this focusing on the access. But if you look at the principle, basic principle of other countries, it is clearly in fundamental rights, quality education. Fundamental rights of children to quality education rather than simply education. If you talk about education, that means you are missing the term quality is missing. That is why there has been universalization of elementary education has been major goal. And now look at this. And now it is claimed universalization has been achieved. Universalization of elementary education has been achieved. That is why there is initiative for the secondary education. If we achieve the secondary education, automatically people all will go for a higher education. That will be crowd. But question now comes, if we have achieved the universalization of elementary education, the question of out of school children where comes? There are 20%. If the figure I'm not wrong, I will just correct. There are 20% out of school children. Then how come this universal education has been achieved? Elementary education. Now we are focusing on the secondary education. The question is here is missing link because we are just thinking that access is important. Either if they have been enrolled out of them, then over the years they have been out of the school. Either there are many who are also not enrolled. Question out of children when they are not enrolled. That is because that is the alternative systems are bringing them and just educating them. If you look at this, I'll just give you one example. Recent policies, if you look at the recent initiative by some state governments, what has happened? They have closed some schools. If I am not wrong, I have this case studies of Andhra Pradesh, Odisha. They have closed these schools, claiming students are not available. So we can't pay teachers, 2-3 teachers in school without adequate number of students. That means if school is there, the population have shifted to somewhere else. If population is there, school is there, then there are no children, school has children. Then how come school will be closed? Because there is no demand for school or children are not coming to school. So when we talk about universalization, this is a paradox. One you are talking, we have achieved universalization of elementary education, we have brought all the children to the school, but other way you are telling that still we are closing the school simultaneously. So that is mainly in the tribalogy belt. If you look at it, that is, I have enough stories and enough number of schools how many have been closed, Andhra Pradesh and then let's come to this. When you talk of ASOR, someone was just referring to the ASOR report. We talk of ASOR data is actually credible data, which comes out every year, and that is also taken into consideration for policy formulations. There is no doubt, because that is everybody knows how it is. The ASOR data has been a major focus, and that has been analyzed time and again. And if you look at this, each and every report you look at, last 17 to 2020 ASOR report you look at, one statement you will get, always you will get one statement in preface or in this somewhere in this conclusion. That is, education has not resulted learning. That is the statement I am quoting. It is not in report 2020 report. You will see education has not resulted learning. That means ASOR is accepting, which is providing data to its policy formulation. It is accepting that quality has not been achieved. And that is, they have substantiated that class 5 students are not able to just to perform the class 2 like tasks. So they have already substantiated. Class 5 students are still in the stage of class 2. Answer? Yes. 3 minutes. Okay. So then we will talk of this. I will just come in, because I am looking at how this somewhere missing links at the policy level, because we never think about. Talk about the national educational policy. Someone just referred to national educational policy. I think Gita Madam just referred in the context of school systems. But you do now for the first time, this is a third national educational policy, but directly focus. If you look at this 64 pages, if I am not wrong, more than 50-60 times it is focused on this socio-economically disadvantaged group. It is named SCDC. That term has been used again and again. That means there is specific focus on this socio-economically disadvantaged groups. And simultaneously, it is talking about the quality of education. That quality of education, what is proposed can be possible through restructuring of the whole systems.
Even for all, quality education can be restructuring. When you talk of restructuring, now there is a restructuring of the preschool education, restructuring of the higher education. But when you talk about restructuring, there is a scope for that you are giving flexibility that this education can go to the private sector also. That is happening. Now, if you the recent development, it is happening. And same time, you are taking the quality education for the underprivileged, and you look at these recent developments. Almost all the support mechanisms in terms of even I tell you preschool like scholarships, pre-matric scholarships, it has been not cut. It has not been totally taken out, not discontinued, but it has been curtailed. Earlier it was for the class 1 to class 10. Now it is now cut only for 9 and 10. The argument is we have the universalization of education. We have the universalization of education, so there is no need for all these scholarships. And even that for the higher education also, you look at the higher education, how all the scholarships will be cut for this all the underprivileged group. That means what when we talk about the quality of education, that we are just thinking about that at least one can move further, provide something in the basic education so that one can move further. That is the quality education basic purpose. And second objective, the underlying principle is just how to break the generational disadvantage of the underprivileged. Unless you break that, with one time you just have a quality education, then you see that time multi-tiering effect. You might have seen where there is generational effect, how it is happening. So sometimes we have to break through quality education. If that is the major underlying factors, then what is the problem? Problem is now 30% are the private schools and the 60%. And all the 60% schools are all the underprivileged children are going. But the question that we are not in a position to change the system to provide the quality education. We can't go in intervene in the school system, that is practical. But question that we have to think of alternatives. That is where many alternative schools are coming, alternative systems are coming. I will just give the figures we are just discussing, and there is it is now Sarva is talking about 1 lakh. I have got some access to that. 7.7 lakh NGOs are working for these underprivileged children, who are 80%, 61,000 NGOs are working only for education of the underprivileged children. That is the figure I have. I told. Thank you, Bal sir. Thank you very much. No, just I will give me again. So when we can't send to the underprivileged children to the private schools, and we can't change the system. Alternative is we have the alternative system is just to have a complementary education system, which many NGOs are doing. But question that everything we can't just leave it to the NGOs to do it. That means when you talk of children, enabling these parents, that can be possible only through that the initiatives. Now we call always we have been so far we have been initiatives above, and now there is initiatives bottom. Now we have to focus on initiative with it. That is going on in this. If you look at the Saharanpur, that some people are coming, so we have to look at community organizations, community leaders, community academicians, and community alumni. If they come together, I think that all the underprivileged children within each community can be possible. I think Thank you very much, sir. Thank you very much. हम आपको और सुनना चाहते थे, लेकिन खाने में बहुत देर लग गई हमको. अस्सलाम वालेकुम. सबसे आखिर में जब बोलना होता है ना, तो बहुत दुश्वारी होती है कि हम जो पॉइंट सोच के आए होते हैं या जो बोलने वाले होते हैं वो अगले बोल चुके होते हैं, तो आपको कुछ और सोचना पड़ता है. खैर, मेरी बारी है. हमारे कुरैशी साहब ने हनीफा स्कूल का इंट्रोडक्शन कराया था कल. मैं थोड़ी सी उसकी कहानी बता दूं. गुजरात में आनंद के करीब एक छोटा सा गांव है बोरसर. लोग तकरीबन 40,000 की मुसलमानों की बस्ती है. बहुत गरीब. वहाँ के ज़्यादातर लोग या तो खेती करते हैं, कोई ट्रक ड्राइवर है, या तो गल्फ में नौकरी करते हैं. 2005 में स्कूल शुरू किया गया. हमने जब अनाउंसमेंट किया एडमिशन का, तो हमारे पास 450 एप्लीकेशंस थी नर्सरी, जूनियर, सीनियर की. उन्होंने ये सोचा कि सेठ लोग हैं, हमको फ्री में पढ़ाएंगे. हमने उसमें से 50 लोगों को, 52 लोगों को सिलेक्ट किया और स्कूल शुरू करने का 1 जून 2005 से इरादा किया. 4 टीचरें हमने अपॉइंट की, क्योंकि बोरसर में टीचर मिलना मुश्किल था.
बड़ौदा से टीचरों को अपॉइंट किया, एक गाड़ी उनके लिए रखी। 4 दिन पहले, स्कूल के 4 दिन पहले, शुरू होने से 4 दिन पहले अचानक चारों टीचरों का फोन आता है कि हम इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकते। खैर अल्लाह ने इसको शुरू कराना था, स्कूल शुरू हो गई। हम लोगों ने ये देखा कि जब स्कूल बस, वैन या रिक्शा बच्चों को लेने जाती थी तो वो बच्चों को नींद में से उठा के उनकी यूनिफॉर्म जो है उनकी बैग में डाल के बच्चों को भेज देते थे। न ब्रश, न नाश्ता, न कुछ। हमने इसका तोड़ निकाला। हम बच्चों को पेट भर के कराते थे, उनको ब्रश कराते थे। हमने आया रखी, उनके कपड़े आयन करके फर्स्ट क्लास, और उनको खूबसूरत बना के तेल डाल के उनको घर भेजते थे। 1-1.5 महीने बाद हम लोगों ने, मैं ये दास्ता इसलिए कह रहा हूँ कि हम अंडर प्रिविलेज की और गरीबों की जब बात करते हैं तो वो किस जहनीत के होते हैं। गरीब की बेचारे की रोटी जो है उसका तवा भी देर से गर्म होता है, हमारा जल्दी गर्म हो जाता है। तो 15-20 दिन के बाद हमने उन माओं को बुलाना शुरू किया और हमने ये नहीं कहा कि हम आपको आपके बच्चे के बारे में बात करेंगे। हमने उनको कहा कि हम आपको ब्यूटी टिप्स देंगे, और अगर आप किसी औरत से कहो कि आपको ब्यूटी टिप्स मिलेगी तो वो दौड़ी चली जाती है। इतवार के दिन हम लोग वहाँ से सोशल साइंस कॉलेज, होम साइंस कॉलेज से फैकल्टीज बुलाते थे, कुछ ब्यूटिशियन बुलाते थे और उनको सुबह से बिठाकर ये बात करते थे, दोपहर को खाना खिलाते थे और उसके बाद फिर हम थोड़ी सी अपनी बात रख देते थे। उसमें दीन भी होती थी और दुनिया भी होती थी। थोड़ा सा चेंज हमने देखा, और सबसे बड़ा चेंज ये देखा कि वहाँ पर जुमा की नमाज में, मस्जिदों में ये ऐलान शुरू हुआ कि अगर आप अपने बच्चों को हनीफा स्कूल में भेजोगे तो आप डॉक्टर और इंजीनियर बना लोगे, लेकिन ये मुसलमान नहीं रहेगा। हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ जो हम फिरकों में बटे हुए हैं, एक समझता था कि हम दूसरा है, दूसरा समझता था कि हम पहले हैं, और चारों चार समझ के हमको मुसलमान ही नहीं समझते थे। हम हारे नहीं, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। आज वो गरीब बस्ती जिनके माँ बाप मजदूरी करते थे, वो ये कहते थे कि हम यहाँ से ज़्यादा दुबई या गल्फ में अबू धाबी और शारजा जाते हैं। हनीफा स्कूल से, उस बस्ती से 85 बच्चे कनाडा में फर्दर स्टडीज के लिए हैं। एक भूख जगाने का काम किया, सोच बदलने का काम किया। हम लोगों ने नीट और JEE के क्लासेस लगाए। अगर हम बच्चों को कभी 3-3:30 बजे से ज़्यादा रोकने को कहते थे तो माँ बाप लड़ने आ जाते थे। ये कहते थे कि बच्चा खेलेगा कब। लेकिन अब ये हाल है कि रात को 10:30 बजे तक हमारे टीचर उनको लेकर बैठते हैं और माँ बाप बाहर टिफिन का डब्बा लेकर खड़े होते हैं। बदलाव आ सकता है, अगर वहाँ आ सकता है तो सब जगह आ सकता है। ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने की। करियर काउंसिलर्स, हमारे जो काउंसिलर्स होते हैं उनके साथ मिलकर माओं पे मेहनत की, मदरस वर्कशॉप किया, बहुत सारी चीज़ों का सामना किया हम लोगों ने, लेकिन हारे नहीं, डगमगाए नहीं। तो आज अल्लाह का एहसान है कि मेरे पास न सिर्फ बोरसद के, मेरे पास बड़ौदा के, सूरत के, वापी के, राजस्थान के, MP के लड़के आते हैं हमारे यहाँ नीट और JEE करने के लिए। वो लोग जो 350-400 रुपया माहाना फीस देने के लिए हमसे कहते थे पैसा नहीं है, आज मेरी 11 साइंस की फीस 80,000 रुपया है, वो देते हैं। अगर आप क्वालिटी दोगे, कौन पैसा खर्च करेगी। हमारे यहाँ कोई चीज़ मुफ्त में नहीं है, और आपने जिस दिन मुफ्त में देना चालू किया ना, तो हम सिवाय निकम्मों के कुछ पैदा नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ तो उनसे लेना है। जब तक कि उनका अपना खुद का कुछ नहीं लगेगा, वो बच्चे या उनके माँ बाप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने हमारी स्कूल को एक ड्रीम स्कूल बनाया कि यहाँ पर आने वाला बच्चा ख्वाब देखे कि ये मेरी अपनी स्कूल है। सैटरडे के बाद जब संडे आता था तो बच्चे जो हमारे नर्सरी से लेके 5 स्टैंडर्ड तक के बच्चे घर नहीं जाना चाहते थे। वो कहते थे कि आप संडे को भी स्कूल चालू रखो। उनको पूरा घर पे खाना भी नहीं मिलता था। ये वो बच्चे हैं जिनके पास कपड़े पहनने को ढंग से नहीं थे, जिनके पास खाने को ढंग से नहीं था। आज अल्लाह का करम है
कि वो लोग, अच्छा हमने कोई पैसे नहीं दिए उनको कनाडा जाने के लिए। मैं आपको एक वाकया बताऊं, हमारे यहाँ एक पेरेंट थे जिनकी वो पानी जो पंप पहले ये जो बॉटल और ये पाउच आने से पहले वो पंप वाले खड़े रहते थे, 50-50 पैसे में पानी के ग्लास पिलाते थे। उनका ये कारोबार था कि वो खड़े रहते थे, 4 महीने का उनका धंधा था। उस लेडी ने मुझसे आकर एडमिशन के टाइम पे कहा था कि सर मैं खाना एक टाइम कम पकाऊंगी, मैं थोड़ी सी फीस देने में आगे पीछे हो जाऊंगी, मेरी बच्ची को आप निकाल मत दीजिएगा। आज उसकी बच्ची आसाम में NIT के 2nd ईयर में है, और ये उस कौम की बच्ची है कि जो वो पसमानदा मुसलमानों की बात हो रही थी ना, तो वो पसमानदा मुसलमानों से भी पिछड़ी कौम, दरबार कौम है, उन कौमों की बच्ची है। लेकिन ये बच्चियां आज हमारे यहाँ से कनाडा, UK, चाइना, यूक्रेन, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पढ़ने जाती हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मैं ये कह सकता हूँ कि उन बच्चियों ने स्कूल से बाहर जाने के बाद भी हिजाब को नहीं छोड़ा। हमने तरबियत और हमने रस्सी इस तरीके से खींच के रखी थी कि हमारे पास अक्सर जब चुनाव आता था तो लोग पूछते थे कि आप 2002 को भूल के नहीं चल सकते थे, तो हम ये कहते थे कि हम 2002 को याद करके भी चल सकते हैं। हम याद रखेंगे कि हमको क्यों मारा गया, हम याद रखेंगे कि हमको क्यों पीटा गया, हम याद रख के अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे। और ये सारी चीज़ें कब होती हैं? हमारी स्कूल का बजट 89% बजट सिर्फ टीचर्स की सैलरी पे जाता है। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो आप टीचरों को अच्छा पगार दें, उनकी टीचर्स की ट्रेनिंग करें, और बच्चों को ये गारंटी नेट के जितने स्कूल हैं पूरे हिंदुस्तान में, इनामदार साहब मुझसे मुत्तफिक होंगे, इन लोगों ने जितना सत्यानाश हमारी कौम का किया है, क्योंकि उनको पगार सरकार देती है, ट्रस्ट वाले कुछ कर नहीं सकते, वो न काम करते हैं न पढ़ाते हैं। मैं खाना खा रहा था तो रिटायर्ड टीचरों की बात हो रही थी। हम रिटायर्ड टीचर क्यों लें? हमारे पास बहुत सारे BEd कॉलेज हैं, फ्रेश टीचर लें और उनको हम 2-2, 3-3 साल के लिए रिटायर्ड टीचर कुछ नहीं करेगा, सिवाय बर्बादी के, सिवाय नुकसान के वो कुछ नहीं करेगा। हमको सिर्फ सबसे ज़्यादा अगर किसी पे मेहनत करनी है तो वो है टीचर्स ट्रेनिंग पे। जब तक हमारे उस्ताद पूरे तरीके से, पूरे दिल से हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, ज़्यादातर हम देखते हैं गारंटी नेट स्कूलों में कि वो उनके जो ट्रस्टियों के रिश्तेदार होते हैं जो लाखों रुपया पगार ले लेते हैं और बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम अपनी कौम के साथ बेईमानी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमने अभी पिछले सालों में, 2 सालों में किया है, हमने फाइनेंशियल लिटरेसी को इंट्रोड्यूस किया है। हमारा 6th स्टैंडर्ड का बच्चा, हम लोग मेमन हैं, और हमको जब 5वीं 6ठी में आते हैं ना तो हमको बताया जाता है कि बेटा 200 रुपया जेब में है ना, तो ये सोच के सोना कि सुबह इसका 2000 कैसे करूँ, हमको बाकायदा समझाया जाता है। तो हमने भी वही किया हमारे बच्चों के साथ, टीचर इनके साथ, कि हमारी 6-7 स्टैंडर्ड के बच्चे, 8 स्टैंडर्ड के बच्चे फाइनेंशियल लिटरेसी पे बात करते हैं। गांव का एक बच्चा इंग्लिश में आकर जब आपके साथ 10 करोड़ की म्यूचुअल फंड की बात करेगा तो आपको बड़ा मजा आएगा, लेकिन आपकी छाती फूल जाएगी कि आने वाला मुस्तकबिल जो है मुसलमानों का बहुत अच्छा है। हम ये कह रहे थे हालात ठीक नहीं है, आज पहली बार थोड़े ही ठीक नहीं है, बरसों से ठीक नहीं है, और अगर वो ठीक नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार भी हम हैं, क्योंकि हमको जो करना था, जैसे हमारे पहले भाई ने कहा कि हम कब तक कटोरा लेकर सरकारी स्कीमों की भीख मांगते रहेंगे। अपने पास, खुद के पास वसाइल हैं, हम अगर उस वसाइलों का इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आने वाला दिन, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक खामोश इनकलाब हमारी कौम में पनप रहा है, और वो इनकलाब की वजह हम नहीं हैं, वो माएँ हैं जिन्होंने वो सारी चीज़ें देखी हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि चाइना और ज्यूज के हमारे पास वाकयात हैं कि चाइना पर जापान ने कितने साल राज किया, उनकी औरतों पे रेप हुए, उन पर बहुत जुल्म हुए, लेकिन उसमें से चाइना खड़ा हुआ और आज दुनिया के 79 मुल्कों में चाइना अपना दबदबा रखता है। हम ज्यूज की कहानी हमेशा सुनते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता कि आज पूरी दुनिया की सारी चीज़ों पे उस पर कब्जा है। तो मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम भी बहुत सताए गए, बहुत मारे गए, बहुत
हमारे साथ भी वो कुछ हुआ जो उनके साथ नहीं हुआ, उससे ज़्यादा हुआ। तो आने वाले सालों में कोई इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के इसी पोडियम से खड़े होकर कहेगा कि एक मुसलमानों की कौम थी, उसे बहुत सताया गया था, लेकिन देखो मुसलमान आज कहाँ जाकर खड़ा है, तो लोग फख्र से अपना सीना तान कर कहेंगे कि मुसलमानों ने भी वो करके दिखाया। आखिरी बात मैं आपसे ये कह दूँ, जो बात मदरसों की हो रही थी, ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के हमारे रहमान साहब भी रूह रवा हैं, मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, उन्होंने मस्जिदों को मरकज बनाया है। ये सारी सोशल एक्टिविटीज़ का हम सबसे पहले, आप लोग दिल्ली वाले, मौलाना महमूद मदनी साहब से आपके अच्छे ताल्लुकात है, हम मदरसे इंडिविजुअल पहुँचेंगे, एक भी मौलवी साहब हमारी बात नहीं सुनेंगे। अब जब तक हम इनके अकाबिरों के साथ बैठकर उनको कन्विंस करके बात नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम नहीं होगा। और अगर इन मदरसों से इनकलाब आ गया, ये मस्जिदों में लीड करने वाले लोग अगर इंग्लिश में खुतबे का ट्रांसलेशन करने वाले बन गए, तो साहब वो दिन दूर नहीं है कि हमारे में से, जिस तरीके से हम कहते हैं कि सरदारजियों में एक भी बेगर नहीं मिलता, मुसलमानों में भी एक भी बेगर नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। कुछ पॉइंट रह गए लेकिन वक्त की इजाज़त नहीं है। मैं नदीम अख्तर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और हमारे दोनों साथियों का और मेरा इस्तेक़बाल करें। कल मैंने सीखा फ़ायदा आपा से, उन्होंने आखिर में कहा ना कि सर आप मुझे भी कुछ देना चाहेंगे। जी, अमीन मुदस्सर साहब से जीसी पाल साहब से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात जो कहना भूल गया था कि मेरे यहाँ क्लास 1 से क्लास 12 तक एक इंग्लिश के अलावा एक पीरियड होता है जिसमें हमने ब्रिटिश काउंसिल के ट्रेनर्स रखे हैं। हमारे बच्चे 12th करके IELTS देते हैं विदाउट एनी ट्यूशन, सीधा पार कर जाते हैं। और मैं आपको इसका कॉस्टिंग बता दूं, बहुत महंगा नहीं है, 300 रुपया पर मंथ पर स्टूडेंट। हम रोजाना वो मोबाइल के और महीने के टीवी के खर्चे भी देख लेना, तो उससे भी ये कम है। तो थोड़ा सा कौम को हिम्मत दिलाने की, समझाने की जरूरत है, और अगर हम प्यार से कहते हैं ना, तो कौम मान जाती है। इसको हम कंक्लूड करते हैं और जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब आप तशरीफ ले आए ताकि अवार्ड फंक्शन को आप कंडक्ट कर सकें। खालिद साहब, फैजा अब्बासी जी आ गई। बहुत शुक्रिया सर।
क्या कर रहे हैं हमारे साथ भाई क्या हो गया के बारे में भी पूछ लीजिए नाम गलत लगा दिए नाम गलत लगा दिए मशीन के ऊपर खान हटाइए हमारे पास साफ करेंगे रहमान साहब रखिए रहमान खान साहब का लगेगा तो लगा Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim, and welcome everyone back to this last session of this 2 days national conference organized by IDO. We have done quite a few historic things yesterday. We released a souvenir, we released an app, and today we are also taking this opportunity to present for the first time the first IDO Educational Leadership Award 2023. And the organizers have very judiciously selected a list of 7 great community builders, educational leaders, and people who are contributing immensely towards the upliftment of the underprivileged, which happens to be the overarching aim of IDO. The first IDO Educational Leadership Award, any guesses? The one and only Professor Wasim Akhtar Sahab. You all should stand up.
I thank the audience for giving him a standing ovation. You will please take your seat. And sir, I will take this opportunity to read your citation while you remain on the stage for 5 more minutes, please. The Alliance for Economic and Educational Development has the privilege to honor Professor Syed Wasim Akhtar with the prestigious first IDO Educational Leadership Award 2023 in recognition of his dedicated service to the cause of education, especially for the underprivileged. The IDO Educational Leadership Awards were instituted in 2023 to honor and celebrate the accomplishments of institutions and individuals that have raised the bar of excellence and are working with dedication to improve the education for the poor. Professor Syed Wasim Akhtar is the founder and chancellor of Integral University, Lucknow. He is regarded as having a penchant for productive education to teach and train individuals and groom them for success. Born on January 20th, 1955, in a humble background, the recipient of the UP Ratna Award had a very simple beginning. He started his career with a small maktab in Lucknow where the course content was purely theological, but he had an inclination towards studying science. He completed his higher secondary education in 1972 and his BSc from Jamia Islamia, New Delhi in 1975. He started his professional career as a science teacher with the world-renowned Arabic institution Darul Uloom Nadwatul Ulama in Lucknow. His good command of spoken and written Arabic earned him recognition, and he got a call from Libya to join as a translator and interpreter at Hindustan Steel Construction Limited. He envisioned providing technical education to the downtrodden so that they might attain some technical knowledge and start their own small self-employed ventures. He made his first attempt at realizing his dreams and formed an NGO dedicated to productive education. He took on the responsibility of General Secretary of the society named Islamic Council for Productive Education and started a school named Techno Academic School in an underdeveloped locality on Kursi Road, Lucknow. Recognition of his relentless efforts in the field of education has brought about fruition in the form of the first enacted minority university of the country, Integral University, which came into existence on February 21, 2004, and at present runs 13 faculties and about 250 programs. The quality of education and training at this university is now acknowledged the world over. The students of the university are getting handsome placements in multinational companies, public sector enterprises, and Indian Armed Forces. Alliance for Education for Economic and Education Development deems it an honor and privilege to present the first IDO Educational Leadership Award 2023 to him in recognition of his selfless and dedicated service to the cause of education, especially for the underprivileged. We wish Professor Syed Wasim Akhtar a long and healthy life to continue his educational services to the underprivileged and guide the future generation towards quality and productive work. सब बहुत बहुत मुबारक हो आपको और हमारी दुआ है कि आपके जैसे बहुत से लोग हमारी कौम में पैदा हों. Thank you so much. To present the next first IDO Educational Leadership Award 2023, I will once again request our chief guest, Janab K. Rahman Khan. Saab, any guesses now? We have with us from Jodhpur, Mr. Muhammad Atiq Sahab, Chairperson, Maulana Azad University. The Alliance for Economic and Educational Development has the privilege to honor Mr. Muhammad Atiq
with the prestigious first I Do Educational Leadership Award 2023 in recognition of his dedicated service to the cause of education, especially for the underprivileged. The I Do Educational Leadership Awards were instituted in 2023 to honor and celebrate the accomplishments of institutions and individuals that have raised the bar of excellence and are working with dedication to improve the education for the poor. Mr. Muhammad Atiq, founder, chancellor of Maulana Azad University, has never been to school for formal education. Yet, he has systematically uplifted lives of more than 45,000 students in last 4 decades of his social services in education, health, and community development. He has been a key figure in the establishment and functioning of some of the most prominent institutions in Jodhpur and other places. He is credited with establishing a trust and donating a prime land for the construction of a 3-story Jama Masjid in an industrial area, Jodhpur. As General Secretary of the Marwar Muslim Educational and Welfare Society, he has been actively involved with the running and administration of more than 330 important educational, health, and social institutions currently functioning under the society. He was 40 years old when sparked by an emotion for education associated with Marwar Muslim Educational and Welfare Society, which supports projects that span rural development, healthcare, education, and culture. Maulana Azad University was established in 2013. His unique approach of bridging community divide has seen establishment of a well-furnished Mai Khadija Hospital, Rahmatul Lil Alameen Blood Campaign, establishment of a well-managed Marwar Adarsh Gaushala and Veterinary Hospital at Bujawar Village District, Jodhpur. His belief in uncommon solutions to problems specific to the marginalized communities has brought in unique partnerships between the states, communities with exceptional results. His matchless efforts have immensely contributed to the highly acclaimed model of leveraging community resources to promote economic opportunity for people living in poverty in the region. He has been the torchbearer of educational and social upliftment and has brought with his determination a silent revolution which not only the Muslim community but the entire region at large is benefiting from. Alliance for Economic and Educational Development deems it an honor and privilege to present the first I Do Educational Leadership Award 2023 to him in recognition of his selfless and dedicated service to the cause of education, especially for the underprivileged. We wish Mr. Muhammad Atiq a long and healthy life to continue his educational services to the underprivileged and guide the future generation towards quality and productive work. Thank you very much, K. Rahman Khan Sahab, for doing the honors. We will now request Lieutenant General Zamiruddin Shah to kindly come forward and present the further awards. Okay. For the next first I Do Educational Leadership Award 2023, may I now request a special guest from Bombay, Dr. Zahir Ishaq Qazi. Let us give a big round of applause to Dr. Qazi from Anjuman Islam. Alliance for Economic and Educational Development has the privilege to honor Dr. Zahir Ishaq Qazi with the prestigious first I Do Educational Leadership Award 2023
in recognition of his dedicated service to the cause of education, especially for the underprivileged. Dr. Zahir Ishaq Qazi is a prominent scholar and educator. He is the elected president of Anjuman-e-Islam, a century-old educational and social welfare organization, and a Senate member of Mumbai University. He has enjoyed a long and varied career in medical, academic, and social activities. He has MD, DMRD, MBBS from University of Mumbai, FMRI from USA, and MAIUM from USA degrees. He has received several awards and achievements for his contributions. He was awarded by the Ekta Foundation for his service in the field of medicine and by Seva for his work in the field of education. He is the former president of the Goa Medical College Students Union and the former secretary of the Doctors Club of Bombay Hospital. The Alliance for Economic and Educational Development deems it an honor and privilege to present the first IDO Educational Leadership Award 2023 to him in recognition of his selfless and dedicated service to the cause of education, especially for the underprivileged. We wish Dr. Zahir Ishaq Qazi a long and healthy life to continue his educational services to the underprivileged and guide the future generation towards quality and productive work. Many congratulations to Dr. Qazi. Thank you very much, Reverend General Zamiruddin Shah sir, for doing the honors. Moving on to the next award recipient. May I now request Janab S.Y. Qureshi Saab to kindly come forward and present this award. Thank you so much. You're welcome, sir. This award goes to somebody very special. May I request Dr. Syed Zafar Mahmood Saab from the Zakat Foundation of India to please come for. Okay, he's not here, but I believe his citation needs to be read. Dr. Syed Zafar Mahmood received this award today. The Alliance for Economic and Educational Development has the privilege to honor Dr. Syed Zafar Mahmood with the prestigious first IDO Educational Leadership Award 2023 in recognition of his dedicated service to the cause of education, especially for the underprivileged. Dr. Syed Zafar Mahmood has been an Indian civil servant and former officer on special duty of the Indian Prime Minister Dr. Manmohan Singh. He has worked with the Sachar Committee to submit its report to the Government of India within 2 years on November 17, 2006. He has since given numerous talks in and outside India on the topic. In his presentations at Case Western Reserve University and Harvard University's John F. Kennedy School of Government, he has commented on the way ahead to bridge the economic, social, and educational divide among Indian Muslims. He has been Chief Commissioner and held other positions in the IRS in 7 Indian states, Director of Indian Hajj Management and Indian International Schools in Saudi Arabia, Administrator of the Combined Waqf Board of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, and Chandigarh, and member of the AMU Court and Executive Council. He represented India in the Parliament of World Religions, Melbourne, the Interfaith Convention, Oslo, the International Project Islamic Life in the US, organized by the US Department of State, and the World Zakat Forum Conference in New York, Kuala Lumpur, and Banda Aceh, Indonesia, etc. He delivered multiple lectures in India and abroad and addressed more than 50 empowerment meetings across India. He published many books, including 21st Century Indian Muslim Renaissance. He has written many articles on topics related to interfaith, educational, and socio-economic uplift of weaker sections in English, Urdu, and Hindi. He has also appeared in many TV shows and discussions. Alliance for Economic and Education Development finds it an honor and privilege to confer upon him the first IDO Educational Leadership Award 2023
in recognition of his selfless and dedicated service to the cause of education, especially for the underprivileged. We wish Dr. Syed Zafar Mahmood a long and healthy life to continue his educational services to the underprivileged and guide the future generation towards quality and productive life. And the last award for today, may I now request Janab Shahid Siddiqui Sahab to please come forward and confer this award. This IDO Educational Leadership Award 2023 goes to Mr. Mamoon Akhtar. The Alliance for Economic and Educational Development has the privilege to honor Mr. Mamoon Akhtar with the prestigious first IDO Educational Leadership Award 2023 in recognition of his dedicated service to the cause of education, especially for the underprivileged. Mr. Mamoon Akhtar is a committed educational leader and social entrepreneur with more than 20 years of experience. He was born on 22nd September 1970 and grew up with 4 sisters and a younger brother in Tikiapada, which is located along railway tracks in the heavily populated city of Havra, with a large slum in its vicinity. He was unable to complete his schooling due to lack of finances, but he was determined to make a difference in the lives of the children of Tikiapada through education. Starting with teaching just a few students in his own home, he established Samaritan Health Mission, SHM, which has now grown into 6 schools with more than 7,000 students. He collaborated with the local police to clean up the alcohol and drug dens in a 150 years old dilapidated school building and turned it into an outstanding educational institution. 100% Samaritan Health Mission students have successfully negotiated the state-run high school board examinations, and many are now working towards successful careers. He transformed the entire neighborhood with low-cost healthcare services, skills development centers for women, clean drinking water for the residents, and has facilitated their access to government programs and financial services. He has started to replicate these successful programs in the nearby slum of Bankra with more than 400,000 residents. His vision is to ensure that every child in Tikiapada has ample opportunities to succeed. His goal is to develop good citizens who will give back to their own communities. Alliance for Economic and Educational Development deems it an honor and privilege to present the first IDO Educational Leadership Award 2023 to him in recognition of his selfless and dedicated service to the cause of education, especially for the underprivileged. We wish Mr. Mamoon Akhtar a long and healthy life to continue his educational and social services to the underprivileged and guide the future generations towards quality and productive work. This award is today also being presented to Mr. Hamad Ahmed, Chancellor Jamia Hamdard, Chairman Hamdard National Foundation, Delhi, but he's not here with us today. And also to Dr. Nisar Ahmed, Chancellor Presidency University, and Chancellor and Chairman Presidency Group of Institutions, Bangalore. Can we give a
रहमान साहब चाहें तो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी वाला अवार्ड आपको उनको हैंड ओवर कर दें सर। जी हाँ सर। तो प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और उनका अवार्ड सबको दे दें। सर आप रहमान खान साहब को दे देंगे अवार्ड। वही दे दीजिए, कहाँ दे दीजिए। And we will request once again S.Y. Qureshi Saab to receive the award on behalf of Mr. Hamad Ahmed. Sir, could you please hand over this award for Hamad Ahmed? Sir, he will take this on his behalf. So congratulations to all the winners and heartfelt felicitations to IDU for doing this, for taking the pains, organizing this award ceremony, of course. We are moving on now to our valediction. And for this, first I will request Janab K. Rahman Khan Saab to kindly come over and take his place on the stage. And in this valediction, we are fortunate to have with us Professor Dinesh Singh Saab. Kindly come forward and you request. Welcoming our guests on the dais, I request for them to accept a bouquet of flowers. Professor Janab K. Rahman Saab first. Dinesh Singh Saab. Ladies and gentlemen, we have gone through a lot of insightful deliberations over the technical sessions in the past 2 days, and it all ends up and sums up in this valediction here today. Great intellectual minds of the community meeting, sharing their insights and their experiences, and we certainly hope something substantial will come out from this. We have to address us here today, Professor Dinesh Singh, who is the Chancellor at K.R. Mangalam University, Gurgaon, and he also served as the 21st Vice Chancellor of the University of Delhi, a distinguished fellow of the Hack Space at Imperial College London, and he has been also an adjunct professor of mathematics at the University of Houston, USA. We are so glad he has joined us. We would request you to address us. Respected
रहमान साहब, distinguished members in the audience, ladies and gentlemen, I am delighted and honored to be present here today. मुझे अंदर से खुशी भी हो रही है और गर्व भी है, इस बात पे फख्र है मुझे कि मैं यहाँ मौजूद हूँ आज। जब हवाई जहाज मेरा आ रहा था दिल्ली से तो मैं खिड़की से झांक रहा था। लखनऊ से मेरा बड़ा पुराना वास्ता है, बचपन से वालिद साहब की वजह से हम अक्सर यहाँ आया जाया करते थे और तब से जहन में गोमती के साथ जुड़ी हुई जो तहजीबी वर्षा है और उसकी नरमी और महक वो अंदर बैठी हुई है, आज फिर वो खिल के बाहर आ गई। मैं उम्मीद रखता हूं कि ऐसे मौकों पर बहुत कुछ होता है, लेकिन कितना भी करें वो कम होगा। हम लोग यहाँ आज इसलिए मौजूद हैं कि हम चाहते हैं कि एजुकेशन के रास्ते से इल्म, अदब, इसको लेकर हम आगे बढ़ें, समाज का, सोसाइटी का भला हो, हमारे जो नौजवान हैं वो आगे निकले। और उसके लिए अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें, गंभीरता से सोचें, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो इस समय हमारे सामने एक चुनौती की तरह है, चैलेंज की तरह है। हमें उनको पहचानना है, उनके साथ उलझना है और उन पे काबू पाना है। और आज के इस छोटे से मेरे भाषण से मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, पर मुझे ये कहना मैं मजबूर हूं कहने के लिए कि देखिए, जब हम जुड़ते हैं एजुकेशन को लेकर, सलाह मशवरा करते हैं, मंत्रणा करते हैं, तो पहले समझे तो हम कि एजुकेशन क्या है। बहुत कुछ हो रहा है, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है, पर मुझे और खुशी होती अगर इस प्लेटफॉर्म के सहारे हम अगले 20 साल 30 साल का रास्ता तय करके दिखा देते कि हमें ये करना है। हो सकता है हुआ हो, मैं देर से आया हूं और अगर हो चुका है तो मैं माफी चाहता हूं, पर मुझे आज वो नजर नहीं आया। और ये जो आने वाला दौर है, जो हमारी नस्लें तैयार हो रही हैं, उनके लिए ये बहुत चुनौती भरा हुआ दौर है। मैनी चैलेंजेस, हम चाहें ना चाहें, पसंद करें ना करें, हमें टेक्नोलॉजी घेर लेगी, घेर ली है ऑलरेडी। इट हैज, टेक्नोलॉजी हैज इन सो मेनी ओवरपावर्ड अस। और जो हमारा नौजवान है, अगर हम उसको इन चीजों से वाकिफ न कराएं, उससे इन चीजों से मोहब्बत न हो, अगर उसको वह एक इंस्ट्रूमेंट की तरह न समझे, तो अच्छा नहीं होगा। और जैसा मैं समझ रहा हूं, तमाम चुनौतियां हैं, मुझे जो 3 दिखती हैं जिस पे हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि यह देश, यह समाज एजुकेशन के रास्ते से आगे बढ़े। तो पहली चीज मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। हो चुका है कई मामले में। मैं जानता हूं कि अखबारों में और जगह इसका जिक्र हो चुका है कि चैट जीपीटी वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म आए हैं, लेकिन और जगह हो रहा है, शायद हम लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू टेक ओवर इन मेनी वेज। उससे जुड़ी एक और बात है, चैलेंज है, चुनौती है क्वांटम कंप्यूटिंग। मुझे नहीं दिखता कि हम लोग यहाँ इन चीजों को लेकर, सर, आर वी कनेक्टेड विद दीस थिंग्स।
जिस दिन क्वांटम कंप्यूटिंग लागू हो जाएगा, we will be in a different zone altogether. हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे और अब वो बहुत करीब आ चुका है। चाइना इसमें बहुत आगे हो चुका है, अमेरिका आगे है, यूरोप के कुछ देश हैं मिलके उसमें आगे हो गए हैं। हमारे समाज में अभी उसको लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो अगर हम ये सोचें कि नहीं हुआ ऐसी चीज है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट आएगा वो उससे उलझेगा, कोई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट आएगा, नहीं। हमारे लिए इट इज इनकम्बेंट अपॉन अस टू गेट आवर यंगर जनरेशन, जो स्कूलों में अभी है या कॉलेज में पैर रख रहा है, कदम रख रहा है, उसको इससे वाकिफ कराएं। Not only should they be made aware, they should be inspired to face these challenges. और क्वांटम कंप्यूटिंग में जितनी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं, गूगल वगैरह, वो बहुत, IBM बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हिंदुस्तान में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं निराश, मैं आशावादी हूँ और यह भी अपना रास्ता देश हमारा तय करेगा, लेकिन हम सबको कंधा लगाना पड़ेगा, हम सबको। और हम जब तक एजुकेशन में इन बातों को नहीं ले आएंगे तब तक हम पूरी तरह से इसमें जीत नहीं पाएंगे। उसके साथ जुड़े डेटा, देखिए आज की दुनिया में अगर मुझसे आप पूछें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उस सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, तो डेटा। डेटा के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है। इट इज नथिंग। और मैं नहीं देखता हूं कहीं पे भी कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, सिर्फ यहां पर जो लोग हैं उनके साथ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में डेटा को हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये कितना जरूरी है इसको समझना, और इसको कम उम्र से शुरू करना चाहिए। और अगर आप सोचते हैं कि ये भी रियाजियात से जुड़ा है, मैथमेटिक्स से जुड़ा है, नहीं, ये हमारे जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है, लिटरेचर से जुड़ा है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इस तरह से वाकिफ हैं कि दो बड़े जाने माने अंग्रेजी के कहानीकार कॉनन डॉयल और एडगर एलन पो ने बड़ी जबरदस्त कहानियां लिखी हैं जिसमें लिटरेचर में वो डेटा की क्या अहमियत है उसको दर्शाते हैं, और बड़ी रोचक है, कहानियां बड़ी मजेदार है। पर मैं हिंदुस्तान के पूरे माहौल में इसको लेकर स्कूलों में, कॉलेजेस में कुछ भी जिक्र नहीं देखता। कई बार मुझे लगता है कि शायद मैं अकेला पड़ जाता। और ये इतना आसान है कि मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चों के साथ, और इसी के साथ जुड़ा है कोडिंग। हो सकता है हम लोग यहाँ करते हो कोडिंग, मैं नहीं जानता। कोडिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द 2nd and 3rd grade। भाषाओं से, लैंग्वेजेस से, जुबान जो हो उससे तो जुड़ना बहुत जरूरी है। तो मैं उर्दू से जुड़ता हूँ, हिंदी से जुड़ता हूँ, गुजराती से जुड़ता हूँ, कुछ हद तक मैं फ्रांसीसी भाषा से जुड़ा हुआ हूँ। ये एक तरफ। और भाषाएं जितनी भी जुबानें हमें आ जाएं उतना अच्छा है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो लोग एक से ज्यादा भाषा से जुड़े हैं, जुबान से जुड़े हैं, वो मेंटली ज्यादा अलर्ट रहते हैं जिंदगी में, आगे आगे बढ़ते हुए उम्र के साथ भी। लेकिन एक और लैंग्वेज है, वो यूनिवर्सल है, उसका कोई मजहब नहीं है। There is no geography connected with that language. That is the language of coding. And I would urge that we must connect with Python from the 2nd and 3rd grade with our children. तभी उसकी फाउंडेशन मजबूत होगी एजुकेशन की। मैं नहीं देख रहा, हम हिंदुस्तान में जिसको हिंदी में कहते हैं औपचारिकता, अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मेलिज्म में जुड़े रहते हैं, फॉर्मेलिटी निभा दो, तो उससे भी हमें जुड़ना है। ये सारे चैलेंजेस है। और जो तीसरी चीज मुझे दिख रही है वो बदल देगा समाज को, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब उससे हम नहीं कहते कि हम बच्चों को जोड़ें। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन, जहां एटम बॉम्ब फूटता है। फ्यूजन में
एनर्जी को बड़े माहिर तरीके से आगे रिलीज कराया जाता है। हम उसमें माहिर हो ना हो, लेकिन जब वो आएगा तो जितने हमारे और सोर्सेज हैं एनर्जी के, और अगले 30 से 50 साल के बीच में इस वर्ल्ड में न्यूक्लियर फ्यूजन हावी हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि हम इसको लेकर भी अलर्ट हो जाएं कि जब ये होगा तो क्या चेंजेस आएंगे, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस इतने भारी आने वाले। इसको लेकर मैं डरा नहीं रहा, ये चुनौती है, इससे हम और इंस्पायर हो कि हम तैयार हो इसको हैंडल करने के लिए। तो मैं आज इस मौके पे यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है बहुत ही वेलकम है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक हम अपने करिकुलम में ऐसी चीजें न डालें जो आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखेंगी और जो सोसाइटी के चैलेंजेस और उसके नीड्स से न जुड़ी हो, तब तक हमें वो सफलता, वो सक्सेस नहीं मिलेगा। तो ऐसे मौकों पर जितना हुआ है मैं उसको वेलकम करता हूं, उसका इस्तकबाल करता हूं, पर मैं चाहता हूं कि ऐसे मौकों पर हम अपने को आगे की तरफ भी थोड़ा ऊंचा उठाकर झांकें और कुछ रास्ते तय करें, कुछ राहें ऐसी बनाएं जो हमारे आने वाले नस्लें हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो कुछ और आगे बढ़ा सके हमारे समाज को। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। मौका बहुत अच्छा है, मुझे मजबूती भी मिलती है जब मैं देखता हूं कि कहां से लोग आए हैं, किस तरह की चीजें दर्शा रहे हैं, वो सब कुछ अच्छा हो रहा है। इसको और निखारना है और ऊपर उठाना है, इतना ही मैं कहना चाहता था। मैं फिर से I express my deep gratitude for being allowed to be present on this platform where there have been such great personalities, both in the audience on the days, who have achieved so much. And in this little time, do not be under the impression that I have not learned. I've learned much even in this little time. And I go back from here with optimism, hope, and energy. Thank you very much. बहुत शुक्रिया। पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब हमसे खिताब फरमा रहे थे, और सबसे पहले तो इस मल्टीलिंगुअल खिताब के लिए आपको मुबारकबाद। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी बेहतरीन हसीन इम्तिजाज से आरास्ता ये खिताब। ख़वातीन व हज़रात, हमने 2 दिन बहुत जारेज़ी की, हमने कहीं आगे बढ़ने का एक रास्ता तलाश करने की कोशिश की। दिनेश सिंह साहब की बात से भी हमें कुछ रहनुमाई हासिल होती है। शाहिद सिद्दीकी साहब ने इनॉग्रल एड्रेस में कहा था, जाहिर है अब वक्त बदल गया है, कुछ वक्त वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। आई वुड लाइक टू कोट हारुकी मुराकामी फ्रॉम काफ्का ऑन द शोर। Once the storm is over, you won't remember how you made it through, how you managed to survive. You won't even be sure, in fact, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm, you won't be the same person who walked in. That's what this storms is all about. वक्त कभी एक साथ नहीं रहता, हमेशा बदलता है। आज हम बिल्कुल सर सैयद के शूज में बदलते वक्त को देख रहे हैं, जैसे इन द आफ्टरमैथ ऑफ 1857 he saw the changing times and he was even faced by the important question of whether to continue living in India or relinquish India. But when we have people like Dinesh Singh Saab here, we really get to reiterate what जोश मलिहाबादी, हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ से थोड़ी दूर आम के बाग का शहर मलिहाबाद है, what जोश मलिहाबादी once said, ए वतन मेरे वतन रूह रवानी एहरार, ए वतन मेरे वतन रूह रवानी एहरार, ए के जर्रों में तेरे बुए चमन रंग बहार, रेज़े अलमास के तेरे खस्सो खाशात में है, हड्डियां अपने बुजुर्गों की तेरी खाक में है। रेज़े अलमास की तेरी खशो खाशात में है, हड्डियां अपने बुजुर्गों की तेरी खाक में है। तुझसे मुंह मोड़ के मुंह अपना दिखाएंगे कहाँ, घर जो छोड़ेंगे तो फिर छांव निछाएंगे कहाँ। तुझसे मुंह मोड़ के मुंह अपना दिखाएंगे कहाँ, घर जो छोड़ेंगे तो फिर छांव निछाएंगे कहाँ। बज़्म अग़यार में आराम ये पाएंगे कहाँ।
तुझसे हम रूठ के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, तुझसे हम रूठ के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ. Everyone who was present here as an intellectual on this platform of IDO and everyone who has been awarded here today has reiterated this sentiment of patriotism and of love for the nation and of doing our best so that we can change the time and tide in our favor, continue to be Indians with our beautiful identity and, as I've always says, the flower bouquet and the salad bowl model. Ladies and gentlemen, let's go ahead we missed K. Rahman Khan Saab yesterday in the inaugural and throughout the day, but we are fortunate here today with us. Dr. K. Rahman Khan is a veteran political leader and former Union Minister of Minority Affairs and also ex-Deputy Chairman of Rajya Sabha. Having graduated in Commerce, fellow Chartered Accountant and DLIT, Dr. K. Rahman Khan established his credential as accountancy professional before his zeal for serving people at large propelled him to join politics. He is one of the key foundational figures of IDO, and I request you, sir, for your valedictory address. Bismillahirrahmanirrahim. Professor Dinesh Singh Sahab, Lieutenant General Jamiluddin Shah Sahab, Chairman of the IDO, my distinguished colleagues of IDO, Janab Wasim Akhtar Sahab, Chancellor of Integral University, Janab Inamdar Sahab, Janab Khaji Sahab, and other distinguished members of this conference. These 2 days, though the first day I missed, very fruitful deliberations and discussions have taken place. I do, when some of us thought to create a platform, it is not addition of one more NGO, because there are thousands and thousands of NGOs. But at the apex level, there is a need was felt that there should be an organization which will work as a platform to achieve the various objectives for the upliftment of the underprivileged. After a lot of deliberation, an alliance for economic and social development of the underprivileged was established. And Alhamdulillah, within a period of 1.5 years, a lot of deliberations have taken place, several meetings have taken place, and we have a definite agenda. I do, in fact, with today's deliberation, conveys the various objectives and the challenges before the community. What is lacking today, particularly among the Muslim community, is one is initiative, the second thing is negativism. Janab Inamdar Sahab
said that we suffer with a lot of negativity, and then we feel that it is not possible for us to achieve this. And in that negativity, we have lost almost 70 years. I share a few of my experience. Now I am a man of 83. My journey in the field of education started 55 years back. In South India, as all of you know, we're talking Southeast, we have established several institutions. There also a small journey we started. 2 doctors, one from Kerala, one from Karnataka, Dr. Abdul Ghafoor from Kerala, and Dr. Mumtaz Ahmed Khan in Karnataka, started a very humble way, an education movement. Because you can imagine 60 years back, just after independence, what was the condition of the Muslim? What was this, after partition, what was the psychological feeling of the Muslim community all over the country? So in a humble way, these 2 education movements started. They are very, very small movement, but they achieved a lot. Today, Muslim Education Society is one of the very prominent education society of South India. Similarly, Alamin Education Society is one of the prominent education society in Karnataka. I had the good fortune of associating with the Alamin Education Society right from the beginning. I have seen how the education movement has built up in the community, how awareness has come, and today we can say with satisfaction that the negative wisdom which was prevalent has been changed into a positive attitude. And today we are seeing all over the world, all over India, the development, the institutions which has come up, the motivation which has come up is a very, we have to feel happy that the whole approach has changed. Today we are talking about technology. Without technology, it is very difficult today, as on today, to even think that we can proceed, we can be success. I will tell you 2 examples. We talked about NOS today. How our community wakes up very, very late. We will realize it when everybody has marched ahead. When this NOIS was first started, incidentally, in 94, NOIS was established. I became member of parliament also in 94. When I heard about the NOIS, I thought it is the best opportunity for the Muslim community. Because earlier, I had worked as the chairman of the Karnataka State Minorities Commission. And I conducted a survey, not survey, census of all the minorities, covering about 1 million families. And that survey revealed that the dropout percentage, one example I am giving, the dropout percentage of Muslims at the 7th standard level was 93%. Now, how do you face this challenge?
at the primary 7th standard level, the dropout is 93%. There are so many reasons, unavailable of schools, long ways, reasons apart. So how do you face this? Can we follow the same method of establishing a school, 1 school, 2 school, 3 school? So distance, then at that time I felt distance education is one of the answer to this. And what is NOS? It is distance education. Then I prepared a report on this distance education. I attended a conference in Chicago, addressed the best of the Muslim intellectuals there, that this is the opportunity for us to take up and extend this, address the dropout issues by distance education, by adopting technology. Everybody laughed, it is all right, you are doing this. Today it is a reality. Today that has opened NOS, as Khadir Saab has said, that so many things with all schools, 1,000. At that time, there was only 50,000 registration in NOS. Now it is 5 million, more than that. See, the revolution has come in 20-25 years. So what I wanted to convey to is that we Muslims wake up very late when everything is marching ahead. So that we have to forget, we have to now march ahead. We have to take proactive interest. On technology, I am a chartered accountant. In 1966, I was the chairman of the Bangalore Charter of the Chartered Accountant. Then we wanted to give some computer training to our fellow chartered accountant from the association. And we approached IBM. Then there was no computer, but it is only a punch card system of computerization was there. The computer was like 2 big rooms, 1 computer of IBM. It is from the IBM company. I have seen that computer. And today I am seeing how the revolution has come up in technology. So these things are very important. Lot of NGOs are doing a very good work. Madrasas are doing very good work. Institutions are doing work. Education institutions are being set up. There is a positive attitude in the community. But that itself will not lead to guidance. That is why Dr. Dinesh Singh, he said, data is very important. You see, it is only through data you can change the whole thing. And what we lack is that we don't have data. Such a big community for our development. How do we address development? How do we say what is needed, what is not needed, how we should to proceed? Absolutely zero data. For example, take for reservation. Now we go to reservation or various other things we ask. The court says, where is the data for you? How do you prove that you are backward? Educationally, economically, just by your saying that you are backward, you are not going to, the courts will not accept, the governments will not accept. You have to create a data. That is why in the Sacha committee, you must be knowing that they have specially recommended a data bank to be established. They asked the government to establish a data bank. When I was a minister, I started working on establishing a data bank, but unfortunately, the government fell. We could not achieve. I requested my colleagues in IDU first to
we will be doing other things, but concentrate on establishing a data. And without data, you can't do anything. You will not understand your own strength and weaknesses. So that is why we have, one of the tasks IDO has taken up is to have a data bank. Similarly, IDO can do various other research work, not this routine work, but various research work. And this should work as a platform for the entire country, as an apex body for the entire country. I am sure the various deliberations which have taken place today is very useful, very informative, very educative. Inshallah, we will all work together to make IDO a platform for the entire community problems, educational problems, economic problems. Because I feel once all that today we have discussed, have recently written a book, Indian Muslim, The Way Forward. And 80-90% of all that is present, what we discussed in my book. I have discussed about data bank. I have discussed about madrasa education. I discussed about the enormous infrastructure the madrasas are having in every country. Enormous infrastructure of mosques. Only we are talking about madrasas. But the infrastructure of the mosques is bigger than the madrasas. In Bangalore, the main mosque is utilized for running a college, a degree college, a college for women, mosque. So similarly, if you, what we say, where is the money for us? How to bring up the infrastructure? There is absolutely no need. What is infrastructure we have built, the community has built, we should know how to utilize it. Mosque has to be utilized for education. As all of us know, Al-Azhar University, which is the oldest university in the world, started as a mosque. We have examples now, who quoted this, now in the 6th centuries, 7th centuries, 8th centuries, how our scientists have. They're all religious leaders also. They are achieved. So we can also do it. But what is required is, we need a apex body. We don't have an apex body. We have to build an apex body. All these things have to be discussed. We have the habit of creating multiple organizations with the same object. And nobody will learn. So what I suggest is that make IDO a apex body with guiding all the NGOs, bringing all the NGOs, and keep the community aware that for next 10 to 20 years, their only agenda is education. Once that only education should be the priority for the community, no other thing political, there's nothing to be priority. Only education should be the priority. We should create that awareness in the community. Because all this change comes only through education. Challenges can be, without education, you can't bring any change. Now see how Integral University has come up, how Maulana Azad University has come up in Jodhpur. I was present in the function which Mr. Gellert announced. In a function, he announced that I am going to do Maulana Azad University. And he kept up his promise. And I remember the last bill was passed in Rajasthan Legislative Assembly is the bill for Maulana Azad University. So take Integral University. I was seeing how Integral University has come up. Wasim Saab, how he has struggled. Because institutions will not come out like this. See, we should salute those founders of even small universities in the education institutions who have set up this education institution, who have developed it.
Now, how he has struggled. And today, I am so happy after coming for 3 or 4 years afterward to see the development of the Integral University. It's one of the best universities in the country. Several universities have come up in last few years. In Karnataka, 4 minority universities have come up. In Andhra Pradesh has come up. In Karnataka, about 10 years back, Muslim starting a private university was unthinkable. Today we have, throughout India, we have more than 20 to 25 private Muslim managed universities. But that is not sufficient. Country needs more than 3,000 universities. Now, we have hardly about 900 or 1,000 universities. And then if you say that we are 15% of the population of the country, when there are, say, about 1,000 universities, we should have 150 universities. If you want to solve, and not only 150, we should have 200 universities to fill up the backlog. Who will address this? All these issues, because we have to plan the communities' issues, like as the country have a planning commission or what you call Niti Aayog, whatever it is, they plan, the country's development is planned by a body. Here also, the community's issue, if you want to develop along with this thing, we should have a planning body. Execution can be looked after, but first you have not planned itself. So a planning body is necessary. I think that gap can be filled up by IDO, with all the best of the brains we have got in the IDO. Inshallah, I am hopeful this movement will pick up and we will be able to give the community a apex body. Thank you very much. Thank you so much, sir, for this valedictory address, and of course, showing the way forward as one of the most senior persons involved with IDO. I must recount here, when sir was at the MoMA as minister, he had sanctioned a project called Nalanda project, and Shahid Siddiqui Sahab, it addressed the issue of teacher training and quality in MMDCs. The first nodal center was founded under Shah Saab's regime at the UGC HRDC in AMU, where I was assistant director at that time. And we took our training programs later to so many places. In Inamdar Saab's Azam campus, we went to Atiq Saab's Maulana Azad University, and we came to Integral University a good 13 times for quality improvement of teachers. So I think it's very opportune that this was mentioned here, and the leader for this is here with us. So thank you both the dignitaries for your addresses. We would like to present to you a memento, and the Vice Chancellor, Integral University, Professor Javed Musarat Saab, is requested to present mementos to both the dignitaries on the dais. To Professor Dinesh Singh Saab first. Okay. In the order of the speeches. I will now request Javed Musarat Saab to present a memento to the president of this session, K. Rahman Khan Saab. Thank you, sir. Thank you very much. May I request Mr. P. Namdar Saab to give a memento to Dr. Faisal Basi for his wonderful
exhibition of this program. Dr. Inamdar Saab has also given a cash prize of 10,000 rupees to Kazab Bhaji. The reason is very simple. Without any flaw throughout 3 days, whatever she was announcing was exact. And therefore, I thought it fit that everybody is being appreciated, why not she should be appreciated? Oh my God, that's just so overwhelming. Right. It's not only overwhelming by Chancellor. Chancellor Saab is saying 50-50. Okay, jokes apart, because this prize and this honor comes to me for speaking, I must say the entire credit goes to Lieutenant General Zamiruddin Shah. In 2012, when he was the VC at AMU, I'm sharing something very personal, and he nominated me, मेरा इंतखाब किया जब convocation के निजामत के सर आप convocation के निजामत के फराइज अंजाम देने के लिए. People went to him and said, इस फैसले पे दोबारा सोच लीजिए. आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख में एक खातून को इस तरह सरेआम जलसे में पेश करके गलती कर रहे हैं. But he said, okay, I will think again if you bring somebody better than her. और वो दिन है और आज का दिन है. There are so many reasons that I have to give Shah. Thank you so much. And I think once again Asia will bear me out. It was the best time for us to be women faculty members in AMU. Thank you so much. Khalid Ansari साहब भी आप सबने देखा इस कॉन्फ्रेंस में भी और इसके पहले भी पस मंजर में हर चीज़ में शामिल थे. तो मेरी गुजारिश है कि खालिद अंसारी साहब भी एक मेमेंटो हासिल करें जनाब के रहमान खान साहब से और दिनेश साहब से. बहुत मुबारक हो खालिद साहब और हमारी दुआ है कि ऐसी आईडी की सारी कॉन्फ्रेंसेस आप इस तरह करें. So before we declare this conference and this valedictory ceremony close, I want to make a small announcement. We have all been here in the beautiful campus of the Integral University. The management and administration is all eagerly looking forward to give us a round of the campus. So once this ceremony is over, the cars and the vehicles, they are all parked outside. You're all requested to move forward for that. And now the beautiful Tarana of the Integral University will be played before we disperse. And are we having tea also, Khalid sir? जी उसके बाद national anthem. हम ताज है मुल्को मिल्लत के हम फखरे माला फखरे अजम अहले अजम शम्मे की हामी हक हम अबे करम. हम ताज है मुल्को मिल्लत के हम फखरे माला फखरे अजम. हम ताज है मुल्को मिल्लत के हम फखरे माला फखरे अजम. अहले कलम शम्मे की हामी हक हम अबे करम. अहले कलम शम्मे की हम ताज है मुल्को मिल्लत के हम फखरे माला फखरे. हम ताज है मुल्को मिल्लत के हम फखरे माला फखरे.
अहले कलम शम्मे अदी हामी हक हम अबर करम अहले कलम शम्मे अदी हामी हक हम अबर करम हम में सफर सीनों में लिए हाथों पे लिए सहबाए हरम शाही की तरह कौसारों पर रखते हैं हमेशा अपने कदम आगोश हिमालय में हमसे खाइफ है अज़ल से अहल सितम हम इल्म अमल की शम्मा है हम इल्म अमल की शम्मा है हम मखज़न हक हम अबर करम अहले कलम शम्मे अदी हामी हक हम अबर करम अहले कलम शम्मे अदी हामी हक हम अबर करम हम ताज है मुल्को मिल्लत के हम फख्रे हिमाला फख्रे हम ताज है मुल्को मिल्लत के हम फख्रे हिमाला फख्रे अजम अहले कलम शम्मे अदी हामी हक हम अबर करम अहले कलम शम्मे अदी हामी हक हम अबर करम हम शम्मे अदब के परवाने हम इल्म अमल के दीवाने ये बज़्म है इल्म इरफा की इस बज़्म के हम हैं मुस्तानी हम शाम सहर पी लेते हैं सहवाए कुल के पैमाने हमसे सुरूर मस्तियों में हमसे सुरूर मस्तियों में हम खुद हैं मुजस्सम खाने अहले कलम शम्मे अदी हामी हक हम अबर करम अहले कलम शम्मे अदी हामी हक हम अबर करम हम ताज है मुल्को मिल्लत के हम फख्रे हिमाला फख्रे हम ताज है मुल्को मिल्लत के हम फख्रे हिमाला फख्रे अजम अहले कलम शम्मे अदी हामी हक हम अबर करम अहले कलम शम्मे अदी हामी हक हम अबर करम ये रहमत हक का मरकज है ये इल्म अदब का गहवारा हर फूल यहाँ का गुलशन है हर बरख यहाँ का तैयारा ये मरकज एक समंदर है हर शोभा का एक धारा ये मेहर मोहब्बत का मरकज ये मेहर मोहब्बत का मरकज साइंस व अदब का मीनारा अहले कलम शम्मे अदी हामी हक हम अबर करम अहले कलम शम्मे अदी हामी हक हम अबर करम हम ताज है मुल्को मिल्लत के हम फख्रे हिमाला फख्रे हम ताज है मुल्को मिल्लत के हम फख्रे हिमाला फख्रे अजम अहले कलम शम्मे अदी हामी हक हम अबर करम अहले कलम शम्मे अदी हामी हक हम अबर करम एजाज़ बुलंदी इंटेग्रल हर सुबह रहे हर शाम रहे फर्जंद तेरा हर शोबे में कोई न कभी नाकाम रहे तेरा फैज़ हो सारे आलम पर मिल्लत पे तेरा ही नाम दुनिया में रहे हम या न रहे दुनिया में रहे हम या न तेरा नाम रहे कलम शम्मे अदी हामी हक Proud to be integral.
Proud to be integralite. Proud to be integralite. Proud to be integralite. ताज है मुल्को मिल्लत के हम फखरे माला फखरे हम ताज है मुल्को मिल्लत के हम फखरे माला फखरे अहल कलम शम्म यकीन हामी हक हम अबर करम अहल कलम शम्म यकीन हामी हक हम अबर करम अहल कलम शम्म यकीन हामी हक हम जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे